Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Gauravji. So we'll just start in a couple of minutes. Not a problem. So, sir, today, Dr. Anita Lada ma'am will be moderating this session. She is an associate professor at Jagran Lake City University, Faculty of Law. So, we'll just start in a minute or two. Participants are joining. So, Anita ma'am, we can just start at like 2:32. Sure, sir. Sure. Okay, ma'am. Thank you. Gaurav, sir? Yes, ma'am. We can proceed. Yeah. Thank you. So, very good afternoon to everyone. We welcome you to the day 9, session 1 of the 15 days online refresher course on new age teaching methods and skills in higher education from 17 to 31st August 2022, organized by Jagran Lake City University, Bhopal, and Droid Panel Group in collaboration with Guru Angad Dev Teaching Learning Center, Pandit Madan Mohan Malviya, National Mission on Teaching and Learning, Ministry of Education, Government of India. The speaker of this session is Professor Dr. S.K. Bose. He is PhD, LLM in Constitutional Administrative Law, LLM Corporate and Commercial Law, LLB, BA Honors, MA in Public Administration from Utkal University, MA English from Berhampur University, PG Diploma in Civil Law from Indian Law Institute, PG Diploma in IPR from IGNOU and UGC NET. He is working as an associate professor at School of Law, Manav Rachna University, Delhi, NCR, with more than 25 years of experience in teaching, research, and practice. He is also the director at the Center for Legislative Studies and Research, MRU, and author of 12 well-received books for university students.
Dr. Bose has the distinction of teaching in various allied institutes, including ILI New Delhi, Indian Society of International Law New Delhi, Indian Institute of Public Administration New Delhi, Indira Gandhi National Open University, KR Mangalam University. At present, 6 PhD scholars are carrying out their research under his supervision. He has a number of publications in national and international journals to his credit. He has designed a short-term online course in legislative drafting, which has received widespread appreciation. He is a member of the International Criminal Court Bar Association, member of International Intellectual Property Law Association and Supreme Court Bar Association of India. We welcome you, sir. Today, the topic of the session is project-based learning and understanding. Over to you, sir. Thank you. Thank you so much. At the outset, I take this opportunity to express my gratitude to Dr. Anita Lavda and Mr. Gaurav Gulati. And of course, I must mention that the Jagran Lake University and Dwight Pennell and the Teaching Learning Center for giving me this opportunity. Thank you so much for having me on this program. I would be very happy to know that most of these participants for the FDP are from law or they are from different streams. So that I'll be able to connect with them effectively. So they are from 26 states and from diverse areas. And okay, they're from different, maybe social sciences, yes, sir. Or laws and other yes, streams. Sir. Yes. Anyway, that's so nice to see that the teaching learning process continues, and this learning is that teaching aim is not to teach but to learn, and this excites me at the beginning to see that so many learned colleagues have joined this FDP, and I must appreciate the fact that Gauravji, he's been thick of action. He's been conducting rigorously a lot of refresher course programs, FDPs, seminars, workshops, and this is one way to keep this teaching learning process going. My topic that I have chosen, and I must also acknowledge the fact that I was given free hand to choose my topic, and I have chosen the topic project-based learning. So before I start, I would take your permission to share my screen, and if I'm allowed, I'll just share the screen right now. And one of you to confirm that you are able to see my screen. Yes, sir, it's visible. Okay, so the topic that I have chosen is project-based learning and understanding and overview. So first thing that I tell that teaching, we talk about teaching being a dynamic process, and how you will have some kind of best practices in the teaching to make this process going. To get the process going, we have to also be adaptable. It's rightly said by Charles Darwin, it is not the strongest of the species, nor the intelligent, but the one most adaptable to the situation. So now, since we saw this pandemic 2019 COVID pandemic, that has taught us also how to be adaptable to situations. And the transition was a bit difficult for us, but we teachers, we very quickly adapted to that circumstance, and we made that transition very, very smooth, though we had to take some kind of pain. Since the education process is evolving and it's a dynamic process, it keeps on evolving. We talk about, of late, people talk about pedagogy, talking about the best practices in the teaching learning process, and mostly that that the teaching or the learning that depends on the multidisciplinarity
As a result, what happens that we talk about the project-based learning or making the learning very, very interesting. If I see that the project-based learning where students get a kind of project, and that project may be for short duration or maybe extended period of time. But this project-based learning makes the learning process come alive. It makes the learning process very, very effective. And that happens because of the active participation on the part of the student. When you follow the lecture method, you go and teach students little realizing that what exactly the student wants from me. As a teacher, we do not understand or we do not try to make any kind of efforts to see that whether or not that particular learner is able to grasp the things that I have been telling that in the class, or I am using a kind of methodology that gives the results, or it yields, or it has kind of impact on the learners. So now we talk about this project-based learning, which makes the students very busy. The student takes interest in the making a project, and that project will allow the student to have the problem-solving ability. In a sense that you are giving a bit of independence to the learner to explore his own area and to see how he can solve a problem, how he can deal with difficult situations, and how he will be ready to answer even complex questions. And accordingly, to this course project, it could be of a few days, or it could be a few weeks, or it could be for the whole semester. So it is one of the methodology that you can adopt to adapt in your teaching to make that teaching learning process very, very productive and very effective. Now, coming to this project-based learning, where you will be demonstrating your knowledge and skills, that actually gives the opportunity to the learner to complete a project. And while completing the project, a student demonstrates his knowledge and skills. So when he demonstrates his knowledge and skills, that means that he knows or he discovers some of his own abilities, hidden qualities, or hidden talents. Maybe might have not got that opportunity to explore, but because you are throwing a challenge to the learner understands that how to come out of that situation, and the learner gets that kind of independence. In a sense, you are throwing somebody in deep water and expecting that person to swim and learn the swimming. And when that person struggles to survive, he finds some of the ways to come out of that situation. And that is essentially that project-based learning actually gives or allows a learner to enhance its knowledge and also brings its skills to different situations and then complete. So they have gained from this project, entire project, when that someone completes that project, that will be able to demonstrate its knowledge and skills and different skills. For example, that somebody is a silent learner, but if he is asked to do a project and a certain period is allotted to that learner by the teacher in the classroom, or making certain groups and asking them to complete a particular project, that project may be submission of a report, that project may be studying a case or making a kind of analysis,
or doing your own, or maybe you can develop some kind of research skill. Doing that preliminary research can be one of the projects that the teacher allows students to involve in. By doing so, that the student learns how to cope with other members, how to deal different situations, to show that team spirit, leadership quality, how to gel with other people and listen to others, taking their ideas, collaborating with that kind of cooperative study, learn something. So a different level of knowledge that he gains, or a different set of skills that he imbibes because of this project. So that may be a quiet boy who is always hesitant to come onto the podium and make that presentation. Because of that project, you are segregating or distributing different roles to the team members, and even the shy or the quiet boy who is very, very introvert in the group gets an opportunity and shows his own skill, making a presentation or analyzing reports or interpreting it, or just collecting data, collecting information. That can be something that can be seen that when you assign a project in the group. Now, coming to this project-based learning, what are the advantages? What are the benefits of that? If you use this technique or use this methodology, students gain number of benefits and skills from participating that successfully and involving themselves in the project learning. In that way, they get the opportunity to think critically. They'll display their creativity. They'll have that kind of communication, that collaboration, and so on and so forth. So that critical thinking in the modern day teaching learning process is extremely crucial. That you do not apply your mind, you do not apply whatever you have gained, you do not apply that knowledge to a situation, it's not going to help you. The purpose of education is to make you self-sufficient. So if you find a situation that is quite tricky for you and you do not think critically, or you accept somebody's views blindly without applying your mind, also is not the purpose of education. You should question, you should think from different perspective, you should question, you should analyze, and you also make efforts to display your curiosity. And then again, your point of view, you have to also communicate, and that's how these projects will be overall helping you for your critical thinking, to unfold your creativity. It will help you how to work in a team. That is again the way that cooperative study or teaching learning process happens, and that also enhances your communication. So when I say communication, I don't mean that communication, that talking to the other members or writing or expressing something. Communication, I mean that your ideas being transmitted to another person, you are able to share your thoughts, you are able to convince the other person, and you speak about the right thing at the right time with the right person to get the things done. This is what communication I mean. And that happens when you develop that project-based learning. I think teachers need to also understand, we teachers, we are experimenting everything that in the classroom see. I'm sure many of you must be doing that in your day-to-day teaching, your
experimenting some new techniques or strategies to see that there are different students in the classroom with different thoughts, different ideas, different attitude, and bringing them to one situation, or expecting them to they accept one view, it's going to be very, very difficult. So they have diverse views, diverse thoughts, diverse ideas and opinions. So you will also inculcate that kind of confidence. You will be giving that kind of confidence and independence to the learners to think uniquely, to think independently, and that's how this project-based learning develops a deeper understanding. So you do not understand, you do not apply that mind, or you do not find a solution to the problem. So that probably that if you are unable to do so, it's because that you have not understood the thing yourself. So if you understand, you have a deeper understanding of that concept, you will be in a position to find some solutions. And that solution will be maybe that working to your advantage, or sometimes that you can even find a better solution to that one. But this will allow you to find some kind of solution to that kind of situation or problem. So this way, there would be kind of actual learning, or it would be that work-based learning. This work, is completing that work means you have understood. While completing that work, you might have faced a lot of difficulties, but then you might have also applied different techniques and strategies to find the solution. So how you did, it's not very important, but what you did is important. So you finally, you got the desired results. But you might have faced a lot of difficulties, or it might have been very, very smooth for you to find that results. But at the end of the day, you are providing the results to the stakeholders by saying, this is what I was expected to do and I have achieved. So while you are putting the project before the students, also it's extremely important for you to tell the students that what are the outcomes at the end of this particular project, what they are going to learn, whether they are going to demonstrate certain skill set that you're expecting them to, whether they will be displaying different levels of knowledge, whether they will to show their other leadership qualities, or maybe other life skills that they are on it. So that project to be decided, again keeping in mind that what the kind of students you are addressing to, and then what kind of interest there. So identifying their interest and their ability, because they should have that kind of capacity to do something. Otherwise, if they are not, they do not have that capacity, and you are giving them a kind of project that will not generate any kind of interest. As a result, this project will not be giving you any kind of desired results. So therefore, you have to be very, very careful as a teacher to formulate a project that is quite relevant. It is actually authentic. And it also involves some kind of problem solving or areas, or what would be the outcome of that particular project. So if that project is not going to help you that in the overall growth, whether it is intellectual growth, academic growth, or a societal growth, again, you do not have to choose that kind of project. So you'll have to always think that the larger interest involved in the project team, because the objective of education is learning and not teaching. So you don't have to show that how much you are able to teach, rather you see that how much they are able to learn. And that is the real essence of teaching. The real essence of teaching is, or the real essence of education rather, is learning, not that teaching. So this project-based learning helping you to make that education process vibrant, very effective. And the idea is that you will be making that education
learning based rather than teaching based. And project based learning and project based coursework, where you say that no, there is a slight difference between the learning. Learning is a continuous process. It doesn't involve a particular work for a particular period of time, but that in any small project you apply or you formulate there in the classroom for addressing a particular topic, that project based methodology is for your learning. But if you are making a project based coursework, so that project based coursework involves putting into that correct practice, that where you will be telling that that project based coursework involves putting all your efforts into practice and ensuring that the knowledge and skills are developed during a course. And that will be done when you make a systematic plan, because you know the beginning what are the objectives of your projects. So you have to formulate 3 to 4 objectives, and on the basis of the objectives you will also keep that what are the outcomes end of this particular project, what they are going to display, and then you will have to map accordingly that objectives with outcomes and see that whether that I kept that, for example, you kept that objective that at the end of the project, or the one of the objectives of the project is to enhance your skill. Now if you say that the skill, then you in the end course what is that skill that the student should be able to interpret his own thoughts, or student should be able to analyze, or student should be able to unfold your creativity, or student should be able to display the analytical thinking. So if that is one skill you are looking for, so you must write at the end of the course, students should be able to think critically. So your objective is that the objective of the course is to make students think critically. So that is objective. Then you say that if he end of the course or end of that project, he is able to think critically. So that means your objective is mapping with your course outcome. So outcome is that yes, he is able to think critically. So how far he is able to, what is the percent of students in the classroom able to think critically? So say, for example, you have got 40 students in the class, and out of 40, 10 students are able to think critically, and then maybe 30 students are not able to think critically. So you see that your mission is failed. That means the maximum number of students are not able to think critically. So you have formulated your objective in the beginning, that the objective of this course or objective of this project is to make students think critically. And only out of 40 students, only 10 students are able to think critically. So that means that my project did not give me the desired results. But if you find that out of these 40 students, 35 students are able to think critically, then you see that you have followed a best practice, and the practice, by applying this practice in the classroom, you got the desired results. I would stop here just to ask maybe Madam Anita just to tell, am I audible clearly during this? Yes, sir. Yes, sir. So because it's a audible. one-way track, so sometimes maybe I may be going on and on and on and not getting that. So therefore, I just want that I'm throughout that I'm audible. I know Yes, there sir. are certain difficulties there for the interaction, so that I respect. But yes, in between, ma'am, in case I'm Yes, not sir. audible, please do let me know. Yes, So sir. this Yes, project-based learning and project-based on coursework, the project-based on coursework involves putting into practice and knowledge and skills developed during a course. Project-based learning is a deeper and more comprehensive exercise where you say, because your target is that you are, for example, if some law students are there, so you are telling that you are teaching them constitutional law and expecting them to file PIL there in the Supreme Court.
and making maybe identifying that 10 students, they are good enough to write petitions. So they are understanding constitutional law better way out of those 40 students. So you give them a project that no, during this semester, I want some of you to prepare a petition and file a petition that in the Supreme Court. So that then you say some other students that you prepare a memorial or the moot court competition on this corporate law or maybe intellectual property law or something like that. You involve them in a project depending on their kind of interest. So this goes that while the students do this particular coursework, they have a deeper understanding. And they do all kinds of exercises to find it whole holistic understanding or comprehensive understanding. And that's why it's important for you to adopt a project-based learning methodology that in the class to see that how things would become so easy for them to understand and have a comprehensive understanding of the concept, because in the project-based learning, students make active participation. It's active learning is possible. But in the lecture method or in the traditional teaching method, you will not be able to gauge the students' understanding. And your project may, if they are successfully completing that project of drafting a petition to be filed there in the Supreme Court, that under Article 32, then you see that, okay, they have successfully completed that project. As teacher, you will be able to also assess accordingly, because that's what you have laid down there in the beginning, some of the objectives of this course or objectives of this project. And then you are also keeping in mind, these are the 4-5 outcomes that will be mapped with the objectives, and these outcomes they are able to display. I wanted them to have that leadership quality, so they are displaying that leadership quality. I wanted them to have a good presentation skill, and some of the students are making wonderful presentation. Therefore, that my course outcomes are mapping with my objectives. So I have achieved what I thought in the beginning. So therefore, it's a systematic planning on the part of you as a teacher, and you will be getting that kind of results. Coming to the project-based learning, definitely allows students to have a deeper exercise, and it will give them effective results. It's not just learning, because when you are learning things or you are learning without understanding, that is called just rather if you are talking something without understanding, it's just talking. But while you are teaching and you're learning something, that is exactly called the teaching. So that's the purpose. Purpose always goes to that learning rather than teaching. And you have to see that how effectively I taught only when you see that how much they have learned. Sometimes now we get over enthusiastic. We prepare well, go to the class, and you deliver the lecture thinking that I have done the best job in the class. You come back, and sometimes even out of enthusiasm, you ask some student, I taught today, so beautifully I taught. Did you attend my class? Even you ask one of the meritorious students, and then did you understand everything? Well, okay, sir, I understood everything. And you ask a simple question, that student will tell, sir, oh, that time I just... So sometimes we overestimate ourselves, thinking that, okay, I prepared well, so I delivered the best. But how much learning happened. You are happy because you got cup of joy by going to the classroom and taught that 45 minutes. Non-stop lecture you gave, and then everybody gets kind of self-satisfaction, and there is no harm. But then if you analyze and make a little bit of introspection, you understand, okay, I spoke very well. I thought I did a fair job, or I did a fantastic job. But then after some time, you give them kind of assignment, and they all write kind of answer you have never discussed in the classroom. So then you feel that, where did you get?
So somebody might have studied his own book, notes, or from Google or this, that, and came up with. So then you realize I gave a different perspective. I spoke all that, and none of them has written that thing in the answer sheet. There you are bound to feel disappointed. Rather, I would say not disappointed. You have to work upon your own teaching methodology to see that that my teaching, effective teaching, also depends on the effective learning. So they have learned nothing. And from my lecture, they did not bother to quote one or two sentences from my entire lecture. That means I was not very effective. I think this is what you'll have to also do. Therefore, you'll have to see that methodology you are adopting there in the classroom, that actually makes students do that deeper exercise, and that happens invariably in project-based learning. It's not my understanding, it's not my view. This has been tested by the researcher and experts. So developing a comprehensive competence is that what the project-based learning is all about. Now, my slides are moving, or it's not moving? Moving, sir. They are moving. Because it's slightly showing that one as it. Is So it you now are in moving? this slide. Yes, sir. This is, I think I have covered this one. Yes, sir. Okay. Now we're talking about project-based on coursework, where project-based on coursework usually involve setting a project based on materials taught. I told you that, for example, you are teaching constitutional law, and you have covered your Article 32. You might have covered all that fundamental rights, and then talking about what are the rights, and then how that one can go to Supreme Court under Article 32, and then giving that project of filing a PIL. So that project will be giving you some kind of results. So usually this project based on coursework involves setting a project based on the materials that you have taught. It cannot be random things that know anything and everything. You have to go very systematic way. Therefore, here I must use the word research, where you go in a very systematic study, and that is again a deeper study. So that's why we talk about study, and when it goes deeper level, that becomes research. And during that sessions or the sequence of sessions, when you do that, and allocating objectives and setting questions, very important. What are some of your project questions? What answer are you looking for? So therefore, before starting a project, you all have to understand that what am I searching? Do I have to search something? What answer am I looking for? And then only you will be getting that answer. But you do not know yourself what answer you are looking for. How will you be reaching that kind of conclusion? So therefore, you must make some questions, allocating objectives and setting up questions based on your course material. That is what you will be doing. And this project-based coursework, this type of project tests, again, you will be testing that how much knowledge my students have gained. And also, not only that knowledge, but whether they are able to apply that knowledge to situation, whether they have this ability to analyze certain state and to see again that where particular thing matches, that where particular thing fits. And application, again, application is very important. Only having knowledge and not applying to the situation are not going to help you at all. So that when you teach, it says that one teaches and two learn. So that means when you are teaching, you are the only person. But then 50 people in the classroom, they are the learners. Therefore, how they are receiving your ideas, your thoughts, or your discourse is very, very important for you. So this is what happens in the project-based learning, that this project is actually a vehicle for your teaching, and that gives the knowledge and also the skill set. And these knowledge and skill set are going to be relevant to the course. It's not something that has no value
And this education doesn't make you self-sufficient. This education doesn't make you complete. This education doesn't make you independent. This education doesn't give you skills to apply your knowledge to perfection. Again, that has no value. The project develops understanding of the curriculum material, and that can be possible only when you engage students in development of this project and giving them some sort of independence. Such is our practice. We stop the thinking process of the child to flow. What do we do? That no, you are saying something that is not relevant. Sometimes we have to be a bit generous and open. That there may be multiple ideas, multiple answers, multiple solutions to a problem. I may be knowing 1, 2, 3, or there may be hundreds of answers to that particular question. So because I know only 1, 2, 3 answers, I think I have achieved everything. I know everything under the sun. That sometimes we do, maybe unknowingly, and maybe sometimes because we want to display the knowledge, that we want to show to the world that how erudite we are, then we outrightly stop somebody to give his thoughts or ideas, or that is what telling that education is ability to listen to almost everything without losing your temper. So allow that child to express his thoughts, his ideas, and you may have that 3, 4, 5 very, very relevant. You may be knowing, but the child comes up with a new idea, new thought. Allow that thought to flourish. Allow that opinion to be brought to others. Let others also think, discuss, debate on that idea, and then brainstorm and find some solutions. So, but it is rightly said that when you know a little, you are cocksure, but with knowledge, doubt increases. The more you learn, the more you discover your ignorance. So, but if you have a limited knowledge, you say that this is the only way to do, and that actually destroys the creative talent of the learner. And so you have to see that knowledge or the skills, not only the knowledge and skills, but the knowledge and skills, you want to see that in students relevant to the course, and the project also develops that overall understanding of the curriculum, and that is possible by engaging them in the development of this project. Now, it also helps you to see that higher level of skills imbibed by the students, in contrast to what project-based on coursework, project-based learning requires and develops the higher level of skills. And this higher level of skills we all know by critical thinking, problem solving, cooperative study or collaborations, or complex communications, where some of the difficult things, you see, you have your own ideas, and sometimes you think you will not go to other person to listen to his ideas, or find sometimes something that stops you. So that is again a complex communication. So that has to be avoided. And this, when you say that higher level of skills, critical thinking, problem solving, these higher level of skills in project-based learning, students are motivated, they are stimulated to do far more than that they remember and repeat information. So by applying their knowledge to situation, by thinking critically, by unfolding their creativity, they display a higher level of skills. And that happens when you adopt project-based learning there and use that project-based learning as your methodology. Students are quite excited, they'll be stimulated and inspired to do. And it is also, let me tell you that a good teachers explains or an excellent teachers demonstrate, or an outstanding teacher something, and then a great teacher inspires.
So that means a good teacher explains or an excellent teacher demonstrate, and maybe I forget that line, but I know that last word is that the a great teacher inspires. So if you are able to inspire somebody to do that, you are able to stimulate, and that is what project. Sometimes you give a project that becomes joyful, that becomes fun, and that becomes very effective. I think if you put it in this way, project-based learning is full of fun. It's joyful learning, and it's quite effective, and it gives you the desired results. Now, project-based learning and project-based coursework may little bit of contrast. Or everybody just pay attention to this. Project-based learning the project is integral to curriculum and the learning process, whereas the project-based on coursework, that project is added onto the end of one or more sessions. For example, in the semester that you may have kind of formative exams, the formative assessment, where in a continuous basis you take some kind of test that every fortnight or every month, and during that semester now there will be end term. You can see that what is the total completion of that. So you can do that in parts, or you can do that at the end of the session, or you can do it in between the sessions. Then coming project extent. Yes, ma'am. Sir, we are on slide 6 now. Have you changed the slide? Because it was on project based on coursework. I think when you discuss about the assessment, I think it was not on the slide itself. That's why. No, I made a passing reference to that assessment. Okay. But I am actually talking about the project-based learning and project-based on coursework. Okay, so sir. this Thank is the comparison I'm making. So in the project-based learning, which is a very, very important part of curriculum, and it is an integral part of the learning process, whereas project-based on coursework, added on to the end of the one or two or more sessions. Projects extend to the real-life applications, and it has significance, whereas project-based on coursework, emits usually restricted to within the academic environment. And for example, I'm telling that you are giving the skill that a person, that you are giving a person fish, that means you are providing food for a day. But if you are teaching that person how to fish, you are giving that life skills to that person. So similarly, if the person has understood everything that on the basis of project-based learning, that is a life learning for that person and will never stop, will never struggle in life. But where you are expecting that a kind of academic environment to be made for a certain period of time or certain duration, there you will be telling that during this particular session, I want you to achieve this. But you are saying that you are achieving this skill that is not confined to this particular session. So that is a life learning. So once you are giving that skill is going to stay with that learner for life. And that learner applies that skill at any point in time of his life to come out of that difficult situation. This is what we are talking about. That is not much to talk about in a project-based way, where the execution of a project and the creation of a report are linked to the development of skills and knowledge. Of course, you'll have to see that this may how that a project is executed and what all exercises have been carried out by the student for the creation of this report. And then you will be linking them to the development of skills and knowledge. And of course, you'll have to see somebody makes that somebody has that articulation or making that presentation very, very effective, and somebody prepares the report, writing part does very well in a systematic way. So all that parameters you have to use to see that nobody is ignored that in the team, and not expecting everybody. You are expecting elephant and fish
to climb the tree. So it's not going to happen that way. So you have to have different parameters because no, everybody has that unique skill, and I think no further explanation required from my side. Even to say that we are all teachers, we do that one. I'm sure here I'm on the other side. I'm saying that, and many of you may be practicing the same thing in the classroom, and many of you must have been more experienced than me. I see my madam also with utter attention listening to me, but she has vast experience, and this also makes this is what we talk about, the humility on the part of learner, that this learning never stops in life. So it's a no continuous process. Learning goes to your grave, that as long as you are alive, you are going to learn, and every day is a new day for you. Every moment is a new moment for you, and every lesson is a new lesson for you, and that is what we are learning. So, but in the project-based course, no specific focus on development of skills and knowledge, but you give that particular project and the completion of project that you tested a particular skill. But this learning, this method or the methodology you are adopting, that will be reaping you results, and that skill that the student does through that project, it's going to be lifelong. Then coming project-based learning, just summary, just very, very quickly, I'll tell you the synopsis of the benefits. Learning is applied in a very, very meaningful and fruitful ways. The instruction and practical knowledge that have been gathered by the learners, incorporated into the structure of that project, and students are also continuously mentored and guided in the developing and even whatever the required level of academic standard. Again, I told you that in a project means you have your objectives, you have a proposal, you have certain questions, you are searching all the answers to the questions, and then in the end you are giving some sort of suggestions or conclusion that what you have achieved by this project. So it should lay down some levels of academic standards, and project is a very systematic study, so it should not start from anywhere and goes to nowhere. So it should start from somewhere and should have a definite target and outcome. That's what project. And this project work engages students in their academic and professional development, and that makes them very, very methodical, systematic, disciplined, and they productive, because at the end of the day, the result that counts. Project-based, again, the students can understand how their work has an impact in the real world scenario, what significant change they can bring by filing a PIL there in the Supreme Court. They have been taught by Anita ma'am there in the class, and then they say that we will be filing PIL, and they think that we have got that all the skills to draft a proper petition, and now we're ready for filing, and how it is to be filed and all we completed. And then you see that these students have the comprehensive understanding while they did their work, and they think that they will make an impact in the real world scenario, what they have learned inside the classroom. And students become deeply engaged in their work during the project. You give them small project, I'm sure all of us do, may not be giving that exact project-based learning, but you give some sort of project, some sort of work, assignment that you complete, and if you complete this work, I will give you, and you promise them some. But I think in this project, you have to be very, very clear at the beginning that how you're going to assess. You say that I will assess the team members' presentation skill. Or you say that I'll assess your comprehensive understanding. I'll assess your critical thinking. I'll assess also one of you to show that what is creativity you got, what creativity have you brought to this particular project. So these are certain parameters. Under these parameters, I will be assessing you. So that has to be told in the beginning, so that the students know that your ma'am is told or sir has told to
see and assess me on my presentation skills. So I have to make my presentation skill, make my presentation so effective so that she gives me full marks in my presentations. So this is what that makes the student very, very active, proactive, and does everything with all passion and interest. So therefore, your mission is achieved because you want that boy to be very, very sincere. But that boy may not be good at writing, doesn't do, very, very restless in the classroom. But you tell that no, he is so articulate, he comes and he doesn't have that kind of hesitation, inhibition, public speaking skill is immaculate. He comes and does. So you tell that I want to see that you make a presentation, and that boy will be with flux of confidence. Ma'am, I'll do that one, and he will be. You can say that he will steal the show there, making presentation. So that's what you want. So if he's good at articulation, he's good at presentation, you gave him that opportunity and he displayed his that presentation skill to perfection. And you are very happy. So then you are assessing that, okay, that boy could not do well in my paper. In a written part, he did not do well, but he has that skill of making presentation and wonderful presentation. So let me also gave him some kind of leverage here because of that group. So that unique knowledge, that unique talent of the boys should be acknowledged and appreciated. That is what a project does. So there are different models, but with that limited time, I would be only touching upon these few things. The models for project-based learning, two main elements for creating good quality project-based learning. It is a good teaching practice. When you give that project, when you encourage the independence of the students, when you encourage their creativity to flourish, that you are adopting the good teaching practice. And through this project design, two elements very, very vital for creating good quality project. And that again, you are telling that learning process would be project-based process when you have a good teaching practice and through project design. If your project design is a faulty one, it doesn't have all the elements that are required to become a good, perfect design, then you may not be able to get that results at the end. So the detailed project design will be determined by the factors including the sector. Now, coming to that sector, which sector you are targeting, it's something that relating to the education sector, or it is relating to this finance sector, or it's relating to real estate sector, or relating to community development sector, so on and so forth. So that you have to see that what kind of sector you are targeting in that project, how this project is going to be relevant to the society at large. Then the client of the company where it is applicable, this how it is going to. For example, I am the director of Center for Legislative Studies and Research. Here we have the legislative studies. So normally, whatever the legislations have been passed or the laws have been passed, we give this project to the students. So they work upon on those projects, thinking that, for example, farm law came, and they worked upon that. They analyze different aspects of this farm law and thinking that what are the flaws in the part of the parliamentarian, what they overlooked, what aspect of this law needs to be challenged, and all that they did, and they are thinking. So who are the clients, who are the stakeholders that this project going to be applicable? So while you are designing a project as a teacher, you have to be extremely careful and meticulous to see that which sector it belongs to, who are the stakeholders, the client company where it is applicable, what would be the duration of the project. These are very, very important aspects you have to keep in mind while you are designing a project. So number of students in this project, whether that number is quite large or
a very limited number. So therefore, I'll be giving some projects. So you have your own freedom to design the project depending on that kind of sector, the sector you are targeting, and the kind of the stakeholders or the clients that this project is going to be applicable to. And then, of course, the duration, how much time you have got, and then the number of students involved in that project. So again, when you say that good teaching practice, that for project-based learning has a lot of features that differentiate the project-based learning from the routine classroom teaching. Because I told you that you want the active learning, and project actually helps the students for the active learning. But when you are active and enthusiastic in the classroom, this is again one of good qualities of a good teacher, to be enthusiastic, to be energetic, to demonstrate that kind of energy in the classroom, to show that intellectual appeal, then to connect with the students. That is necessary. So we say that persuasive speech, where we say that intellectual appeal, how you are connecting to your emotional quotient, that your body language, and of course your that knowledge and the things that you are talking about, its relevance. All these aspects to be kept in mind when you are trying to motivate, inspire, or persuade people to do something. So therefore, in the good teaching practice, when you say that project-based learning has a lot of features, different people have given different views, but different project-based learning, and that will be different from the classroom teaching. Now, when you talk about good teaching practice, now very, very rigorous, and it will be consistent with the project design. So when you say that consistent, means it should not be scattered. It should not be scattered. It has a cohesion. It will take you to that, to the results. So take example of doing a report. So you start with an introduction, then you talk about the scope and nature or other aspects, that then you go to the conclusion. So similarly, that is a very, very consistent pattern. So that when you go for a teaching practice, it has to be quite rigorous and consistent project design, where you will be engaging students in the process. You will be implementing all your plans, executing that plans in a consistent scaffolding process. Your idea or your main aim as a teacher is to give that kind of support to the team, provide them mentorship, providing them all kind of facilities as you are a facilitator, and of course you are managing the overall process for that project, and therefore aligning the project to the required standards, again academic standards, how they are going to be relevant. So what are the standards you are setting for that, with keeping in mind the objectives and outcomes, and also socially relevant, intellectually relevant. It's all academic growth, and if it doesn't help you to grow academically, grow intellectually, then that the project is a futile exercise. So project management procedures for the teachers quite important. Then project management procedures for the students. And when you say that project management for the students, now you see, supposing the other day I gave a project to the students that you will be conducting a talk show. So talk show means some of students nowadays, students are very, very articulate, and especially law students or humanity students are quite articulate. They do all kind of moot court exercise, debating, discussion. So I gave them a project. For example, I gave them a project talk show. I told that you are 7 students. One of them is going to be that an anchor or the moderator, and there would be 6 students. They are going to be participants, and one may be
not representing from law, maybe a lawyer. So it's a kind of role play that one is going to be lawyer, other person is going to be a parent of a teenager. Then third one is going to be a social activist. Fourth one is going to be a teacher. So different role I distributed. So I hope I am being heard by all of you. Yes, sir. So I was talking about that talk show as one project, and I told that only 7 days time, today Monday, and you decide a topic, whether you want to go for a topic. Now you say that marital rape, or you take a topic of gender justice, or you take a topic of constitutional morality, or take a topic of law and justice, take a topic liberty, or justice, or freedom of speech and expression, anything you take topic. And then that 7 students in a group, I told that no, you are going to conduct a talk show. And I recorded, ma'am, to your surprise. So they did so well, like as if they are the professionals, full-time professionals working for the media and from the law background, conducting that entire show. Somebody with that enthusiasm, hello and welcome to this talk show, and with me in the studio are my guest X, Y, Z, and all introduction, and then asking, okay, I want to take the view from you. You are the lawyer practicing in the Supreme Court. What's your view? And asking another person that, no, you are the parent of a teenager. Your son is studying that in first year law, and what are the problems you face that in terms of his study there at home, how does he behave and all. So very nicely conducted, and it was of half an hour, 45 minutes, and all 7 got equal share, displayed their skill, did, and all that thing. So what is there in the discussion? There are 40 students listening there, the audience. Some of the questions, even we had a question answer round, and there the audience were asking some questions to the panelists, and the panelists were answering. Very, very enthusiastic way they did that one. What they did, even the shy boy and girls, they were very, very excited wearing that blazer, shoe, tie, and all belongingness. They felt they are here, camera ready, everything there, they'll be shooting. So all that thing made them very, very complete. So your mission achieved, because you wanted them to understand this concept, and by the discussion in a very formal way, large number of students were benefited because of these 7 students. They conducted one talk show there on the stage, taking them to the auditorium. So your class 50 minutes also managed, and the whole students got benefited because of that project. So this is one of the examples of the project. I stop here to listen to some of the my learned colleagues to share their ideas also. One way or another, they must be doing some kind of small projects there in the classroom. Anybody wants to share anything? Now I will be requesting participants. Platform is open for you all. Those whosoever want to share. That doesn't mean I am stopping here. I'm only stopping for some time to listen to their views. Right, sir. I'm sure that they have many things to share. Yeah, right, sir. Right, sir. Anyone interested in? Please unmute yourself. It's not even a question. I want you to share your own experience there in the classroom. You might have conducted many projects there. Sir. Or you might have achieved something. So you might have also adopted certain teaching practices there in the classroom. Yes, sir. So if you would like to share, even Anita ma'am can share also her own experience. Sir, right now, from last 3 years, I am teaching drafting and pleading paper to 5th year students, 9th semester. So most of the time I used to ask them to draft, and most of the time I used to ask them, give assistance to your neighbors, to your friends, to your relatives, while if they have any issues related to sending notice, right? Registered notice or whatever, whatsoever. So
or even if you are entering into a rent agreement or purchasing a second-hand mobile or a second-hand, two-wheelers, what type of agreement you entered into upon. So the terms and conditions, what language they use to, legal vocabulary, number of things I used to, ask them to do so. And after they complete their course from our university, most of the students revert me back, "Madam, I drafted a notice and I get an appreciation." So that is one thing, with the passage of time, they will develop this skill of writing. So that is one my experience. In this way, they are able to, draft number of things, because drafting is very important if they want to enter into the corporate field or practicing. So that is one experience which I used to observe since from last 3 years. So. Anyone else, if they want to share? I think so. We can continue with your session. Not a problem, ma'am. Thank you for sharing your own experience. I just want to add, I was also teaching that subject, maybe a few years before. What I did, I brought that plain papers, plain A4 size papers. I distributed to that whole 38 students, I remember 38 students, and I wanted them to draft one bail petition. So it was a project. So they did that. In the classroom itself, I gave them 40 minutes time, and they drafted that. No, I wanted to see that how they're drafting, that alignment, that space, and different things to be done in the same way, that format. That beforehand I had already shared that format, so they were knowing that format, and then they did it. So by doing that, normally they do in the ruling paper, exercise notebook registers. So that is not allowed. But normally we heavily depend on the computers and all that type. But I wanted them to write, whether they'll be able to write or not. That though the thing has become now thing of past now. Nobody's going to write that manually. So that way I involve them in the project. Thank you so much. So that's what I was talking about, that in the project, their active involvement. So that makes them very, very excited. And even if they are otherwise find it very boring, but this project will give them certain amount of energy, enthusiasm. That's why this project-based learning, in the beginning I told, it brings your teaching learning process come alive. And then coming to this, it defined when your good teaching practice also involves the implementing a consistent scaffolding process, where you will be giving that, extending the support system and engaging students in this process, and define the assessment procedures. Very important to tell that on these parameters I am going to assess you. So I am telling you both beforehand. And if you want to draft a petition, everybody has to come and get it vetted by me. And if you do not get it vetted by me, so I am not going to consider it. Again, on that parameter, out of 10 marks, you keep that 2 marks for this. If somebody fails to get it vetted by me, will not get 2 marks. So that means out of 8, I will be assessing that person. So that student is invariably going to come to you and tell, "Ma'am, this is my draft, please vet it, and then I will modify it." So for vetting, straight away you give 2 marks. Then you are telling that use this particular format. Format ke liye you keep that 2 marks. So in this way, assessment will be told to the students well in advance. Then there will be not that whims and fancies on the part of the teacher to assess, and you are not able to explain to us. We all law teachers, that we have to also explain to them that what basis may the ratio decidendi that you have taken that decision on. So we'll be telling that what basis may you have judged or assessed the answer sheet of that student or the answer of that student. You tell that this parameter I did not give you 2 marks because you did not get your draft vetted by me. So you did not follow the format. So I straight away did not give 4 marks. So neither you got it vetted nor you followed the format. 4 marks gone. Now out of 6 marks. Out of 6, I have given you 3 marks. Sir, anything to say? I think
the other gentleman. Sir, you would like to say something? Uh, Okay, yes. so that part is gone. So I'm as a teacher again during that project. No, good teaching practice means it's constant coaching and mentoring, allowing the child to grow. Like we say, but we say no, you cannot do. But you give some amount of independence, and that will happen. I know that during those days, I knew one mathematics professor used to call students that anytime you have any problems, come to me. He would openly invite everybody to come and ask your problems during the break. I will be available in the staff room, but none of the students would come to him. So what I'm trying to tell here is that no, you may be inviting students, but they deep in their heart they understand this person is not going to help only in words, but in action. No, he does very different. Maybe just the contradictor or contrasting. So what happens in that way? So they do not get motivated, they do not get inspired, in spite of saying that one. So I couldn't understand. I asked the students that your maths teacher often invited you to come to him and you are unnecessarily going for tuition. You are not going. Well, sir, he tells only, but when you go that you will be giving plenty of excuses that I am just taking lunch now, wait for some time, then did this way. Once, twice we went and then we thought that there is no point going. So he would tell invariably, he would go to the classroom and tell that I have been asking you, people are coming to come to me without any hesitation, but nobody. So I'm saying that no, your action speaks louder than your words. So you don't have to tell everything. If you are that amiable, if you are that supportive, you are really mentoring that student on and off, you are that, so automatically they'll wholeheartedly accept you. This is what Arjun told to Lord Krishna. You surrender, complete surrender, then only I'll take care of you. If you have doubt, that trust deficit, then and teaching learning process is all about the trust between the teacher and the taught. If that student doesn't accept you wholeheartedly, no matter what you do, that he will be not learning. And there is, I think I remember one line regarding this one, that when you that what is that no teaching without learning, it's I remember that I somewhere that quote, I missed out that quote. I wanted to tell that that quote, but unfortunately it's not there, and nowadays my memory is quite treacherous, so forgetting everything. But yes, that comes to the capacity to learn is a gift. So you have that capacity to learn, that is a gift. And the ability to learn is a skill. So you need that skill to learn. And the willingness to learn is a choice. So if you do not have a choice, so nobody, you can take the horse to water, but you cannot make the horse drink water. So you can take somebody to college, but you cannot make that person learn. So it's completely his choice or her choice. And we are talking about higher education. Higher education is such that you cannot force somebody to study. That is purely his or her choice. So if it's not willing to learn something, no matter what you do, you will not be able to get that kind of results. Again, that's what I'm telling, that where there is a will, there is a way. If that person wants to learn, you'll find multiple ways to learn. So that is what. And constant coaching and mentoring possible only when there is element of sincerity attached to that. Again, we are talking about integrity, doing something even if you are not being watched, doing the right thing even if you are not being watched. So ma'am is not there, let us enjoy. That it's either mice dance when the cat is away. So this that policy should not happen. So that it is my intellectual growth, no matter who is there on the corridor. If I am teaching, I am involved in my teaching, and I will be lost in my teaching. So that sort of integrity will bring to your character. That's what talking about the character as a speaker. Character is extremely important, as pointed out by Aristotle, that in the teaching learning process,
You have to have a character. That means students are going to connect with you that what he says makes sense. And you become so idealistic before them, but you do something that do not set a good example. So therefore, they will not listen. So that is what I am telling you. You have to have a spotless character in the sense that what you do, what you say, have that alignment. Then only they will accept. So, and this coaching and mentoring is all about your sincere and a pure teacher-taught relationship. And that's what you are going to do. Now, when you share that teaching practice to be rigorous and consistent project design, the teacher creates the project design, including that, all that, I do not have to, it's all there. Clear context and objectives, it's a repetition, at the cost of repetition. I have to display that, that slide. Project path from inception to completion, right from the beginning to the end, and definition of roles of students. You are in the beginning, you are telling that what you are, who is going to present, who is going to prepare the report, who is going to collect the information, etc., all that thing. And whose creativity you have to see. Somebody there has wonderful ideas and thoughts. Whether he will be able to gel with the team or not, that you have to see in these parameters. You will be. Then aligning the project to required standards. I told you academic standards, where it includes appropriate and relevant level and standard. It is both societal, academical, and professional expectations. And this project implementation must be in accordance with these standards. And of course, you'll have to have the mechanism defined to verify the performance levels, the parameters, assessment, that is called course assessment plan. Nowadays, everybody talks about CAP. So the CAP, again, one of the requirements of NAAC, where you talk about the course assessment plan to be there, how many projects you'll be conducting during this time, how many presentations you'll be taking, how many written assignments you'll be giving, how many articles you want students to write and all that, or how many times you will be holding quiz and all that. So this is called course assessment plan. Assignment, project, quiz, or maybe article writing, or even doing online course, completing that course also invariably gives you 10 marks. So in this way, if your internal assessment of 40 marks to judge that project, you make different parameters and give. And then academic subject and areas of the topics all to be put there in that. Project management procedures, for the teachers, again, I'm talking about the good practice, good teaching practice in the project-based learning. Teachers provide a careful definition of the management role, right from, again, it's a flow chart where organizing tasks, then defining the schedules, establishing checkpoints, and setting your deadlines, allocate the resources, agree license procedures with the students, and how, again, they will be taking the stakeholders in confidence, how it's going to be resourceful. So where they get that information from, where they will be getting all kind of facilities, all kind of data and all that. And of course, you will be setting that deadline. That will, again, I told you, it's a very meticulous plan. It's a methodical thing. And that makes the learners very, very systematic and methodical and not very random. And that's the objective of your applying this project-based learning technique. Coming to this management, continue with this procedure for the students. Again, it's just there on the slide, my repetition. Again, it will be the assigning role and responsibilities, transform the group into a team, setting individual and group goals and objectives. Here, I think everybody understand that you are expecting that particular boy to show his presentation skill, and you are expecting that girl to show her leadership quality, that whether she is able to gel with all the team members in the cooperative learning, that is possible or not. Maybe individually you give that work to that girl, does to perfection, but when comes a team and it's a moot court competition, I want to take that student. Sometimes you find that that particular student may be a misfit, because
taking that, no, if your 11 players are playing that football, and then one person selfishly taking the ball, carrying to the goal post, and not thinking of the team, had that person passed that ball to another person, he was in a better position, could have scored the goal. So there the team purpose is very important. The teamwork is extremely important. It's the team interest that is extremely crucial rather than individual interest. There are some people who will be thinking of this. No, if you give, as ma'am, you are principal, there may be so many other heads here on this platform not listening to me, may have given some responsibility to different people who see that this particular seminar to be conducted within this particular time, and see that how they have done, how different people are gelling together as a team and doing something. You find, ma'am, I cannot work with that particular person. No, that very difficult. So that is again a testing time. So you as a mentor to see that why can't you gel with that person? You have to be very, very professional. It has nothing to do with your individual differences. So you are the convener or co-convener of this seminar. So you are 4 members. So 4 members, different role you play and complete your work. So I want my project. I want my college to have a good name. I do not want X, Y, Z will have name. My college to be I should be particular about the reputation of my institution rather than 1 or 2 people. They are not going to be so indispensable. So that is what comes. So you say that way, you see that somebody is extremely talented, but when it comes to team, may not be that good and not good for the team. So you do not have to select that person. Again comes that you have to be objectively impartial in that. So you see that if you are making a group, accordingly you recognize the talent of the students, but at the same time say that who plays this particular role to perfection, who will be able to horses for the courses. You have to identify as a project manager or as a project designer. You have to identify that sometimes may feel disappointed. Oh, ma'am, you are very, very partial. You did not give me. No, but I have given because I know you are good and you can do justice to this particular role. Therefore, I have given you this particular, I have assigned you this particular duty. I know you can do this duty better than anybody else. That's why I have given you. That is the larger point. You may think that, okay, I have given you the small duty or nothing. It's duty, but I thought that you will be able to do this duty better than anybody else there in the team. That's why I have given. So similarly, assigning roles and responsibility. And also, as a designer, you as a teacher, you should be able to transform the group into a team. It's not that groupism that will be encouraged, rather the team spirit to be given prime importance. Then comes the set individual and group goals and objectives. So this is your individual. But again, that your individual scores will also go in a cumulative way to this team, and also that determines the overall results. Therefore, not only you work for yourself, you will also work simultaneously for the team. So therefore, team interest comes first and individual interest goes. And I personally believe that as a teacher, if you are doing some kind of publications, you are attending FDPs, I appreciate your gesture of coming in large number to attend this FDP. That means you do not want to take things for granted. You are not very complacent that you have achieved, you have got 10 years of experience, 5 years of experience, 15 years of experience, 20 years of experience, that you are complacent. No, academic growth is possible only when you learn continuously, and it is a continuous process. And that is perhaps one of the reasons that I am able to see so many people on this platform, because you want to make that academic growth, you want to stay relevant, you don't want to be outdated and obsolete. That is the purpose. That's why you are going and attending this 15 days faculty development program. So in this case, so it's the individual. So you want that
whatever you learn from this faculty development program, you will be giving or you will be practicing that thing in your institution. So if you grow, your institution also grows. So it's both way. It can never be one-way track that only you will be thinking of the institution. How that be possible without your personal growth? If you are happy, then only you will be bringing happiness to others. You are not very happy. You are not satisfied. How can you satisfy others? And a person who tries to satisfy others at the cost of his own happiness or his own satisfaction will not be doing that for a longer period of time. So therefore, you have to also see that individual and the group goals and objectives. And sometimes, it's necessary for you to sacrifice some of the individual interest for the sake of larger interest. And that we all teachers also understand and assign the agreed timeline. And in law, especially, I'm telling to all my learned law colleagues, so always that, no, sir, your lordship, I want some date to there and this particular date. And always there is, so people get fed up. Why this is adjourned. It is there. Law tells that give the fair chance. Then only fair practice is possible or fair trial is possible. Can't be done in a hurry. Though there are other aspects also for the pendency of cases there in our legal system or judiciary. For each main task and for the whole project, you have to also see and define the deliverable at the completion of the project. Then comes developing a team and building a culture. Again, building a culture where there is a sense of satisfaction, sense of bonhomie, that people trust each other. There is no trust deficit. Rather, there is a kind of camaraderie. People gel together. They enjoy, share, care in the joys and sorrows. That sort of culture you have to establish. And those who are actually in the leadership position, this is again extremely important for them to ensure that why that place is not a happy place for others to work upon, why they will not be happy to work. So what is there? So that I hope Anita ma'am has a lot to share. She must be day in and day out experiencing certain things, but then it's very difficult even to find solution to that problem. But we are all facing that kind of problem. But again, see that one thing you'll have to understand, this is something that can never be solved. So this goes on and for some time you find some solution, but you cannot find solution for all the problems and all the time. So you may find all the solutions for some time. You may find some solution for all the times. You may find but you never find all the days, all the solutions. So someday you find that these 5 problems I found there in my office today, and I solved all those 5 problems today. But the other day you find 10 problems, you will be able to solve only 5 problems. 5 problems could not be solved. So that day you cannot say. So therefore, some problems can be solved someday, but all the problems all the day may not be possible. So that is where developing a team and building a culture is extremely important. And teachers, normally I told you that inspire. Some good teachers can explain, other teachers can teach, and an excellent teacher can demonstrate, but a great teacher can inspire. So you should be able to inspire that, encourage the team culture, and students take the responsibility to develop the team culture. And again, that is, again, I told repeatedly that independence, the independent decision making, you have to see that whether that, knowingly sometimes you give that kind of situation where you think that whether he is able to find or take that independent decision. You will be finding from there, might have gone to seminar, you might have told that you do this thing, they'll be calling, man, this is the situation, what should I do? You tell that you find a solution. Find a solution to that particular situation. So you apply your own common sense. Don't depend on, because I'm not able to see, I'm sitting here, maybe 100 kilometers away from you, but you are there on the spot. You are there on the ground.
You find that solution and then you take a decision on your own. I have made you the in charge. Doesn't mean that you'll ask me everything and every time you'll be bothering me. So there you'll have to see that whether that person is capable enough to take the decision. And taking the decision right time, again, very, very important. And then free-flowing, collaborative, creative thinking. Again, collaborative thinking and again, creative thinking, that will be, do not obstruct, do not stop that one. As a good teacher, that you have to create that building culture. And if it is going to be academic ambience and academic culture, you have to allow them their creative thinking to free flow, their collaborative thinking to flow, so that do not dub them as creating groupism. Rather, you think that they are working in a team, and that is the thin line between groupism and building a good team that is culturally viable, and it's also academically very, very effective. Focus on the goals and objectives. Again, it's repetition, attention of details of the quality, and positive bonding of teamwork. Again, that you as a leader, you'll have to inspire, and teacher is always a leader by default. So the leader of the team, and the team comprises students and he or she herself. So now coming to this implementing a consistent scaffolding process. Scaffolding process, I told you something that helps, that your support system, that when you are a worker or a builder, that you're building something, that you have to also sit and take the support of another platform to do that kind of thing. So it is the scaffolding is a set of that teaching learning practice that always support, assist students' growth, and that you'll have to bear in mind as a teacher, that I am a facilitator. My work is to facilitate. I think at this time, constant coaching and mentoring is required to successfully complete that project. And I have to see no point in time you lose your patience and get disheartened. You as a leader, if you get disheartened and despondent, I think the team will not be motivated. Therefore, sometimes you might have seen as a coach must be seeing and patting the back of the players, go and try to pump them up and go and give your best fight and fight tooth and nail, winning, losing. Okay, that eventually will happen. One team to win, other team to lose, but you give your best shot. That will be giving a sense of satisfaction. Now, scaffolding practice create progressive stages of confidence, ability, and of course that will be building if somebody is down and out, and you think that, okay, you go and inspire that person. No, not a problem. No, I think, ma'am, I don't think I will be able to complete this project. You might have seen that even the researchers, PhD scholars, sometimes they get dejected, disappointed, and frustrated at the end. Ma'am, so many times correction chapters, I don't think I'll be able to do. And then even one Lieutenant Colonel was my LLM student, and he was in service, still coming there weekend classes, and told, sir, I am going to quit that. I told, it's a matter of 6-7 months now. Do not quit that one. I will help you complete your project, your dissertation, everything. Do not worry. And he completed it, and then he sent me a message, very emotional message, telling that it's because of you it was possible. Otherwise, I had made up my mind to quit and continue my job, and completed. So I'm sure that many of you must have also the similar kind of experience in your class, because you are in the teaching learning practice for a long time. You must have got also some of the experiences to share. That's a different thing that you do not want to share on this platform. So I'm sure everybody knows that students become less dependent, and then when you demotivate, they're not there. You have to also increase their understanding and abilities. That's what the bigger role you have to play as a teacher, as a guide, as a mentor, and a philosopher. The role of teacher in scaffolding, again, provide support. This is all I've covered. Share knowledge, solicit questions, adjust pace. Somebody, despondent, somebody is feeling so disheartened or thinking that it's probably not his cup of tea, but you go and inspire and energize and tell that, no, you can do, give a pat. And that is again
again the strategy of your teaching, that how you can create the strategy. And I'm sure that many of you may have faced that probably you did not give your best shot in that classroom. Then having taught this particular subject for 20 years, someday you go, that may not be a good day for you. And you tell that, okay, I did not. So then you come back and do that introspection and you think that I'll make a different strategy now and I will implement. So I think every good teacher does that introspection. It's the first step towards learning. If you think that you know everything, that is actually the beginning of your destruction. Rather, you think that, yes, it's a learning thing, and let me also have a different strategy. Let me handle the class. No, they are hooting, shouting, making noise. Let me come tomorrow and I'll do. So you can always introspect, analyze, and make that kind of strategy. So that comes to you very naturally. I think you will have to spend some time there too, and it comes out of experience. As you gather experience, you will be able to adapt to that situation and circumstances. Scaffolding techniques in the project-based learning are extremely important. Teachers use the lessons, methods, tools, strategies. There's nothing to do that may be explained to you by the other speakers in coming day. And then define assessment procedures, where assessment of project-based learning work that can employ procedures and methods that are different from those used in the classroom teaching. For example, classroom teaching, you will be making certain questions, objective type questions, and descriptive questions, analytical questions. Maybe you can give case laws or case studies and all other things. But in the project, what you see that you see presentation skill. Though you see that even a written answer, presentation, you see overall that presentation, consistency, cohesion. But in this assessment, where you give a different kind of assessment that is different from the classroom teaching. The formative and summative assessment, as everybody knows, the continuous evaluation process, where you tell continuously comprehensive evaluation, where you the CCE, that continuous comprehensive evaluation. Formative, that you take some kind of test, that internals of very informal test every now and then. That is a formative which goes on a continuous basis. And in the end term, you will take one summative assessment. So supposing you have got 4 modules in your syllabus, and you are teaching, after completing one module, you are testing them, giving that some kind of MCQs. You are giving them maybe that telling them to prepare a concept paper, or telling them write an article, make a discursive essay, or hold a talk show, or go for a group discussion, or something like that you do, and that project one part is done. For example, you are teaching that maybe that you talk about copyright in intellectual property law or copyright. So you have one day, you have a group discussion on copyright, various copyrights, and the whole class will be sitting. Take them to auditorium or take them to library, make them sit there. They find that a different environment. Suddenly, they see classroom teaching is boring. So you take them to the ground. That sort of independence to be given to the teachers, especially my request to Ma'am Anita, not to stop the teacher. If the teacher wants to take them to the library and engage them with kind of browsing work, I want these things to be searched, this particular drafting to be searched, this petition to be searched. Go and browse the books in the library and do. This is again one project. They will be browsing through the books and finding out. Give them that I'll make open book questions. So you tell one day, ask that ready with the constitutional law, Bayer Act, you keep the Bayer Act, and then talk about Article 32, talk about Article 226, Article 13, Article 14, 15, Article 19, talk about preamble, talk about justice and all, where it is, how many times justice word used there in that, tell me, or where justice word, tell the page. They will have it, then they'll find it very, a lot of fun, joyful. They will be turning the pages and telling, ma'am, page number this may justice is mentioned here. Ma'am, this number liberty. So this is again a kind of thing. So apart from this kind of stereotype teaching, you are giving some kind of new. So this formative assessment you can do on a regular basis to see that how enthusiastic they are. And once they develop that interest, things would be easier for them.
once they lose that interest, they tell you, oh, that class is boring. Boring is not that subject, because the teacher is making that subject so boring, student find the entire class boring, and it's a futile exercise. Sometimes that happens. So I think we all teachers, we do. No matter, I see that I am speaking a lot, telling good things, but there are many people sitting on this platform, may have a happy laugh, smiling, that inside, okay, we know all these things, what you are saying. So it's, this reminds me of a joke somebody told, that a French politician who did not know English, he had an interpreter. If Madam Anita, on behalf of all the participants, you allow me to share this anecdote, I would be happy to share. Yes, sir. So I was telling that one French politician who did not know English had an interpreter. So he used to go for his political campaign, and he would be taking every time that English interpreter, because the audience would be understanding only English. So he would be speaking in French language, and the interpreter had to translate everything that he spoke in English. So that in one of the campaigns, he spoke for 1 minute and then paused for the interpretation. The interpreter only took 4 words to sum up his speech. And then he felt disappointed that I spoke for 1 minute or 2 minutes, and I paused for this interpreter to interpret to the audience in English, and he used only 4 words. Never mind, this time he gathered more energy and more, used more time, spoke for more minutes, rather extended 2 minutes to 3 minutes, 4 minutes, and then he paused for the interpreter. The interpreter used only 5 words, and then again he got disappointed. This time he spoke for another 10 minutes, and this time interpreter used only 9 words, completed, and he felt disappointed, went for the lunch break, and then casually the French politician asked his interpreter, what is that magic you have, that I spoke for 3 minutes and you took only 4 words to that interpreted my speech in English. Then next time you use only 5 words, and last time you use only 9 words. He told nothing. First I used 4 words, I told he said nothing new. I used 4 words. Then 5 words, he still said nothing new, 5 words. And then 9 words, as I told you, he said, as I have told you, he said nothing new, 9 words. So this is what he told. That means the politician says nothing new. So I hope it should not be there. The research person came and he spoke for 1.5 hours and he spoke nothing new. So that is just is a anecdote, rather a joke, as I want to say. But I'm sure that whatever limited knowledge I have, so it is this platform I'm sharing, and I also invite everybody to share their thoughts and ideas. Anything they want to share with me on this platform, it will be, I came with one aim in mind, learning something, because I truly believe that teaching is not for teaching, teaching is for learning. So here I have come to deliver the talk for learning and understanding. Otherwise, it will be just a mere talk if that is not understood, nor during the course of my talk, I do not understand anything, so did not have any kind of effect. But I'm sure, so that summative assessment will be there, where you will be making an end-term assessment, and that is what you will be giving. That depends on that suiting to the kind of project that you will be making. Now, formative and summative assessment, I do not have to tell more. So I told already that no internal informal test you will be conducting, for example, engaging them in the library or taking them to moot court and giving them small kind of project, or maybe that half an hour exercise. All that test evaluate assimilation of learning during the course project, because that is that particular modules only. But this test that evaluate the sum total of learning
That's why I'm telling some in totality, but here it goes in the different modules with different tests. For example, completion of one module, you take one test or two tests. Then completion of second module, you took another project. So that is what formative. And formative and summative, I hope, ma'am, time is there. So I will take only 10 minutes to browse through all these slides. Very formative and summative assessment in project-based learning. Again, are used to assess developments. Again, all those things we have discussed that in the beginning objectives, knowledge, understanding, your practical skills and project success, how far the project is success, that would be evaluated by the teacher. And again, you will be telling self-assessment and peer assessment. Yes, ma'am. So slides are not moving. Can you bring to that slide? Slide is not visible now? Visible, but not moving, sir. So this one, which one it is? It is not showing that formative, summative knowledge, No, understanding. sir. No, sir. Ma'am, which one it is showing? It is showing since 6 slides, 6 number. My goodness, I am taking all that, ma'am. Okay. But sir, we are able to understand, sir. Sometimes in our traditional mode of learning, we used to listen to the lectures. The slides are just an, addition to that. So, no, but that on the virtual platform that will hold the attention of the listeners or the, so I am stopping and resharing that one. Yes, sir. Yes, sir. Now is it shared, ma'am? I think we stuck on that 6 number slide. It didn't close, neither close nor again open it up. We are on the same slide. Yes, sir. Okay, so I have to unshare. Stop sharing. Just a minute, ma'am. Thank you so much, ma'am, saying that, because I was moving the slides. I thought that you were able to see and then understand. So, but your session was very interesting, very informative. Instead of slides, we are just listening to your words. So nice of you, ma'am, saying those nice things. Just give me 1 minute. I'll be coming. Sure, sir. Sure, sir. Ma'am, you have seen, you are now able to see? Yes, sir. Formative and summative assessments. Yes, okay, this I was actually going through this one. So now I was taking formative and summative assessment in project-based learning. Where is the knowledge? You are able to see my slide. Knowledge, understanding, practical skills. Sir, we are able to see slide number. I think it's 30th slide. So what 30 number slide. What all are visible to you? Formative assessments and summative assessments in 2 columns. Tests that evaluate assimilation. But I am moving the another one. Yeah, this one, and now it is not moving. No, sir, it's not moving. Okay, so that means slide show is not going. I will be manually doing, ma'am. Right, sir. Okay, ma'am. I'll do that 1 second. Yes, sir. I was talking about this one. You are able to see, ma'am? Now the slideshow, there is no slideshow, sir. You stop sharing the screen. Okay. Hello? Yes, sir, you are audible. I am not, ma'am. I am not able to see myself where. Okay, and now it's okay, ma'am. Just a minute. Ma'am, is now my slides visible? No, sir, it's not visible. Good evening, sir. Sir, we can share the slide. If you've got no issues, we can share the PowerPoint with our participants as well. We are also joined by our next speaker. Welcome, Dr. Anupama, ma'am. Good afternoon, ma'am.
So, ma'am, it's not visible. Then just I was saying, I'll conclude this one. And since the eminent speaker has already arrived, so with this, I'll just tell that consistent application, it's very important. And giving that in assessment, my definition of questions, developing methodology, and applying that information gained and allocating resources. So with this, I have come to the end of the session, and because the paucity of time, I would stop here, and I'll also listen to the participant if they have anything to share. Over to you, Anita ma'am. Thank you so much. Yes, sir. So thank you so much for your interaction. You taught us as a role of a teacher, being a mentor, philosopher, motivator, facilitator, inspirer. Sir, your session is very informative. We have few questions in the chat box, sir. So the one question is, with the permission of the next speaker. Sorry. With the permission of the next speaker, if I may be permitted to take these questions, ma'am. Yeah. Am I allowed? So, Please, sir. I guess, sir, both sir, we can take one question. I guess that would Yes, be sir. fine. Anupam, we'll be taking one question and before we start with your session. yes, Whatever- sir, yes. Whatever suits you, I am here and I am listening to him also. No problem. So the one question which I can raise, the combination of all the questions which being raised by the participants, can you point out the role of teachers in project-based learning with focus on research or dissertations? Of course, that the role is extremely crucial, because the role of a teacher here in the project-based learning is constant mentorship. And in the process of dissertation or in thesis writing, constantly you as a supervisor, you will be constantly in touch with your researcher. And the researcher every now and then going to bother the supervisor asking, so this is what I have done, these are my research questions, am I moving in the right direction? So this dissertation itself is a project. The thesis itself is a project. And you as a supervisor, I mean the teacher as a supervisor, is going to constantly monitor the project of that particular scholar. So therefore, the teacher has to tell that these are the 4 or 5 research questions you have to solve. You have to find the solution to the research question. Your hypothesis is bound to be this. And in the chapterization, there should be 6 to 7 chapters. And the first chapter should be introduction. These are chapters, and you are moving in the right direction. So this is again a project. And the supervisor is a facilitator. As a facilitator, he is not only going to provide you all support and confidence, but also going to give you kind of supervision that is expected of you, because he is the senior investigator, he is the senior in the teaching learning process, he is the senior partner. So therefore his role is extremely crucial, as your role is also as a scholar much more important. So it's a project. So definitely this project itself is a classic example that in the form of writing dissertation and thesis. Thank you so much, sir. We are truly blessed to have you amongst us. Your deliberation on project-based learning as a tool for teaching will definitely going to help all the participants. I hope this will going to make the classes more productive, that too with the experience of the project-based learning. The session is very informative, and the most importantly, presenting information in new and exciting ways quite an effective tool. And its results were everlasting. With this, the Faculty of Law, along with the DROIT panel, thank you for this session, and hoping to see you physically at our campus in future. Thank you so much for your kind words, and also thank you all the participants, the learned colleagues, for listening to me 1.5 hours. And I stand indebted to DROIT panel and ma'am, your institution, and especially my regards to all of you for listening to me patiently and giving me this Sir, one opportunity. more request, sir, one more request. I'll be requesting all the participants to turn on their camera for a virtual photograph.
So ma'am, kindly share this group photographs with me. Sure, sir. Sure. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. So Okay, thank ma'am. you Thank so you so much, much. both, sir. Yeah, thank you so much, sir. And we'll definitely share the photographs and the posters so that you can Thank also share it on your social media handles and bring things up. Ji, ji. So Thank you thank you so so much. much, sir. It was a wonderful session. Thank you. So after such a wonderful session by both, sir, we welcome you all to the second session. We are very sorry for not taking a gap in today's session, but these are some of those days where we have some extended times, and as teachers as well, when we enter the classroom, I guess this is also something that even goes unsaid with us as well. So, and I'm so blessed today to have been joined by Dr. Anupama Pandit Saxena ma'am. We welcome you, ma'am, on behalf of Faculty of Law, Jagran Lake City University, Deutsche Prenel Group Prayagraj, and GAD Ministry of Education in this online 15 days refresher course. It's a pleasure, and I can speak personally on my behalf as well, that yes, it's so wonderful to have your teacher, your mentor, and in such a thing, and it's gonna be such a great session that I can say well before the session as well. Believe me, ma'am, nothing has changed, neither your smile before the lectures and during the session. So thank you so much for creating that positive vibe here in this session. And before I move towards handing this virtual session to Anu ma'am, I would like to introduce the speaker for today. Dr. Anupama Pandit Saxena ma'am is an assistant professor at law at Department of Law, Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalay, Sagar, Madhya Pradesh, which is a central university. She has more than 2 decades of teaching experience both at the undergraduate and the postgraduate classes, including at the UTD Law, Barkatullah University, Bhopal, and at Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalay, Sagar, Madhya Pradesh. Also, she has an experience of more than 10 years in delivering invited lectures on law as a subject expert in various training courses organized from time to time. Also at the officers training at the MP Administrative Services at RCVP Narona Academy of Administration and Management, Bhopal. She has a wide experience of guiding the students at the PG and the UG level. Has membership on various board of studies and editorial boards, both national and international, and has special training in human rights proficiency organized by Madhya Pradesh Human Rights Commission. She has attended the orientation faculty development program and has also organized many of such in the capacity and as a part of an organizing team. She has very wide publications to her credit of nearly 8 in both national and international journals. She has chapter contribution in books as well. She has been an invited lectures for over nearly now for many subjects, including the law proficiencies. She has an experience of bearing various administrative as well as academic responsibilities relating to examination, admission, student mentorship, student elections committee, anti-ragging squad, women's sexual harassment complaint and redressal committee, internal complaints committee, and has been on as the convener and the co-convener of the national and the departmental activities, etc. With this, I would invite ma'am and welcome you, ma'am, to address this gathering. Before I officially come across to your side, I would also like to inform you that this 15 days online refresher course is a bunch of nearly 165 members coming from nearly 26 states of our country, and they have been one of those I have been organizing, and even Gaurav sir would agree on that this is one bunch of such talented faculty members and research scholars who have been very interactive and have been contributing in past 7 days, today itself being the 8th day. So this is also a brief description of what audience you have, ma'am. So over to you, Anupama ma'am, to take the session ahead. Thank you very much. Thank you. Good evening, everybody. And thank you very much, Dr. Devanshu Srivastava, for this overwhelming and kind words.
And I'm so happy to see you. I always become happy whenever I see you. And now I can see my friends, Dr. Anita, some of my friends are here. Dr. Anita Ladda, ma'am is there. She's one Hello, of my ma'am. colleagues. Hello, ma'am. How are you? And I can see some of my, students also, Apurva, and was a few more. I don't know. Maybe I can recognize them right now or not, because for past like 10 years I'm here. And but it is definitely whenever there is a program which connects me to Bhopal, whether online or offline, I always said that it's like a homecoming for me. So it makes me a different kind of pleasure and a different kind of experience whenever I am in touch with Bhopal. I'm just an over emotional person, but it makes me feel like that I am there with you. So let me enjoy that moment also. And today I'm very happy to see that so many participants have joined. And you just told me that you have got like more than 150 participants from all over India. So I think I should take 1 minute just to congratulate you, your university and Dwight panel group for like कैसे आप लोगों ने इतने सारे लोग इकट्ठे किए होंगे और सारे लोग जुड़े हुए हैं और आप मतलब you're just doing this mind storming. I should really congratulate you people, and thank you for giving me this opportunity to present my views. So with your permission, can I speak in mixed language because that is more comfortable for me? Yes, ma'am. That Will will it be be okay? comfortably fine. Right. And we have also So given you the sharing rights, ma'am. You can share your screen with the right, PowerPoint. I am just sharing my rights. Just give me a minute and just tell me if I am visible and audible. Sure. And there's just one more thing before I share my PowerPoint presentation. Yes, I have already shared this with you, and you can share it wherever you want. And the thing is that along with this PowerPoint presentation, I would like to show you a PDF which I have saved from an article, which I will be sharing in between. That I did not share with you. So if you want, I can share afterwards. yes, ma'am. That will Right be now, clearly fine. yeah, but I will After be, your session, yeah. yes, ma'am. After your session, we will share the PPT as well as the PowerPoint, the PDF as well with the participants. Yeah, because I could not share that time, No worries, but I ma'am. will be referring that article in this. So is my PowerPoint presentation visible to Yes, ma'am. everybody? It is Right, visible. right. So I think we should start now, right? Okay. So this topic is, the thing is कि जब भी मुझे ये मिला था, so मुझे जो टॉपिक दिया था वो ये था, आपका जो थीम है, that is new age teaching methods and skills in higher education. So I thought कि maybe it would be a good idea if I will be taking a little bit, I should say, mind storming again, or refreshing or revising things for the theme itself. So after having a conversation with Dr. Devanshu Shrivastava, I get to know that most of the topics, और especially अगर हम बात करें कि जो methods आपने पढ़े, तो आपने कुछ specific methods पढ़ लिए हैं, that you have gone through flipped classroom method, और अभी मैंने जो आपका lecture सुना, अभी उन्होंने सर ने आपको जो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, तो एक कुछ स्पेसिफिक जो मेथड्स होते हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं. तो हम ऐसा करते हैं कि हमने अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको ऐसे 3 हिस्सों में बांटेंगे, बिकॉज यू हैव गिवन मी 1.5 hours. तो हम ये 3 हिस्सों में अपना प्रेजेंटेशन कवर अप करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इन वन पार्ट वी विल बी हैविंग अ ब्रीफ आइडिया एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट. You can call it a revision of the theme and the basic concept. And after that, finishing that, I will be telling you about some very popular innovative pedagogies, because some of the pedagogies you have already gone through, और कुछ और जो मैंने ढूंढी है, especially higher education के लिए, क्योंकि pedagogies are always some pedagogies are similar and some are always different for school level and for higher level of studies. So we will be going through the pedagogies which are especially related to higher education, and I will be focusing on interdisciplinary pedagogies, because it is not a मुझे बताया गया था कि there are participants from various subjects, so I will be focusing on that. और third जो हमारा रहेगा हिस्सा, that is actually a very interactive one. उसमें मैं कुछ आपसे अपनी पर्सनल जो मुझे फेवरेट मेरी पेडागॉजीज है वो मैं शेयर करूंगी, एंड आई वुड रियली लाइक टू हियर फ्रॉम यू आल्सो कि आपको क्या पसंद है और क्या कुछ नया सा हम लोगों ने भी कुछ क्रिएट किया है कि नहीं. This is something very interesting also. So let's start with the presentation, and
this is the first slide in which we will be starting with the theme and basic concept. तो एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन, आपने अपने पहले वाले प्रेजेंटेशंस में भी डेफिनेटली इसके ऊपर मंथन किया होगा आपने, और आपने इसको डिस्कस भी किया होगा. सो आई विल नॉट बी रिपीटिंग एवरीथिंग, बट द थिंग इज दैट आई विल ट्राई टू कनेक्ट द वर्ड एजुकेशन विद दिस पिक्चर जो मैंने यहाँ पे दिखाई है छोटी सी. सो इट इज समथिंग लाइक किसी चीज को बड़ा करना, ब्रिंगिंग अप, you know, it is something which rise up करना. So जो words है जो इस definition में use हुए हैं, आप वो Latin word से किस तरह से ये इसका origin हुआ है, वो सब चीजें हम लोग सामने ही हमारे, और हम पढ़ भी चुके होंगे. So जो इसका basic थी, मुझे समझ में आया कि इसका जो idea है वो किसी भी चीज को जिस जगह पर वो है उससे उसको बेहतर जगह पर हम कैसे बनाएं, उसको हम किस तरीके से ऐसा ब्रॉट अप करें कि वो अपने आप में जो उसका पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर पाए, और शायद एक बहुत अच्छी पोजीशन अपने जीवन में या अपनी कहना चाहिए हमारे एजुकेशन में, या हमारा जो भी हमारा लक्ष्य है उसके लिए हम ले पाए. सो इट इज समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव. द वर्ड एजुकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. सो एजुकेशन वी ऑल नो, एंड एजुकेशन कैन बी गिवन एट एवरी लेवल. आपको घर पे भी मिलती है, स्कूल में भी मिलती है, कॉलेज में भी मिलती है, एंड लाइफ इज ऑल्सो समटाइम इट टीचेस यू सो मेनी थिंग्स जो आप कहीं भी नहीं सीखते. सो दिस इज ओके. नाउ व्हाट इज हायर एजुकेशन? सो वी हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन जो हमारा स्कूल एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है. और वो छोटा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो पेडागोजीज है वो थोड़ी डिफरेंट होंगी, बड़ा तरीका अलग हो जाएगा. और हम जब स्कूल एजुकेशन पूरी करके आते हैं तो हमारे पास एक फाउंडेशन होता है, हमारे पास एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेलेंस होता है किसी चीज को समझने के लिए. तो हम ये मान के चलते हैं कि जब हम हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो जो हमने स्कूल में पढ़ा है हमको उससे ज्यादा बताना है, और हमें ये पता होता है कि स्कूल में एक फाउंडेशन क्या बनाया गया होगा. सो दिस इज कॉल्ड हायर एजुकेशन. कभी कभी आप इसको हायर लर्निंग भी कहते हैं. और अब तो ये खैर जो सब्जेक्ट सिलेबस चेंज हो गया है एजुकेशन का, नेट का, उसमें भी सब चीजें जोड़ भी दी गई हैं. तो थोड़ा सा इसको देख लें. वैसे हायर एजुकेशन का मतलब बिल्कुल क्लियर है, ऑलमोस्ट इसमें इसके बारे में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है कि हायर एजुकेशन किसे कहते हैं. पहले के जमाने में 11th करके हो जाता था, अब थोड़ा 12th करके होता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. बट हायर एजुकेशन मीन्स एन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्पेशली टू डिग्री लेवल. तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है. और इसको हम हिंदी में अगर देखें तो ये हमारी तृतीय स्तरीय या तृतीयक शिक्षा, उच्च शिक्षा हम इसे कहते हैं. तो एक हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, तो ये हमारा एक टर्शरी लेवल है जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी में जो हमने पढ़ा हुआ है उससे हायर लेवल पे हमको पढ़ना होता है, और उससे ज्यादा बातें जानने की हमको कोशिश करनी होती है. यही हमारे इसका मोटिव है, और यहीं से हमारी पेडागोजीज जो है वो डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी. कुछ तो कॉमन रहेंगी हमेशा, क्योंकि शिक्षा के कुछ तरीके तो शाश्वत हैं. जैसे अभी मैं कल जो एक लेक्चर सुन रही थी प्रोफेसर भाटिया का, और उन्होंने कहा कि द मोस्ट बोरिंग मेथड ऑफ टीचिंग इज लेक्चरिंग. यू कांट इवन लिसन लेक्चर टू योर हस्बैंड, टू योर पेरेंट्स. तो किसी और का लेक्चर सुनना कितना दुखदाई होता होगा, ऐसा उन्होंने अपना बताया था. पर डेफिनेटली वो जिस लेक्चर की बात कर रहे थे, उन्होंने मजाक में ये बात कही थी, तो वो जिस लेक्चर की बात कर रहे थे वो बड़ा परंपरागत तरीके का पुराना एक लेक्चर हुआ करता था. अब तो लेक्चर के भी तरीके बहुत बदल गए हैं, और अब उसमें बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव पेडागोजीज हमने जोड़ दी हैं जिसके कारण लेक्चर्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं. और लेक्चर्स में जब हम और बहुत सारी पेडागोजीज जोड़ लेते हैं तो वो इतना कहना चाहिए उसका आउटकम इतना अच्छा आता है, और वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि लेक्चर अपने आप में बहुत अच्छा मेथड है. जिस रिसर्च पेपर की मैं अभी आपसे बात कर रही थी, उस रिसर्च पेपर को जब हम कंक्लूड करते हैं, इट इज अ वेरी रेप्यूटेटेड रिसर्च पेपर, रिसर्च गेट से वो लिया हुआ था, मैं आपको उसको दिखाऊंगी भी. उसमें अल्टीमेट कंक्लूजन में ये दिखा रहे हैं कि सारे जितने भी डिसिप्लिन हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर तैयार किया था जिसमें उन्होंने लगभग सारे डिसिप्लिन को कवर किया हुआ है. मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, सब कुछ कवर किया. और अल्टीमेटली सबसे अभी तक सबसे ज्यादा कॉमन जो मेथड है उन्होंने लेक्चर को ही माना है. पर डेफिनेटली हर किसी का जो लेक्चर मेथड है उसका तरीका अब बहुत ज्यादा बदल गया, तो हम उसको भी देखेंगे. तो और उसके अलावा भी बहुत सारी नई नई जो पेडागोजीज है वो भी हम देखेंगे. तो अब हम जरा देख लें कि आखिर इनोवेटिव पेडागोजीज से हमारा मतलब क्या है. सो बाय इनोवेटिव पेडागोजीज वी मीन द मेथड्स ऑफ टीचिंग दैट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर स्टूडेंट, अ सर्टेन इनोवेशन इन पर्टिकुलर in practical activity in the process of mastering the educational material. तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इनोवेटिव पेडागोजीज जो है वो ये भी हो सकता है कि कोई एक तरीका जो आप हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसमें आपने कुछ नया किया हो, या आपने एक ऑल टुगेदर एक नया पूरा तरीका निकाल लिया हो.
तो ऐसी बहुत सारी तरीके हो सकते हैं इसमें। तो इनोवेटिव पेडागोजी से हमारा यही मतलब है कि हम किसी भी तरीके से एक ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो और ज्यादा बेहतर बन सके और स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से उसको सीख सके। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। सो व्हाई डू वी नीड इनोवेटिव पेडागोजीज इन हायर एजुकेशन? क्योंकि हमेशा से अभी आपने देखा होगा कि जब आप अगर कभी भी इस पे लेक्चर भी तैयार करें जैसे कि मैंने अभी किया, तो मुझे ये लगा कि ज्यादातर जो इनोवेटिव पेडागोजीज हैं वो स्कूल लेवल पे बहुत ज्यादा डेवलप तरीके, बहुत अच्छा बताया गया है। ज्यादा रिसर्च पेपर्स भी उस पे मिलते हैं हमको, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा वो भी उस पर ज्यादा फोकस करता है, और हमारे जितनी भी कहना चाहिए जितना हमारा तरीका है ये पेडागोजीज को पढ़ाने का, डेवलप करने का, वो भी हम स्कूल को टारगेट मान के हम इसको करते हैं। बट अब ऐसा नहीं है, कुछ समय से हमको ये चेंज दिखाई दे रहा है और हमको ये समझ में आ रहा है कि जो केवल स्कूल में ही नहीं इनोवेटिव पेडागोजीज की जरूरत होती है, हायर एजुकेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हायर एजुकेशन में भी कभी कभी एक छोटी सी नई अगर हम कोई पेडागोजी लेके आए तो वो भी कई बार बहुत अच्छे, बहुत कमाल के रिजल्ट्स हमको देती है। और हायर एजुकेशन में अब इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए हम इस चीज को यहाँ पे अब आपने इसके पूरा रिफ्रेशर कराया है इसके ऊपर, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और जब से हमारी ये नई हमारी शिक्षा नीति आई है उसके बाद से तो ये नई शिक्षा नीति हमारी ऐसी है कि ये हमारी चल ही नहीं सकती जब तक कि हम कोई नई पेडागोजीज डेवलप नहीं करेंगे या हम अपनी ही जो पेडागोजीज हैं उनमें कोई सुधार नहीं करेंगे। तो ये हमारी नई शिक्षा नीति में जो हमारे लक्ष्य है उनको तो प्राप्त करना फिर हमारे लिए संभव ही नहीं, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स विदाउट हैविंग some new pedagogies or without reforming your old pedagogies। तो हम देखें इसकी क्या जरूरत है। ये एक लेक्चर, ये सब नीचे मेंशन्ड है, एक्चुअली सोर्सेज मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, टाइम और डेट नहीं डाल पाई इसकी, अदरवाइज ये सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसमें मैंने ये प्रोफेसर शरद सिन्हा जी का एक कहना चाहिए इनका एक लेक्चर तो नहीं था, इनका एक ब्रीफ नोट था जो इन्होंने, ये प्रोग्राम शुरू हुआ था एनसीईआरटी में उसमें उन्होंने इसको दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत जरूरी है ये पेडागोजी, क्योंकि आप ये उन्होंने जो एक कीवर्ड उसका बताया वो ये कि जो आपकी लर्निंग है उसको इंजॉयबल और इंगेजिंग बनाती है। सो वो एनसीईआरटी में कहा था, तो डेफिनेटली इट इज मोर रिलेटेड टू स्कूल, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं कि हमारा इससे संबंध नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने अपने ही नोट में इन्होंने कवि जो है विलियम बटलर, इनको भी कोट किया था, इनकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने अपने इसमें प्रेजेंटेशन में भी ले लिया। उन्होंने बोला है कि एजुकेशन शुड नॉट बी फिलिंग अ पेल बट इट इज अ लाइटिंग ऑफ फायर। बिल्कुल समझ सकते हैं कि ऐसी ही होनी चाहिए हमारी शिक्षा और हमारी आने वाली पेडागोजीज भी ऐसी ही होनी चाहिए। इसके अलावा ये एक इंटरनेशनल जर्नल है जिसमें उन्होंने इसको बताया है कि जो इनोवेटिव पेडागोजीज है वो हायर एजुकेशन में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है अगर आपको इफेक्टिव टीचर बनना है 21st सेंचुरी में। तो ये असंभव है। तो हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी आप आगे भी मेरे प्रेजेंटेशंस देखेंगे कि जब भी कोई नई चीज आती है, कोई नई पेडागोजी आती है या कोई भी नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आता है, तो हम में से कुछ लोग अपने वो जड़त्व के सिद्धांत में काम करते हैं और जब तक हमारा ऊपर बाहरी फोर्स लगाया नहीं जाए हम उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। ऐसा होता ही है। तो लेकिन अब कोई चारा नहीं है, हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपको इन पेडागोजीज के साथ ही काम करना पड़ेगा वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और वैसे भी कोविड के समय ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है, ऑनलाइन सिखा दिया है, काफी कुछ तरीके सिखा दिए, मगर अब वो भी अब कम है क्योंकि जिस तरह के लक्ष्य इसमें दिए गए हैं उसके लिए अभी हमें बहुत कुछ और सीखना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम ट्रेनिंग के माध्यम से, रिफ्रेशर के माध्यम से हम सीख भी सकते हैं। तो ये इसमें इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, अफर्म किया गया है कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज पेडागोजीज आर। और अगर आपको आगे टीचिंग एक्सेलेंस करना है तो भी जरूरी है। बहुत सारी चीजें रिपीटेडली वही कॉन्सेप्ट लाती है, उनको मैं छोड़ूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। और इन्होंने ये बताया है, अभी सर भी बता रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर में, कि रिसर्च के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी होती हैं और टीचिंग के लिए तो जरूरी है ही। इसके बाद ये बताते हैं कि ये अभी फिलहाल द हिंदू में ये था एक आर्टिकल, उसमें इन्होंने स्टीफन विंसेंट साहब ने, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से हैं, प्रोजेक्ट लीडर है वहां के, उन्होंने इस बात को बताया है कि वी नीड टू चेंज एंड इम्प्रूव टीचिंग सो दैट देयर आर बेटर लर्निंग आउटकम्स दैट डिफरेंट स्किल्स सेट आर फॉस्टर साइमल्टेनियसली। तो डेफिनेटली इन्होंने भी उस बात को रिकॉग्नाइज किया है। इस बात को कहने का केवल मेरा तात्पर्य ये था कि वे लोग जो शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए हैं,
the people who are engaged in teaching, the people who are engaged in learning, the people who are engaged in companies, the people who are engaged in corporate world, कोई भी अब इस pedagogy से बचा हुआ नहीं है। अगर आप जरा सा भी, जैसे ही आप इसको आप अगर न्यू pedagogies डालेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी जिनकी पहले हम कल्पना नहीं करते थे। कंपनी में भी आजकल गेमिफिकेशन हो गया है। आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी गेमिफिकेशन हो गया है। जब आप कहीं भी कोई काम करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा ऐसी कोशिश की जा रही है कि उसको किस तरह से और इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। तो ये अब हर चीज का हिस्सा हो गया है। तो हमारी टीचिंग इससे बिल्कुल बची हुई नहीं है डेफिनेटली। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे। अब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पे हम ये जो पेडागोजीज हैं उनको तैयार करते हैं। हमको ये देखना होता है कि हम कोई भी नई पेडागोजी जब अगर प्रस्तुत कर रहे हैं, ला रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसमें ये कुछ की एलिमेंट्स होने ही चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स आपके पेडागोजी में है तो आपकी डेफिनेटली पेडागोजी जो आप सोच के चले हो वो सक्सेसफुल होगी। आपने जो तरीका सोचा है, जो आपने विचार लाए हैं, जो आप धारणा अपने मन में बना रहे हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस है और ये उसमें होने चाहिए। तो हम ये प्रिंसिपल्स देखेंगे और इन 3 प्रश्न का उत्तर अभी हम तलाशेंगे। पहली बात तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडागोजीज, एंड हम अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट पेडागोजी कैसे चूज करेंगे। तो ये तीनों जो प्रश्न है उसका जवाब अभी हम आने वाली स्लाइड्स में तलाशने वाले हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स जिसके कारण एक इफेक्टिव पेडागोजी तैयार हो सकती है। तो इंक्लूजन, ये सब हमारे ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं और आपने पहले के लेक्चर्स में भी सुनी होंगी। मैं बस टच करते जाऊंगी इसको, जहां पे रुकना होगा वहां पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो इंक्लूजन, ऑब्वियस सी बात है, ये स्टूडेंट्स के, पार्टिसिपेंट्स के, स्टेक होल्डर्स के इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। और अब ये समय आ गया है, ये वो समय नहीं है कि टीचर अपना डिलीवर करते जा रहा है कंटेंट और स्टूडेंट उस पर पलट के सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, नहीं कर रहा है, उसने कुछ सीखा या नहीं सीखा। अब ये वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें आपको अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ इंक्लूड करना होगा। बल्कि इनफैक्ट अब तो ये कहा गया है कि जब आप पेडागोजी तैयार करते हैं तब भी आपको स्टूडेंट्स को अपने साथ इंक्लूड करना चाहिए। तो वो भी एक तरीका हो गया। मोटिवेशन डेफिनेटली इसमें होना ही चाहिए। आपकी कोई भी ऐसी, अगर आप पेडागोजी तैयार करते हो, कोई भी यदि आपने नया ढूंढा है इस तरह का तरीका, तो वो डेफिनेटली बहुत मोटिवेटिव होना, बहुत मोटिवेशन देना चाहिए उसको। तो किस चीज का मोटिवेशन, कि भाई आप उस चीज को बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करें और जितना बेहतर आप सीखें। आप सारे एक जैसा तो नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ, हर स्टूडेंट, हर लर्नर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे मोटिवेट होगा। क्वालिटी एश्योरेंस इसलिए कि केवल एक नया तरीका ढूंढ लेने से कुछ नहीं होगा। उसके आपको पहले से ये सोच के चलने पड़ेंगे कि आप कंटेंट क्या दोगे, उस कंटेंट की क्वालिटी क्या होगी, उस कंटेंट का लेवल क्या होगा, वो कंटेंट आपके स्टूडेंट को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, और वो जो कंटेंट है वो आपके क्लास के टॉप स्टूडेंट से लेके आपके क्लास का जो वीक स्टूडेंट है उसके तक हर किसी को वो सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको हो सकता है एक से ज्यादा भी उसमें कुछ सब थीम्स बनानी पड़ जाए, लेकिन ये आपको अश्योर करना पड़ेगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जब इंक्लूजन है तो ट्रांसपेरेंसी तो वहां होगा ही, क्योंकि जब आपके साथ में इन्वॉल्व है हर चीज में, तो आप जो भी चीजें कर रहे हो वो आपको बताना चाहिए। इनफैक्ट आगे जब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और हम कुछ और पेडागोजीज भी देखेंगे, तो उसमें उन्होंने बताया था स्टूडेंट को खुद हम ऑफर करते हैं कि अभी अभी आपने कुछ एक प्रेजेंटेशन दिया, या अभी अभी आपने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, या अभी आपने दूसरों को सुना, तो आप खुद बताइए कि आपके इसमें क्या कमी रह गई थी। इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी भी उसमें रखी जा सकती है। आजकल वैसे भी हमारे यहाँ पे सीबीसीएस सिस्टम चलता है, तो उसमें तो हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखते ही हैं। मार्क्स बताए जाते हैं, कॉपी दिखाई जाती है, बहुत सी चीजें होती हैं, और आजकल एक काफी जगह पे होने लगी है। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने एक कोई पेडागोजी इस्तेमाल किया और अगर आपने उसको ट्राई नहीं किया ठीक से, तो हो सकता है कि आप जो रिजल्ट सोच रहे थे वो आपको अभी मिले भी नहीं, और ये हो सकता है कि आपने उसको ये सोच के छोड़ दिया कि नहीं, इसका मुझे बहुत अच्छा कुछ फीडबैक नहीं आ रहा है। थोड़ा उसको ट्राई कीजिए, उसको कंसिस्टेंट रखिए, अलग अलग बैचेस पे ट्राई कीजिए, अलग अलग ग्रुप्स बना के ट्राई कीजिए। इन सब चीजों से आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। उसके बाद इनोवेटिव अप्रोच तो हमको लेना ही है उसमें। इनोवेटिव अप्रोच हम अभी समझ चुके हैं। तो हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे, ये प्रिंसिपल्स को क्या ध्यान रखेंगे, तो ये सारी जनरल बातें हैं जो आपने सुनी हुई हैं कि हम कोर्स की जो डिमांड है, उसकी जो फिलॉसफी है, वो कोर्स क्या सिखाना चाहता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सब तैयारी करते हैं। रोल ऑफ स्टूडेंट को देखना है हमको, उसमें स्टूडेंट का रोल क्या होगा, कितना इंक्लूजन होगा, कितना उसका क्या पार्टिसिपेशन रहेगा। उसके बाद हमको इसमें टीचर का भी रोल तय करना है कि टीचर का रोल कैसे रहेगा। कई बार ऐसी भी कुछ पेडागोजीज होती है जिनमें टीचर का रोल केवल वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, उसमें वो दूर से बैठ के देखता है। कई ऐसा होता है जिसमें उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने पड़ती है। तो ये आपको पहले से डिटरमाइन करके रखना चाहिए कि आपकी किस तरीके की पेडागोजी है और उसमें आप किसका क्या रोल है।
लास्ट जब एक बार आप कोई जब हम उसको तैयार शुरू कर देते हैं और हम किसी पेडागोजी को वर्किंग में ला देंगे, उसके बाद ये सारी चीजें तय नहीं होंगी, वो बहुत क्योस करेंगी आपकी पूरी एक्सरसाइज में। तो ये सब कुछ पहले से तय करेंगे आप। उसके बाद आपकी टीचिंग का गोल क्या है। तो आपको जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके बताऊं और मैं एक टॉपिक बता रही हूँ, और मुझे उस बच्चे को जब मुझे वो टॉपिक खत्म करना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, उससे रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ भी समझ में आ जाए, उसके केस लॉज भी समझ में आ जाए, या एटलीस्ट उसको उसका एक दिमाग में, अगर मुझे केवल कॉन्सेप्ट समझाना है तो मैं फिर उसी पे फोकस करूंगी कि ये कॉन्सेप्ट में किस तरीके से अच्छे से समझा सकती हूँ। कोई मैप यूज करूँ, कोई चार्ट यूज करूँ। हो सकता है मुझे, अगर मैं कोई ज्योग्राफिकल चीज समझा रही हूँ, तो मुझे इंडिया का ही मैप दिखाना पड़ जाए, बिकॉज आई टेंड टू शो ऑल दिस इन मैरीटाइम लॉ जब हम यहाँ पे लेते हैं। तो अब तो स्मार्ट क्लासरूम है, पहले तो हमको मतलब हम बोर्ड पे नहीं बना सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप देखिए कौन सा सूटेबल मेथड है, और डेफिनेटली जब आपने एक गोल सेट किया है तो आप उससे जरूर टेस्ट करें कि क्या उस गोल में से कितना हमने अचीव किया, क्या आउटकम है हमारे उसका, और बच्चों ने क्या सीखा, क्या नया सीखा। एंड डेफिनेटली इट इज एन एक्सपीरियंस which is a wonderful experience for not only for students but for teacher also. मुझे तो ऐसा बिल्कुल फील होता है कि जब भी हम कुछ ऐसा नया करते हैं तो एज अ टीचर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन एवरी क्लास व्हेन आई गो, आई ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल्सो a few things which we have to keep in mind. Am I audible? Because it is like, right? You are audible, ma'am. You are Yes. perfectly So audible. let's continue. So these are the principles. अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम आते हैं एक्चुअली कि हमारी कौन सी पेडागोजीज हैं जिन पर हमको काम करना चाहिए। और ये जो पेडागोजीज है ये आगे जाके यहाँ पे खत्म हुई है। तो मैं इसलिए आपको ये बता दूं कि ये मैंने इस सोर्स से ली हुई है, और ये इस सोर्स में जो पेडागोजीज दी थी वहां से मैंने ये तैयार किया है। सो दिस इज नॉट दी ओनली थिंग कि आप ये लगे कि बस इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, या इसको किसी और तरीके से समझाया नहीं जा सकता, या आपस में कहीं एक साथ इनको जोड़ के नहीं समझाया गया होगा, या इनको और भी ज्यादा तोड़ के नहीं समझाया गया होगा। ये बिल्कुल हो सकता है। तो आप जब अलग अलग रिसर्च पेपर्स देखेंगे, जर्नल्स देखेंगे, बुक्स देखेंगे, तो आपको इससे ज्यादा भी मिल सकती है और इससे बेहतर भी तरीके से मिल सकता है। मुझे जो सबसे बेहतर लगा वो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक कंपाइल कर दिया। तो ये जो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी तरीके की अप्रोचेज हैं जिनसे हम अपना जो कहना चाहिए जो हमारा लक्ष्य है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है, बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग और टीचिंग को आगे बढ़ाना है, उसे हम पूरा कर सकते हैं। सो व्हाट आई ट्राई कि मैंने एक जो है वो पेडागोजी लिया, फिर मैंने कोशिश किया कि अगर मुझे उसका एग्जाम्पल मिल जाए, बिकॉज हमारे पास लॉ के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, तो हिस्ट्री का कोई एग्जाम्पल मिल जाए, कोई कॉमर्स का मिल जाए, कोई लैंग्वेज का मिल जाए, और कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी तो है ही। ऐसे बहुत सारे पेडागोजीज हैं जो मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं कई बार उनसे डिस्कस करती हूँ कि आई वांट टू ट्राई this in my subject, so will it work or not, and we have a kind of a discussion, and then हम उसको कभी कभी थोड़ा रोज तो नहीं कर सकते, आप जानते हैं हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इतना फिक्स शेड्यूल होता है, हमारे पास सिलेबस हमको पूरा करने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वंस इन अ वीक, वंस इन 15 डेज में कभी एक आध बार ऐसा कुछ हल्का सा कुछ करने से ना केवल हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं, बल्कि हमको लगता है कि हाँ इससे उन बच्चों को फायदा मिला जो ये हमारे रेगुलर टीचिंग से कई बार फायदा नहीं भी उठा पाते। सो लेट्स सी आपको इसमें से कौन सी सबसे ज्यादा सूटेबल लगती है, या आपने कौन सी इस्तेमाल की होगी सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। इसमें इसमें हमको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्या कह रहे हैं ये। इसमें जो स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली स्टूडेंट को हेल्प करेगी, और मटेरियल जो है उसको समझ पाएंगे ठीक से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से आपको उसको समझाना है। और वो खाली उसको जैसे आपने मटेरियल पकड़ा दिया और उन्होंने उसको देखा नहीं, तो इस तरीके से हमें ये काम नहीं करना, हमको उसको कंस्ट्रक्टिवली बताना है, उसको मटेरियल समझाना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप चार्ट्स के द्वारा, मैप्स के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, और अभी आजकल एक हम लोग नई एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं। हम लोग एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी की तरह ज्यादा काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी नई पेडागोजीज इस्तेमाल करने का बहुत स्कोप नहीं होता, टाइम बाउंड होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ कुछ कोशिश करते रहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे भी हम एक्सरसाइज करते हैं कि कभी हम महीने में एक बार एक कोई मूवी दिखा देते हैं लॉ से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम लोग उस पर उन बच्चों से डिस्कशन ले लेते हैं। उसके बाद उनके एक तरीके से उनपे जो वो कुछ एक जीडी भी रख सकते हैं उसके ऊपर हम, कि भाई इसमें जो इस्तेमाल हुआ वो कैसे हुआ, क्या है, कौन सा सेक्शन लगा,
कुछ ज्यादा ड्रामेटाइज कर दिया होगा मूवी में, तो उसको हम लोग छोड़ के बाकी उसके लॉ पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी आप अपने सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव टीचिंग की पेडागोजी है जिसको हमको इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा कम खर्चे से हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं होता आपको, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ स्मार्ट क्लासरूम भी हमेशा चाहिए हो जरूरी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आपको बहुत इजी गोइंग तरीके से भी आप इस चीजों को कर सकते हैं। उसके बाद इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, देखिए इसमें से सारी जितनी पेडागोजीज है ना, ये लगभग हम सब लोग अपनी क्लासेस में इस्तेमाल करते ही हैं। बस अभी क्या है, जब हम इसको इस तरीके से पढ़ते तो हमें समझ में आता है अच्छा ये जो हम करते हैं इसका नाम ये है, दैट इज ओनली थिंग। हम ये सारी चीजें अपनी क्लासेस में करते ही हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन सारी अप्रोचेस को फॉलो कर रहे होते हैं। मगर हाँ, अब जो समय है वो इनको और ज्यादा बढ़ाने और इसमें और नवीनता लाने के लिए इसको हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में ठीक है, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद जब उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, और वो डेफिनेटली अगर आपके क्वेश्चन का आंसर वो देते हैं तो आपको समझ में आता है कि बच्चे ने कितना कॉन्सेप्ट समझा। इसमें एक और बहुत अच्छी तरीका ये है कि आप बच्चे को ही बोल दें कि आप क्वेश्चन बनाइए। जैसे कभी भी जब हमारा सिलेबस खत्म हो उसके बाद हम लोग जब बच्चे से बोले, या छोटे स्कूल में भी मैंने देखा ये बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है, आप वो भी कर सकते हैं। और बल्कि इसमें एक और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। ये एक ऐसी चीज है, क्वेश्चन आंसर से हट के आगे बात करें इसकी, ये तो छोटी छोटी चीजें सब हम लोग करते ही हैं। हम ये करें कि जो आपने टॉपिक लिया, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि हिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, तो हिस्ट्री के प्रोजेक्ट में पर्सनली बच्चा इन्वॉल्व होके एक ऐसी पर्सनालिटी चुने। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें हमने हमारे यहाँ पे केवी स्कूल, केवी जो हमारे इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है, उसमें अभी यहाँ पे आजादी का अमृत महोत्सव में आपको मालूम है बहुत सारे प्रोग्राम जो चल रहे थे, उनमें ये भी था कि जो अनसंग हीरोज हैं आपके एरिया के, उनके बारे में हमको अवेयरनेस करना था, उनके बारे में हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको 2-3 ऐसे लोग मिले जिन्होंने किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी बहुत अच्छे एरिया में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। हालांकि अब स्वतंत्रता समय के लोग तो मिलना बहुत मुश्किल हो गए, बहुत टाइम बीत गया, लेकिन हाँ उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनके पास उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम अपने स्टूडेंट को वहाँ भेज सकते हैं कि आप जाइए वहाँ पे पर्सनली और आप जाके उनसे मिलिए, और जाके आप देखिए, आप उनसे क्वेश्चनर तैयार कीजिए, उनसे इंटरव्यू लीजिए, और आप आके अपना उस पर एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। सो इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट, और वो कभी इस चीज को नहीं भूलता। तो इस तरह का वो खुद जाएगा, इंक्वायरी करेगा, पूछेगा वहां पे जो क्वेश्चंस हैं, कभी वो सीधे उस व्यक्ति से मिलेगा जिसने वो काम किया है, या कभी किसी और तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें स्टूडेंट बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होकर इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके की और बहुत सारी चीजें हम लोग अपने सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। फिर ये सॉक्रेटिक मेथड है, बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगी कि न्यू पेडागोजीज या इनोवेटिव पेडागोजीज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम अपनी पुरानी एंशियंट पेडागोजीज को छोड़ दें। अपने ही देश की नहीं, दूसरे देशों में भी हैं, ऐसी बहुत सारी हैं, तो उनको छोड़ना कोई इसका तरीका नहीं है। उसमें आप नयापन बिल्कुल ला सकते हैं, और कुछ तो एवरग्रीन पेडागोजीज हैं, वो तो कभी खत्म होने नहीं वाली है। हाँ, उसको आपको इम्प्लीमेंट करने का तरीका जरूर ढूंढना पड़ेगा, उसमें नई नई मेथड्स आप ढूंढ सकते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रेडिशनल पेडागोजी है, और ये नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ये सुकरात साहब के नाम पर है। और इसमें इन्होंने बच्चों को, हम पढ़ते थे जब कभी कभी सुनते हैं, तो ये आसपास बिठा लेते थे बच्चों को और उनसे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते थे, और उसी से उनका डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ जाता था। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, और इसमें जो है बच्चों को डेफिनेटली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, रीजन एंड लॉजिक डेवलप होता है। हमारे लॉ की फील्ड में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो बार काउंसिल करवाती है जिसमें ये मेथड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग, रीजन और लॉजिक को बढ़ावा देती ही है। इस तरीके की जो एक्सपीरियंस है वो आप अपने सब्जेक्ट में भी करके देखेंगे, और बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स इसके आएंगे, और आपको लगेगा कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से डिस्कशन जब करते हैं तो कई ऐसी बातें, कई बार आप सोच भी नहीं सकते, बच्चे की सोच इतनी अच्छी होती है। अभी बच्चे की छोड़ दें, अगर आप अपने ही, हम आप हायर एजुकेशन में भी बात करें, तो समटाइम व्हेन दे स्टार्ट डिस्कशन, एक बहुत अलग लेवल पर डिस्कशन चले जाता है, और इतनी सारी नई नई चीजें, नए सजेशंस, नए उसमें अगर हम लॉ की बात करें तो कई ऐसे सारे कमियां नजर आने लगती हैं जो हमने एक बार देखा हो तो नजर नहीं आती। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, पुराना मेथड है, और इसको अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज वन ऑफ द वंडरफुल मेथड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जल्दी खत्म करेंगे इसको अपन, ताकि हम आगे और बढ़े। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, इसमें बिल्कुल समझ सकते हैं हम कि हमको इसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से कनेक्ट करना है, और इसमें हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसमें आपने जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखे, इससे हम समझ जाएंगे। तो इन्होंने बोला है कि जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे,
ठीक है, उसमें आपने स्टूडेंट को कोई एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट दे दिया, उसको आपने उसको टैकल करने के लिए किया। अब आपने जो क्लास है उसको टीम्स में डिवाइड कर दिया और उन दोनों टीम्स को अपना अपना जो उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो आपने उसको प्रेजेंट करने के लिए कहा। उसके बाद जो एक टीम मेंबर है उसने सारे सॉल्यूशन लिखे और उसके बाद जो वो पेपर है वो नेक्स्ट टीम मेंबर को दे दिया, फिर उसने उस आइडिया को डेवलप किया, फिर अगली को दे दिया। ये इस तरह के बहुत छोटे छोटे गेम्स ना हम लोग बचपन में भी खेला करते थे, बड़े होके भी खेलना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। हायर एजुकेशन में उसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें बहुत एक अच्छा रिजल्ट ये आता है कि जो पहला टीम है उसने जो सोल्यूशन निकाला होता है उसमें और एडिशन या उसमें और सब्सट्रैक्शन, उसके बाद अगली टीम में और एडिशन, बाद में जाके आपके पास इतना रिफाइंड रिजल्ट निकल के आता है कि वाकई में आप उस प्रॉब्लम के कई अच्छे सुझाव या कई उसको दूर करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके आप बता सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेडागोजी और इसको हम लोग हमारे सब्जेक्ट्स में तो बहुत सारा इस्तेमाल करते भी हैं। इसके बाद आती है कोलैबोरेटिव पेडागोजी, जिसमें ये सीधी सीधी बात है, ये इस बात को कहती है कि भाई कोई व्यक्ति अकेले नहीं सीख सकता, अकेले सीखने के लिए नहीं होती है। टीचिंग लर्निंग जो है वो हमेशा एक साथ बैठ के सीखा जाए, तब हम ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, कोलैबोरेटिव तरीके से हम सीख सकते हैं, ये सही भी है, इसमें कोई शक नहीं। तो जब हम सारे लोग एक साथ बैठ के अगर किसी चीज पे चिंतन करते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट अलग ही आता है। तो ये इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि आप एक स्टेशन बना लें या पोस्टर बना लें अलग अलग लोकेशन में, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए कहें, स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह आप जाने को बोले, और जब वो सब वहां देख के, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई जगह कोई देखने गए हैं, आप इस कहीं आप उनको किसी फेमस प्लेस पे भी ले जा सकते हो, किसी टॉपिक पे अगर कोई प्रदर्शनी लगी तो वहां भी ले जा सकते हो, ऐसा भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो मटेरियल उन्होंने देखा है उसके बाद उन्होंने आपसे आप क्वेश्चंस पूछने के लिए भी उनको लिखने को कह सकते हैं। इससे भी जो तरीका है ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे इसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद है इंटीग्रेटिव लर्निंग। इसमें इन्होंने ये बताया है कि कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड एक्सपीरियंस सो दैट द इंफॉर्मेशन एंड स्किल कैन बी अप्लाइड टू नोवेल एंड कॉम्प्लेक्स इशू और चैलेंजेस। अब ये फिर एग्जाम्पल से ही देख लें हम। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कम्युनिटी सर्विस, और बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है ये। कम्युनिटी सर्विसेज जो है वो हायर एजुकेशन लेवल पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी सर्विस जो है हायर एजुकेशन लेवल पे जरूर इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जो हमारा हायर एजुकेशन में ज्यादातर यूथ हमारा इन्वॉल्व होता है, जब तक उस चीज को खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हम उस इशू को समझ ही नहीं पाते। लॉ में तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जब तक अगर हम वहां जाए नहीं, उनसे मिले नहीं, हम लोग ओल्ड एज लोगों का लॉ पढ़ लेते हैं, मगर जब तक हम वहां जाए नहीं या एक आध हम विजिट नहीं करें और वहां जाके उनसे इंटरेक्ट नहीं करें, तब तक इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पेडागोजी है, और ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। रिफ्लेक्टिव पेडागोजी, ये जो पेडागोजी है इसमें डेफिनेटली आपने उसको, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो ये पेडागोजी आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया है, उससे हम देखते हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि आप कंजर्वेशन स्टेशन बना लें, और उसके बाद आप जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करें, एक लिस्ट ऑफ डिस्कशन क्वेश्चंस जो है वो दे दें, और उसके बाद आप उसका रीडिंग, वीडियो, केस स्टडी जो भी आपको लगे वो आप उनको दे दें। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को ग्रुप में डाल दें और उनको 5 से लेके 10 मिनट तक डिस्कशन करने दें, और उसके बाद आप उनको रोटेट कर दें। रोटेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो भी स्टूडेंट नया आया है उस ग्रुप में, वो अपनी लास्ट डिस्कशन की फाइंडिंग जो है वो शेयर करेगा और उनसे डिस्कस करेगा, और उसके बाद नए ग्रुप से जब वो करेगा उसके बाद वो बोल रहे हैं बिफोर आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन विद देयर न्यू ग्रुप। तो इससे क्या हुआ कि जो एक ग्रुप के सारे उन्होंने फाइंडिंग निकाली है वो दूसरे ग्रुप से शेयर होंगी, आपस में शेयरिंग होगी, और अल्टीमेटली इसके बाद फिर आपके पास एक बहुत अच्छा सजेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आएगा। तो ये भी कुछ तरीके हैं, ये सारे के सारे तरीके जो मैंने आपको बताया था ये मैंने इस वेबसाइट से लिए हैं। इसमें एक और है क्रिटिकल पेडागोजी। ये हम लोग हमारे सिलेबस में तो इस्तेमाल करते ही हैं, आप लोग भी डेफिनेटली इसको करते होंगे, और इसका फ्लिप्ड क्लासरूम कॉन्सेप्ट जो आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसा कि मुझे दिवांशु सर ने बताया था, ये सीधे सीधे उससे कनेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पेडागोजी है ये कितनी इंपॉर्टेंट है।
और इससे आप कैसे बच्चा जो है वो लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेडागोजी, इसको भी हम अपने सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नई है कल्चरल रिस्पॉन्सिव टेक्निक, ये अभी आजकल इस्तेमाल होती है। और इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें हम अपने जो हमारा जो फंडामेंटल कल्चर्स हैं उनके बारे में हम बात करें, उनसे टॉपिक्स जो हैं उनसे रिलेटेड उनके बारे में डिस्कशन करें, और उसमें आप अपना एक जो स्टूडेंट्स हैं उनका उनके कल्चरल सोशल उनका जो सोशल बैकग्राउंड है वो उसके कारण कुछ कुछ अपने एक सेट आंसर्स देते हैं। उनको जब आपस में डिस्कस करते हैं तो आप एक दूसरे से सीखेंगे, जानेंगे, नई चीजें जानेंगे। इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ जो चीजें हैं हमारे अभी फिलहाल कोविड-19 आने के बाद से बहुत सारी नई नई चीजें शुरू हो गई, जिसमें ऑनलाइन पेडागोजी का और ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया है। और एक चेंजिंग पेडागोजी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अब आजकल जब से अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हम बार बार अपनी पेडागोजीज को एक दूसरे से मिक्स करके, नहीं तो कोई नया तरीका निकाल के काफी तरह से चेंजेस इसमें ला रहे हैं। तो एक चेंजिंग पेडागोजी भी होती है। चेंजिंग पेडागोजी ऐसी भी हो सकती है कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आपके स्टूडेंट्स की, उसके हिसाब से अपने अपनी पेडागोजी चेंज कर ली। और ये जो मैंने एक लिखा है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये है कि आपकी अपनी खुद की एक पेडागोजी। ये जो हमारा रिसर्च आर्टिकल है, इसके अलावा भी और बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में सबसे अच्छा जो तरीका तैयार बताया गया है वो ये है कि ये सारी पेडागोजीज आपने पढ़ ली, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द मास्टर ऑफ योर क्लास। आपको देखना है कि आपके स्टूडेंट को सबसे अच्छा किस तरीके से समझ में आता है। तो आप अपनी खुद की एक पेडागोजी डेवलप कीजिए जो इन सारी पेडागोजीज का मिक्स भी हो सकती है। और आगे जाके आप देखेंगे कि वन ऑफ माय फेवरेट पेडागोजी इज आल्सो मिक्स्ड पेडागोजी, बिकॉज इट ऑलरेडी सबके लिए एक जैसी तकनीक काम नहीं कर सकती, एक जैसी पेडागोजी काम नहीं कर सकती। आपको रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अलग तरीके का सोच रखना पड़ता है, पीजी लेवल पे अलग रखना पड़ता है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अलग रखना पड़ता है। यहाँ तक कि मैंने बरकतुल्लाह से यहाँ आने के बाद एक और जो नई चीज एक्सपीरियंस की थी वो ये थी कि व्हेन आई केम हियर इन सागर, मुझे यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे जो कि तीनों कोर्स चलते हैं, हमारे यहाँ पे बीएलएलबी भी है, एलएलबी भी है और एलएलएम भी है, पीएचडी भी है। तो मुझे बीएलएलबी और एलएलबी के स्टूडेंट्स में भी अंतर नजर आता है। और मुझे ये फर्क पड़ता है कि मुझे कभी कभी उन दोनों के क्लास में अलग अलग पेडागोजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से सेम कॉन्सेप्ट सेम सब्जेक्ट जो मैं वहां भी ले रही हूँ, बीएलएलबी में भी ले रही हूँ और एलएलबी में भी ले रही हूँ, लेकिन जिसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट करना पड़ता है। कई बार मुझे बहुत चेंज करना पड़ता है। जहां मैं 12th से जो बच्चा आया है वहां पे जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मुझे स्टार्ट यहीं से करना पड़ता है, व्हाट इज लॉ, ठीक है। अब लेकिन कभी कभी ये काम मुझे एलएलबी लेवल पे भी करना पड़ता है, लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका मेरा काफी कुछ डिफरेंट हो सकता है। उसमें मुझे सहारा मिल जाता है उनके बैकग्राउंड का, कि वो कॉमर्स से आया है एलएलबी करने, या साइंस बैकग्राउंड से एलएलबी करने आया है, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एलएलबी करने आया है। तो बहुत सारी ऐसी तरीके होते हैं जो आप अपनी क्लास में खुद भी डेवलप करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपकी खुद की डेवलप की हुई पेडागोजी है वो एक बहुत अच्छा माध्यम होगी, और वो एक वन ऑफ द बेस्ट पेडागोजी है। इस वाले लेक्चर में एक जो मुझे की पेडागोजी समझ में आई है ना, मे बी सम ऑफ अस वी कैन आर्ग्यू ऑन दिस कि ये तो कोई पेडागोजी ही नहीं होती, ये कौन सी पेडागोजी होती है, एडहॉक बेस्ड पेडागोजी। बट यू नो इट इज, अभी हमारा जो समय है ये चेंज का समय है। अभी जो हमारा नया जो शिक्षा शास्त्र है, ये जो हमारा नया पूरा फिलॉसफी डेवलप हो रहा है, इसमें हमारे पास बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी हमारी ये जरूरत है एक्सपेरिमेंट करना। हम अपनी जो हमारी पुरानी पेडागोजीज है उनके सहारे बहुत ज्यादा आगे नहीं चल पाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ नई नई पेडागोजीज डेवलप करते जाना है। तो बहुत अच्छा तरीका इन्होंने इसमें बताया है, और उन्होंने कहा है कि आप एडहॉक बेस्ड पेडागोजी इस्तेमाल करें। आप आपने कोई नई बनाई हुई हो या इनका कोई आपने मिक्स बनाया हो, उसको आप एक दो ग्रुप्स पर उसको आप ट्राई करके देखें, उसका रिजल्ट देखें। जब आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में एक रिजल्ट ओरिएंटेड पेडागोजी है, जिसमें आपके बच्चों ने स्टूडेंट्स ने, चाहे वो हायर एजुकेशन के हो, चाहे पीजी के हो, चाहे रिसर्च के हो, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को लिया और उन्होंने उसमें बहुत सारे नई नई चीजें ना केवल उसको समझ पा रहे हैं बल्कि उसको एनालाइज भी कर पा रहे हैं, क्रिटिकली भी एनालाइज कर पा रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस भी किया उन्होंने। अब वो नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, खुद से चीजें कर रहे हैं। तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि आप किसी पेडागोजी पे पकड़ के ना चलें, आप कोई नई पेडागोजीज इस्तेमाल करें और एडहॉक बेस्ड पेडागोजीज पे फोकस करें इस समय। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा जरूर आपको बताना चाहिए कि वी शुड ट्राई समथिंग न्यू, we should try some kind of ad hoc pedagogy. We should not think कि हमारी pedagogy अच्छी नहीं निकलेगी, फेल हो जाएगी, कोई बात नहीं, होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप इस्तेमाल करके देखिए ad hoc बेस्ड पे। और अभी तो थोड़े दिन पहले मैंने भी एक रिफ्रेशर किया था, अनीता मैम को याद होगा। तो आजकल तो लोग कहीं से कहाँ से एक नई पेडागोजी सोच लेते हैं और उसको उन्होंने डेवलप किया
और डेवलप करने के बाद उसके इतने अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए कि अब पूरा विश्व उसके बारे में बात कर रहा है। ऐसे कुछ हमारे पास स्पीकर्स भी थे। तो ये एक बहुत, आप कोशिश तो करके देखिए, हो सकती है जो हमारी पेडागोजी हो वो बाकी सबके, और देखिए आपकी पेडागोजी पूरे 100% हायर एजुकेशन को सूट करे, हर सब्जेक्ट को सूट करे, हर स्टूडेंट को सूट करे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी पेडागोजी, आप जिस उसको टारगेट ग्रुप को लेके चल रहे हैं, जो आपके स्टेक होल्डर हैं, उनके लिए हो सकता है वो सबसे सटीक पेडागोजी साबित हो। तो एक बार हमको उसको ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तो हिस्ट्री पढ़ना ही चाहिए, और थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी कि कहाँ से ये नया डेवलप हुआ था कि हायर एजुकेशन में भी पेडागोजी होना चाहिए, हायर एजुकेशन में भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के बारे में तो बहुत पहले से बात हो रही है, तो काफी पुराना है, ये भी कोई नया नहीं है। जब हम ये कांट और हीगल हम लोग भी पढ़ते हैं, हमारे जूरिस्ट हैं, सारे के सारे फिलोसोफर्स हैं बेसिकली, तो आप लोग लगभग हर सब्जेक्ट के लोग इनको जानते ही हैं, तो इनकी हमने राइटिंग्स कहीं ना कहीं पढ़ी हैं। तो इन्होंने जरूर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, और इन्होंने एक नया तरीका, एक्चुअली ये जो इनका सीधे सीधे तात्पर्य है, हम इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने सबने ये जूरिस्ट कहीं ना कहीं फिलोसोफर्स पढ़े हुए होते हैं। इन्होंने एक्चुअली जो कुछ चल रहा था इनके यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था एजुकेशन में, उससे हटके इन्होंने बाहर देखा उसको। तो डेफिनेटली इन्होंने एक नया आइडिया डेवलप किया, और इस तरीके से इन्होंने एक नए पेडागोजी को जन्म दिया। और या उन्होंने एक आइडिया जो दिया है, उससे हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं हम इसको बैकग्राउंड के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इन्होंने ये बोला, जैसे हीगल है, कांट है, इन्होंने ये कहा है कि नहीं, जिस सब्जेक्ट का आप केवल पढ़ रहे हो, केवल उसी के बारे में आप जाने, उसी के अंदर रहें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके अंदर, जो आपका ह्यूमन नेचर है, जो आपका एप्टीट्यूड है, उसको डेवलप कर पाए। और ये तो आप अपने सब्जेक्ट में, अगर हम अपने आप को वाटर टाइम कंपार्टमेंट में अपने सब्जेक्ट में डाल देंगे, तो ये तो संभव है ही नहीं। तो ये लगभग 1724 से आप देख सकते हैं, इस तरह का जो सोच है वो डेवलप हुआ था कि देयर हैज टू बी न्यू एंड इनोवेटिव और सम काइंड ऑफ डिफरेंट पेडागोजी इन एजुकेशन। इसके बाद ये प्लेटो की अकेडमी, प्लेटो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर हैं, और इन्होंने भी इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे आइडियाज किए। उनके थॉट्स तो हम सब पढ़ते ही हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, लॉ में पढ़ते हैं। फिर इनका नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगी, ये इनकी अभी न्यूमैन, इनकी राइटिंग्स आपको बहुत आराम से अवेलेबल हो जाएंगी। इनफैक्ट जो मैंने ये दिया है आपको नीचे फुटनोट में, जो आपको वेबसाइट डाला हुआ है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। हाँ जी, somebody is asking something, किसी ने No, आगे ma'am, बढ़ो। please. ओके, सो न्यूमैन की राइटिंग्स को हम देख लेंगे, और न्यूमैन की राइटिंग्स में आप देख सकते हैं, ये स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन से जो लोग यहाँ पे हैं वो तो डेफिनेटली इनके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगी उस एरिया में जाने की। तो इन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन खास तौर से इसलिए इनको मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बाकी सबको तो आप हर तरह की पेडागोजी से कनेक्ट कर सकते हैं, मगर हायर एजुकेशन के लिए न्यूमैन के बिना काम नहीं चलेगा। और इन्होंने ये साफ बोला है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का तो मतलब ये होता है कि आप फिलोसॉफिकल जो माइंड का जो फिलोसॉफिकल हैबिट है, उसके बारे में हम बात करें। इन्होंने सीधे सीधे आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसमें इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इन्होंने मतलब जो मैंने अभी आपको बताया ना कि लेक्चर, हम बोलते हैं लेक्चर मत दो, वो लेक्चर वाली बात ही नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि अगर बच्चे साथ बैठ के खाना खाते हैं, साथ बैठ के खेलते हैं, वो भी अपने आप में एक लेक्चर है, क्योंकि उससे भी वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। और इस पेडागोजी तक को इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पेडागोजी माना है। तो ये जो हम आजकल नई चीजें देखते हैं, गेम बेस्ड टीचिंग, Anu, ma'am? शुड आई कंटिन्यू? Yes, ma'am, please. राइट, और बस ये इनका नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगी, बाकी सब हिस्ट्री है, ये आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल होगा, इसमें आप देख लें। अब हम आते हैं जो हमारा टॉपिक है कि 21st सेंचुरी में किस तरह की चाहिए। ये सारी वो चीजें जिनसे आप सब ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अभी आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड की बात की जाती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मोड है, इसमें कोई शक नहीं। अब सारा कुछ ऑनलाइन नहीं है, सब कुछ ऑफलाइन वापस शुरू हो गया, लेकिन हम ऑनलाइन से अब नहीं बच पाएंगे आगे कभी भी। अब तो ऑनलाइन हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा ओपन लर्निंग की बहुत अच्छी बात हो गई है, स्वयं का प्लेटफॉर्म है, सीईसी है, बहुत सारे मूक्स डेवलप करता है, आईसीटी बेस्ड लर्निंग जो है, ये सब हमारी नई पेडागोजी का हिस्सा बन गया है। ये सब तो हम आजकल फेमिलियर हैं इससे, और हम सब पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में है, तो इन सबसे तो हमें अब रोज देखना, रोज हमारा संबंध होता है इनसे। तो ये आप देख सकते हैं
ये नॉजिस और रेंडल ने भी ये बात कही है कि हायर एजुकेशन में जब जो ट्रेंड है वो ब्लेंडेड लर्निंग का ट्रेंड है, तो ये कुछ नहीं, वही जो बातें मैंने आपसे कही थी अल्टीमेटली उसको रीअफर्म करने के लिए, मेरे कहने से तो भाई नहीं मानेंगे, तो ये सारे लोगों ने उस बात को रीअफर्म किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट तरीका होगा। और अब आपको ब्लेंडेड मिक्स्ड अपनी आवश्यकता अनुसार पेडागोजीज को डेवलप करना, यही हमारे पास एक तरीका रह गया। ये मैंने एक छोटा सा पिक्चर विकिपीडिया से लिया था, विकिपीडिया में मेंशन करना भूल गई, बट यस इसमें आप देख सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है ये। और जब इस तरीके से उस जमाने में अगर हम पढ़ सकते थे, तो फिर अभी तो हम डेफिनेटली 21st सेंचुरी में ये उम्मीद कर ही सकते हैं कि इस तरह से पढ़ाया जाएगा। सो ये है हिस्ट्री हो गई इसकी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ डॉक्टर इनामदार, यस, Dr. Nanda sir, we request you to please mute yourself. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आगे वाले स्लाइड्स में उसका जवाब भी मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, फिर लास्ट में तो करेंगी। तो ये जो है अब हमने पढ़ लिया, अब तक हमने इतना थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, हालांकि आप लोग ऑलरेडी पहले भी सुन चुके हैं सारी चीजें, क्या क्या पेडागोजीज थी, आपको कौन सी सूट करेगी, क्या क्या है, ये सब की सारी बातें लगभग हो गई। ये 7 नोशंस हैं, इन्होंने अलग अलग बताए थे कि ये जो पेडागोजीज अभी हमने पढ़ी, इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इनको वर्किंग में लाएंगे, तो कैसे हम उसका कंसेप्शन करेंगे। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत रिसर्च आर्टिकल मुझे रिसर्च गेट पे भी ही मिला था, और आगे आपको स्लाइड्स में उनका नाम भी मेंशन मिल जाएगा। इन्होंने ये 7 नोशंस बताए हैं, और मुझे ये नोशंस बहुत अच्छे लगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में उसको एक्सप्लेन किया था, तो मतलब मैं एजुकेशन से जुड़ी जरूर हूँ, लेकिन मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ये हर चीज इतनी अट्रैक्ट की और इतना जल्दी से समझ में आ गई, क्योंकि उन्होंने सारे एग्जाम्पल्स देके उस बात को समझाया है। तो मैंने सोचा कि उसको हम अपने इसमें शामिल करें, और कम से कम हम वो 7 नोशंस यहाँ पे डिस्कस करें। 7 से कम भी हो सकते हैं, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर आप दूसरा पेपर पढ़ेंगे तो हम उस बहस में नहीं पढ़ के हम देखें कौन से अच्छे अच्छे नोशंस हमको नजर आ रहे हैं, जिससे हम ये जो पेडागोजिकल इनोवेशंस हैं, इनको हम अपनी टीचिंग में उसको कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें से एक पहला है नोवेलिटी। अब नोवेलिटी तो हम सारे लोग जानते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय नोवेलिटी। वी मीन नोवेलिटी इन सम अदर सेंस, इन लॉ, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बट यस वी ऑल नो कि कुछ नया होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो पहले से नहीं पता हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो पुराना तरीका है, बच्चा सो गया पढ़ते पढ़ते, ऐसे बड़े स्टूडेंट भी सो जाते हैं, मतलब हायर एजुकेशन में भी ऐसा होता है ऐसा। लेकिन तो ये पिक्चर जरूर मुझे ऐसी मिली है, लेकिन यू कैन रिलेट इट टू हायर एजुकेशन ऑल्सो। तो उसके अगर आपने कोई नई तरीके से उस चीज को बताया, हमारे यहाँ पे लॉ में हम लोग करते हैं, विजिट्स करवाते हैं। आप किसी कहीं कोर्ट ले जाएंगे स्टूडेंट्स को, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, यहाँ के सेशन कोर्ट ले जाएंगे, किसी एनजीओ में ले जाइए, ह्यूमन राइट कमीशन ले जाइए, आप बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट में भी आप करते होंगे। तो क्या होगा, सबसे अच्छी चीज होती है कि स्टूडेंट सरप्राइज होता है, और जब स्टूडेंट सरप्राइज होगा तो वो उसका इंटरेस्ट अपने आप जगेगा उस चीज के बारे में पढ़ने के लिए, उसको कहीं ना कहीं उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये एक जो नोशन है उसको, इसमें कई सारी सब थीम्स भी इन्होंने इसमें बताई गई थी, उसमें से ये सब थीम मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये रिसर्च पेपर आप खोल के देखेंगे तो उन्होंने बकायदा पूरा चार्ट बनाया, पूरा टेबल है, बट सिंस द चार्ट आई डिड नॉट हैव राइट्स टू, मुझे लगा नहीं कि वो चार्ट एकदम दिखाना पड़ेगा, वो तो उनकी उसका जिस्ट था पूरा, मगर ये सार उसका यही है। तो ये बहुत अच्छे उन्होंने बताया कि नोवेलिटी किस चीज को आप मानेंगे, उस चीज को हम माने जिस, कोई ऐसी चीज कर दीजिए, आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए, कोई ऐसी चीज उसके सामने प्रस्तुत कर दीजिए जिससे बच्चा एकदम, बच्चा मतलब बड़ा बच्चा भी, हमारे डिपार्टमेंट का भी, वो सरप्राइज हो जाए एकदम से, और उसको लगे कि ये जो तरीका है ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बताया इन्होंने, ये चीज ये तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं क्लास में, ऐसे तो नहीं हमने पढ़ा था इस टॉपिक को पहले। तो थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप इसे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, एक कल मैं टेड टॉक्स में एक लेक्चर भी देख रही थी, 2-3 दिन पहले देखा मैंने उसको, तो उन्होंने एक बकायदा एक डायग्राम बनाया और उन्होंने समझाया है कि सारी चीजें एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। आप इस चीज को, नोवेलिटी को अपने किसी कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के उतना हिस्सा उसका, अब आपको उसे कितना कैरी आउट करना है, कितना देर तक उसको कंटिन्यू करना है, ये आपको डिसाइड करना है। और ये बहुत अच्छा तरीका है, लॉ में आजकल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा ये कीवर्ड दिया है जो मैंने रेड करके रखा हुआ है, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। तो जैसे हम लोग कुछ बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, और उस लैंडमार्क जजमेंट्स में हमको मालूम है कि जो सेटल्ड लॉ है
वो ऑलरेडी बहुत डिस्कस होने के बाद डिस्कस आया है, और अब उसके अगेंस्ट में बातें मतलब मिल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम एज अ लॉ स्टूडेंट जरूर हमको ये सिखाया गया था कि भाई जो गोलकनाथ में कहा गया है, आप गोलकनाथ को पढ़े बिना केशवानंद भारती का केस समझ नहीं सकते। इस तरह की चीजें हम आप लोगों के भी सब्जेक्ट्स में सब चीजों में होती है, तो कहीं ना कहीं हमको उसके अगेंस्ट वाला व्यू जरूर पढ़ना है। और अगर एक जो आपका जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं वो बहुत डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट भी है, तो भी आप उसके विपरीत वाली बात जरूर सुने। ये हमारे यहाँ तो हम लोग इसको बहुत प्रैक्टिस में लेते हैं, हमेशा एक पक्ष को तो सुनना ही नहीं होता, हमको दूसरा पक्ष तो देखना ही होता है। ये चीज हर सब्जेक्ट में की जा सकती है, और उसको आप उससे आप अपने नोशन ऑफ नोबेलिटी को आगे कैरी आउट कर सकते हैं। इन्होंने भी एक तरीका बताया है। नोशन ऑफ नोबेलिटी केवल आप पढ़ाते समय नहीं, एग्जाम में भी कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे आपने स्टूडेंट को, हमारे यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी इनफैक्ट हो चुका है ये, कि जिस क्वेश्चन को हम फुल में तैयार करके जाते हैं उसको टीचर बोल देता है कि अब इसको 5 नंबर में लिख दो। तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है इस चीज को करना, कि इतना हम तैयार करके आए थे 12-15 नंबर का, अब हम कैसे लिखें उसको 4 लाइन में। बट दिस इज व्हाट इज सरप्राइजिंग। और थोड़ा भी अगर कोई व्यक्ति शांत दिमाग से लिखता है तो हम लिख पाते हैं। इस तरह की चीजें अगर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ करेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उनको सिखाएंगे जिसके पहले उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो ये एक तरीका होता है। देखिए इसमें उन्होंने, प्रोफेसर ने क्या कहा कि आप अपना पूरा जो एग्जाम है उसको आप ऐसा लिखिए जैसे आप ट्वीट लिख रहे हो। अभी आजकल यही चल रहा है, तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप बता सकते हैं। ये एक चीज हमारे यहाँ तो हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ तो हम लोग बहुत बहुत लंबी लंबी जजमेंट्स को 4 लाइन में लिख देते हैं। ये हैबिट हम लोगों को करवाई जाती है प्रैक्टिस, तो इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। द नोशन ऑफ चेंज। तो ये जो नोशन ऑफ चेंज है, इसकी कई सारी सब थीम्स है, मतलब इसको आगे बढ़ाती है, कैरी आउट करती है इस थीम को, चेंज की। तो चेंज करना, अडेप्ट करना, लीडरशिप डेवलप करना, है ना, टेम्परेरी एंड अनलिमिटेड, किस तरीके का भी हो। सबसे अच्छा हम सीधे एग्जाम्पल पे जाएं। हम इसको डिस्कशन इसमें ऑलरेडी है, और डिस्कशन आपके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहीं हुआ होगा। ये बहुत अच्छा है। इसमें हम देखते हैं कैसे the professor interviewed used the notion of change to explain the introduction of a change in their teaching. The change takes different form. हाँ, मतलब ये कह ही रहे हैं कि कई के तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। आप चेंज करने का मतलब क्या है? यही जो हमने अभी पेडागोजी इस्तेमाल की थी, इसमें से आप कई तरीके से उन पेडागोजीज को चेंज कर सकते हो। अब जैसे इन्होंने बोला कि भाई मैं एक पेडागोजी इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें मैंने कोई स्किल बेस्ड अप्रोच लगा दी, या उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किसी ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच से, या जैसे कि अभी तक हम सामने सामने कर रहे थे, हमने उसका थोड़ा एक नई पेडागोजी लगा के उसमें कुछ हाइब्रिड मेथड लगा दिया। तो इससे क्या होगा, आप अपनी पुरानी पेडागोजी को चेंज करते हैं। तो ये भी एक किसी भी नई पेडागोजी को कंसेप्चुलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। इसके बाद आता है द नोशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तरीके से देख सकते हैं। तो इन्होंने इसको बोला है कि पेडागोजिकल, कोई कुछ पूछ रहा है सर? should I? No, ma'am. Okay, Ma'am, fine. please. So right. So इन्होंने देखिए एक बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और कोई ऑडियो विजुअल क्लिप आपने स्टूडेंट्स को दे दी हो पहले से, जैसे आप, ये तो खैर कई बार होता है अब आजकल। जैसे हमने ऑनलाइन, पिछले कोविड में हमने ऑनलाइन लेक्चर लिया। ऑनलाइन लेक्चर में डेफिनेटली शुरू शुरू में हमारे मन में ये कभी नहीं आता था कि हम जो चाहते हैं वो हम स्टूडेंट को दे पाए। हमें ऐसा कमी सी लगती है कि ये मैंने बहुत अच्छा नहीं बताया, ये मेरे को अभी और बच्चे को एक्सप्लेन करना था। तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है, वो मेरे सामने होता है तो मुझे तुरंत फीडबैक मिलता है, मुझे उसके चेहरे से समझ में आता है कि उसको चीज समझ में आई है कि नहीं आई है। तो मैं अपनी पेडागोजी वहीं पे थोड़ी सी ट्विस्ट कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, उसमें कोई DIY लगा सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे जैसे तब मैंने कोविड के समय किया था, अभी भी आप इसे कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स मूक्स पे हैं, स्वयं पे हैं, कई बार यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है। आप उसको कोई ऑडियो विजुअल क्लिप भेज दीजिए, उससे जो है आपकी कंसेप्चुलाइज होगी जो पेडागोजी आपने सोची, और आपको आपके मनचाहे रिजल्ट उससे मिल जाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए हम नोशन ऑफ एप्लीकेशन। अब नोशन ऑफ एप्लीकेशन में है कि इन्होंने ये बताया है कि इसकी जो सब थीम्स है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो इन्होंने देखिए, अब ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे लिए भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ऐसी हो गई है हमारे साथ, क्योंकि अब हर चीज हम टेक्नोलॉजी के सहारे से करते हैं। अब होता क्या है, खासतौर से मेरे साथ यहाँ पे जो मुझे फेस करना पड़ा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एकदम गाँव से आते हैं।
और आसपास का हमारा, चूंकि इट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम बहुत बड़ा एक इलाका कवर करते हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर सागर के भी कई बार बच्चे नहीं होते, कहीं दूर से, बंडा से, सुर्खी से, और भी आगे दमोह के भी आगे से, या छतरपुर के भी किसी गांव से कहीं से कोई बच्चा आया है। तो जब मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा ऑनलाइन जुड़ना है, तो पहली बात तो उसके लिए ऑनलाइन जुड़ना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके पास इंटरनेट रहेगा कि नहीं रहेगा, मोबाइल रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर उसको करना आएगा कि नहीं आएगा। ये चीज केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आप खुद, मेरे भी जब मैंने शुरू में शुरू किया था, तो यहाँ पे कई मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, कई मेरे साथी भी है, वो जानते हैं शुरू में मुझसे ही नहीं बनता था, फिर आपको कहना पड़ता था मैडम ये बटन जरा दबाइए तो आपका हो जाएगा, आप जुड़ जाओगे। अभी भी कई बार ऐसा होता है। तो जो नोशन ऑफ एप्लीकेशन है वो हमको यही बताता है कि कभी भी अगर हम कोई ऐसी कोई पेडागोजी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम ऐसा कोई टेक्निकल एसेट को यूज करने वाले हैं, हम कोई तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हमको बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम उसकी पहले थोड़ी सी उसकी ट्रेनिंग दें और हम उनको बताएं कि उसको किस तरीके से यूज करना है। पहले हम उसको मास्टर कर लें, हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही हमारी जो पेडागोजी है वो हमें एक सक्सेसफुल तरीके से, या हम उसमें कुछ इस तरह का अगर कोई टेक्निकल इनोवेशन ला रहे हैं तो पहला से हमसे उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो ये एक नोशन ऑफ एप्लीकेशन इसको बताता है, और ये तो हम लोगों ने आजकल सभी लोगों ने इसको यूज भी किया है। और ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें जो हमारे पास कंट्रोल नहीं होता उसका, देखिए वो कह रहे हैं हमारे पास उसका स्कूल का ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप से मतलब यहाँ पे वो नहीं है, स्वामित्व वाली बात नहीं है, बात ये कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। अब आप सभी लोगों ने इसको अपने डेली लाइफ में देखा होगा, बिल्कुल शर्तिया ये बात मैं कह सकती हूँ। हायर एजुकेशन में भी देखा होगा, और नहीं तो स्कूल एजुकेशन में तो देखा ही होगा। बच्चे आजकल बायजूस, वेदांतु, इन सब के बिना नहीं पढ़ते हैं, ये सब चीजें पढ़ना साथ साथ में हो ही रही है। और जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड है वो जानते होंगे कि बच्चों को और क्लास सुनने में मजा आए ना आए, लेकिन लास्ट में जब वो आंसर क्लिक कर रहे होते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है कि मेरा पहले क्लिक हो गया कि नहीं हो गया, मेरा क्लिक हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम जो है, ये फीडबैक के लिए तो बहुत जरूरी है ही। उसी तो आप समझेंगे कि आगे उसने लेक्चर में क्या सुना। हायर एजुकेशन में भी ऐसा ही होता है। हम लोग जब कोई चीज करते हैं, हमने एक छोटी सी क्विज तैयार कर दी या गूगल फॉर्म तैयार कर दिया, उसके बच्चे को बोला कि अब आप इसे तुरंत भर के भेजिए, तो जब तक वो इस चीज को जानेगा नहीं, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये चीज करना। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से उसको कंसेप्चुअलाइज करने के पहले टेक्निकल जो हमारी ट्रेनिंग है, डिफिकल्टीज हैं, उनको सबको हमको मीट आउट करना चाहिए। उसके बाद है नोशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ये जो नोशन ऑफ इम्प्रूवमेंट है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम लोग अपनी पेडागोजीज में तो बहुत अच्छे भी होते हैं, कई बार उसको प्रैक्टिस करते करते उसमें इनोवेशन भी करने लग जाते हैं, लेकिन हम ये कल्पना नहीं कर पाते कि एक दूसरे विषय का टीचर आके मेरी क्लास में अगर बोलेगा तो मेरे बच्चे को या मेरे स्टूडेंट को, मेरे रिसर्च स्कॉलर को कुछ नया सीखने को मिलेगा। समटाइम वी ट्राई टू कन्फाइन आवरसेल्व्स टू आवर, जैसे ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, हमने भी किया होगा। हम अपने लॉ के रिसर्चर को नहीं भेजेंगे फार्मेसी डिपार्टमेंट, हम उसको नहीं भेजते एजुकेशन डिपार्टमेंट, या उसको कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं भेजेंगे। यहीं पे बैठा, यहीं पे उसने अपना सब कवर अप कर लिया, हो गया। ज्यादा से ज्यादा अगर उसको एम्पेरिकल रिसर्च करनी है, उसको एसपीएससी की जरूरत पड़ गई, या अभी उसको नया कोई जो वो है तरीके, उसका कोई जरूरत पड़ गई, तो उतना सहारा हमने ले लिया बस। लेकिन इसमें हम इम्प्रूवमेंट तभी कर पाएंगे, ये बिल्कुल आपको एनकरेज करता है इस चीज के लिए कि आप दूसरे फील्ड के एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व रखें। रोज तो करना नहीं है हमें ये बात, हमें ये कभी ना कभी जब हमें जरूरत पड़ रही है तब, जब कुछ आपका कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है तब। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोशन है, जिसको हम कहते हैं द नोशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ये एग्जाम्पल इसमें यही दिया हुआ था जो मैंने आपको बताया अभी। So this is done. ये आप देख सकते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं इंटरडिसिप्लिन लर्निंग के, वो आप इसी के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे, नोशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो द नोशन ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस पेडागोजी, ये अब तो खैर इतना नहीं है, लेकिन शुरू में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब सब कुछ ऑनलाइन शुरू हुआ था, और खासतौर से जब हमारे मूक्स और आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म सब शुरू हुए थे। बीच में लोग कहने लग गए थे कि थोड़े दिनों में टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सारा कुछ जो है वो यूट्यूब पे हो जाएगा, या मूक पे हो जाएगा, या ऑनलाइन हो जाएगा, है ना, इस तरीके का। प्लस जो हमारा जो टीचर है वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में, उसको अडेप्ट करने में उसको घबराहट भी हो रही है कि भाई ये जो मेरी पेडागोजी है पुरानी, उससे तो ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रही, और मैं इस पेडागोजी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप अपने साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, मैं अपने साथ तो डेफिनेटली कर सकती हूँ। शुरू में मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत डर लगता था, अभी भी बहुत अच्छा नहीं बनता, बट अब बन जाता है थोड़ा बहुत। तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब हम इसको करने लगेंगे तो हमको ये देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये आर टीचर्स अफ्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पे पूरा लेक्चर है, इसे पूरे रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं, वहीं से मैंने ये बस फोटो उठे लिया है बस। तो ये वाकई में एक चिंता का विषय है
था। और जब भी हम किसी भी पेडागोजी को हमको अगर कंसेप्चुलाइज करना है तो हमें इस चीज को जरूर ध्यान रखना है कि हम पहले धीरे धीरे उस अपने मन से डर निकालें। उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के पहले हम पहले उसको एक्सपेरिमेंट करें। जैसे कि जस्ट छोटा सा एग्जांपल दूंगी अगर टाइम नहीं खर्च हो, कि भाई शुरू में मुझे जैसे ये दिक्कत होती थी शेयर कैसे करें, तो हमने घर पे करके देख लिया। मैं अपने किसी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होकर देख लेती हूँ। और अभी भी मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ रोज सीखती हूँ, मुझे भी सारा कुछ नहीं आ पाता, पर हाँ मैं डरूंगी नहीं इससे, क्योंकि मुझे अपनी किसी भी पेडागोजी को आगे एनईपी के हिसाब से इंप्लीमेंट करने के लिए इसके बिना मेरा काम नहीं चलना है। तो मुझे ये सारी चीजें साथ में लेके चलना चाहिए। अब चाहे आप इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जोड़ लें, चाहे अभी जो मैं आगे आपको कुछ बताने वाली हूँ, कुछ एप्स भी हैं, कुछ वेबसाइट्स भी हैं, वो सब भी जब हमारे आगे वाले उसमें आएंगी। कुछ नए नए हैं, आप उससे डरे नहीं, आप उसको एक बार यूज करके देखें। बहुत अच्छे नई नई तकनीक आ गई है, बहुत अच्छी नई नई पेडागोजीज आ गई है। सो दिस इज डन। ऐसे ही ये जो है द नोशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोशन है। और वो ये कि अल्टीमेटली ना हम सभी चीजें किसके लिए कर रहे हैं? हम इसमें से कुछ चीजें जो है वो अल्टीमेटली अपने स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। और वही तो हमारे कहना चाहिए अल्टीमेट स्टेक होल्डर्स, बेनिफिशियरी तो वही है। तो ये जो नोशन है ये इस बात की डिमांड करता है कि आप कभी भी अगर कोई इस तरह की इनोवेटिव पेडागोजी अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं, तो जो उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी आप यहाँ पे जरूर लें। उसको तैयार करते समय भी लें, चाहे वो लें जो थोड़े सीनियर हो गए हों, है ना, आप अपने रिसर्च स्कॉलर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, और लेकिन अल्टीमेटली उनकी भी जरूर लें जो अल्टीमेटली उससे बेनिफिट होने वाले हैं। तो ये एक उसको एक ह्यूमन टच देता है। और ये आप देख सकते हैं, देखिए सब लोग मिलके इस तरीके से काम करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ये बन रहा है। इस तरीके से हमारी एक बहुत अच्छी पेडागोजी भी बन जाएगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो ये मैंने एक डाल दिया था इसलिए ताकि आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं भाई कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सी अट्रैक्ट करती है। मुझे ना थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट वाली भी बहुत करती है, ये इसमें मुझे बहुत सहारा मिलता है आजकल। आजकल मुझे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मेरे डिफरेंट डिपार्टमेंट से हो गए हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। और खासतौर से जब मुझे यहाँ पे आके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिला था, तो मुझे यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट से बहुत हेल्प मिला। वो इसलिए बता रही हूँ आपको स्पेशली क्योंकि हम लोग जब आईपीआर पढ़ते हैं तो वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ कीपिंग आवरसेल्व्स टू द बैरक बुक्स एंड दिस, वो एक्चुअल में वो फॉर्म भरना, एक्चुअल में कैसे क्लेम तैयार होगा। तो हमारी आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस कि हमारे यूनिवर्सिटी को कुछ पेटेंट भी मिले हुए हैं ऑलरेडी, और हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास खुद के पेटेंट्स हैं। तो उन्होंने खुद अप्लाई करके जब वो पेटेंट लिया है, और जब मैं वहां जाके उनके साथ डिस्कस करती हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट को एक बिल्कुल डिफरेंट विजन मिलता है। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल हम कर सकते हैं, और आप भी इनमें से जिससे अपने आप को रिलेट कर पाए उस तरह की पेडागोजी इस्तेमाल करें और उस तरह का नोशन कंसेप्चुलाइज करें। काँग्रेस आहे काय आमदार काँग्रेस आहे काय मग ते उत्पन्न टाकायला पाहिजे जी काँग्रेसचं बी ते झालं की मग दुसऱ्या पिकाला पैसे Right. Okay, so I'm continuing, okay. अब ये जो हमारी स्लाइड है, ये आपको बता रही है कि जो कुछ अभी मैंने आपको डिस्कस किया, तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्यों डिमांड किया गया है, कैसे डिमांड किया गया है, क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो ये स्लाइड मैंने केवल कनेक्शन के लिए इसमें इंक्लूड किया हुआ था, जबकि मैं ऑलरेडी ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। तो ये हमारे हायर एजुकेशन के लिए जो एनईपी के कहना चाहिए लक्ष्य हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़े हुए होंगे आप लोगों ने सबने, ये तो भी चल ही रहा है डिस्कशन इस पे, तो इसको आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह की पेडागोजीज की जरूरत अब हमें पढ़ने वाली है अपने सब्जेक्ट में, और जिससे हम ये सारे के सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने केवल इसलिए दिखाया था आपको कि जस्ट फॉर दी ब्रशिंग अप ऑफ अगेन की जो चीजें हैं। और एनईपी के जब हमारे एनईपी पे हमको जो चीजें करनी है, अच्छा चैलेंजेस भी चूंकि मेरे टॉपिक का हिस्सा है, तो वो चैलेंजेस भी मैंने इसी के द्वारा आपको बताया है कि आप ये जो पेडागोजीज आपने पढ़ी हैं, अभी हमने डिस्कस की, इसके अलावा आप नई भी डेवलप कर सकते हैं। तो चैलेंजेस तो हमारे सामने बहुत सारे आने वाले हैं। ये सारे चैलेंजेस ऑलरेडी एनईपी रिकॉग्नाइज कर चुकी है। ये चैलेंजेस डेफिनेटली हमारे पास 1 और 2 और मोर हमारे अपने यूनिवर्सिटीज में, हमारे अपने उसमें होंगे ही। तो ये सारे चैलेंजेस को हमको फेस करने ही है ना। हमारे पास जो है वो
कैसा सिस्टम है हमारे पास, इकोसिस्टम, वो आप सब बेहतर जानते हैं, हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। उसके अलावा जो है हमारे पास अब हालांकि चेंज हो रहा है, अभी आप सब देख रहे होंगे जब हमारे यहाँ नेट की तैयारी चल रही है तो हम सब लोगों को लर्निंग आउटकम बेस्ड फिर से पूरा सब कुछ तैयारी करना पड़ रहा है, तो ये सब कुछ हम इसी के हिसाब से कर रहे हैं। सो वी आर अंडर द प्रोसेस। इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस चीज को फेस कर रहे हैं ना, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। हम अभी इस समय में है कि हमको एक पूरे नए शास्त्र की जरूरत है और उसमें हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस तो हमारे सामने हैं जिनको हमको अपनी पेडागोजी से मीट आउट करना होगा, है ना। टीचर्स कम है और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी भी कम होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो अब देखते हैं क्या क्या हायर एजुकेशन के लिए, हाँ, तो न्यू एज टीचिंग मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। और कैसे, जो चैलेंजेस बता दिए तो सॉल्यूशन भी तो बताने पड़ेंगे ना मुझे आपको। तो हम सबको पता भी है सारे सॉल्यूशंस, चैलेंजेस भी एक बार और इसमें कुछ टच होंगे, तो हम उसको एक बार बस ब्रश अप कर लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या और चीजें इसमें हो सकती हैं। इसके बाद हमारा ये एरिया खत्म हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था, जो कंसेप्ट का पोर्शन था। फिर हम सीधे प्रैक्टिकल सिचुएशन पे इसके जाएंगे और थोड़ी सी कुछ चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये आजकल जो है वो हमारे पढ़ने पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो गया है डेफिनेटली। तो हमें इसलिए बहुत सारी नई पैडागोजीज की और नए टीचिंग मेथड की जरूरत है। और डेफिनेटली हम लोग सब बहुत वेल ट्रेन तो नहीं है इसके लिए, हम लोग खुद ही ट्राई एंड एरर कर करके इसको सीख रहे हैं, कई नई पैडागोजीज को। तो डेफिनेटली इस तरह की ट्रेनिंग जो अभी चल रही है ये भी बहुत रिक्वायर्ड है, और इससे भी और हमको कई और एरिया में भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और जो अभी जो कंटेंट है उसको नई पैडागोजी की उसको नई पैडागोजी के हिसाब से डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि पूरा क्यूरिकुलम, पूरा सिलेबस, पूरा सारा आपका जो मैकेनिज्म है वो अभी आपको इस पूरे नए फिर से इस कंटेंट को डेवलप करना पड़ेगा। बिकॉज अभी तक तो आपने सोचा नहीं था कि हमें इसमें छोटे छोटे कई सारी नई पैडागोजीज डालनी है, इसके तरीके चेंज करना है, तो अब आपको फिर से एक पूरा कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो ये भी एक हमारे सामने चैलेंज है। और ये मैंने आपको बताया है कि जो भी हम पैडागोजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है सारे स्टूडेंट्स को सूट करे। तो हमको कई सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। हायर एजुकेशन में खासतौर से भी आप देख सकते हैं, हर जगह ऐसा होता है, कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं। तो हमको एक मेथड नहीं हम अपना सकते, तो हमें कहीं ब्लेंडेड, कहीं मिक्स्ड, कहीं कोई एक मेथड जो ग्रुपिंग करके मेथड्स को अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस अभी हमारे सामने हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी टूल्स की ट्रेनिंग, ये सब तो भी बहुत जरूरी है। अभी इसमें भी हम लोग बहुत थॉरो नहीं है, बट हाँ, इसको हम लगातार सीखते जाएंगे और ये होता जाएगा। उसके बाद इसमें एक बड़ी समस्या ये आती है कि ये जो तरीका है इसमें हमारा असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप रोज इवैल्यूएट कर रहे हो, हर हफ्ते इवैल्यूएट कर रहे हो, और आपको लास्ट में केवल उसके कॉपी के नंबर नहीं देने हैं, केवल प्रोजेक्ट के नंबर नहीं देने हैं, असाइनमेंट के नंबर नहीं देने, प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं देने हैं आपको। और उसने आपने बहुत कुछ जो उसने सीखा है, जो उसका आउटकम आपको मिला है, आपको सबके नंबर देने हैं। अब वो नंबरिंग आपको कंटिन्यूअस करनी है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फिर वो चढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो इट इज अगेन अ चैलेंज, एंड वी डेफिनेटली इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी हमारे लिए अभी फिलहाल एक ही चैलेंज है। टीचिंग लर्निंग कंडीशंस हर जगह की एक जैसी नहीं है। मैं आपसे अपनी शेयर कर रही हूँ, मैंने बरकतुल्लाह से यहाँ आके भी काफी डिफरेंट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पाया है। मैं बहुत बताइए, बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको सुविधाएं मिली हैं। पर मैं जब स्टूडेंट्स में देखती हूँ तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा है। कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो उनको हमको कुछ चीजें उनको बुंदेलखंडी में अगर जब तक हम उसको नहीं स्पेशली समझाएंगे, या उसको हम जब तक उससे हमारा जो क्लास का एटमॉस्फेयर है जब तक उसे कंफर्टेबल नहीं करेंगे, तब तक हम उससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद ही नहीं कर सकते। कुछ हमारे यहाँ बिल्कुल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। हर साल हमारे यहाँ पे कम से कम 40 बच्चे प्री निकालते हैं, और उसके बाद मेंस में भी सिलेक्ट हुए थे, इस बार भी हुए थे। 5, 7, 8 बच्चे, 10 बच्चे हमेशा हो ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत अलग तरह का माहौल है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम वो पेडागोजी हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नेशनल लॉ में इस्तेमाल होती है, या किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होती है, या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल होती है। हम उसको कोशिश करते हैं हमारे सिलेबस में किस तरीके से हम उसे इनकॉर्पोरेट करें, बट एक माइंडसेट भी होता है हमारे यहाँ पे। माइंडसेट जो है
काफी ट्रेडिशनल माइंडसेट है। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, मेरा वो एरिया है, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ कि मैं बताऊं कि एक कॉर्पोरेट ऐसा होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, साइबर लॉ है, बहुत सारा ऐसा एरिया है हमारे यहाँ पे। बहुत सारा जो क्या चाहिए वर्ग है बच्चों का, वो अभी भी सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहता है, बिकॉज दे आर टेंड, वो उस तरफ झुकाव है उनका कि भाई हम पीएससी निकल जाए, सिविल जज निकल जाए, एडीपीओ निकल जाए, ट्रेडिशनल जॉब निकल जाए। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। आप ऐसी अपनी पेडागोजीज अगर डेवलप करना भी चाहें तो कहीं ना कहीं आपका कुछ एक रिस्ट्रेन भी रहता है, बट स्टिल स्कोप हर जगह है, छोटा सा कोई एक स्टेप तो कहीं भी लिया जा सकता है। वर्किंग आवर्स हमारे फिक्स है ऑलरेडी, और हम लोग अपने यूजीसी के नॉर्म के हिसाब से काम भी करेंगे। और ये जो काम, ये जो हमारा तरीके हैं, ये काफी सारा आपसे आपका टाइम भी डिमांड करते हैं। तो वो भी हमारे पास एक चीज होगी जिसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, टीचिंग, ऐसे बहुत सारे हैं। इट इज ओके, इट इज प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, विल फेस इट, कर लेंगे, और उसमें कोई ना कोई तरीका जरूर निकल आएगा। तो ये है। एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या ट्राई एंड एरर गुड है? क्या हम ट्राई एंड एरर की जो नई एक तरीका अपना रहे हैं, हमने एक नई सी पेडागोजी कोई ला दी बच्चों के सामने, उससे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाएगा, उनके मार्क्स पे असर नहीं पड़ जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आप अपना तरीका निकालिए उसको। आप अगर अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई नई पेडागोजी हमारे यहाँ पे नहीं है, तो आप उसको किसी बीच में उसको ले लीजिए, जहाँ पे आप उसकी मार्किंग सीधे सीधे इफेक्ट ना हो। उसका जो ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए, और बीच में एक कोई तरीका ऐसा इस्तेमाल करके उसका आउटकम देखिए, और उससे उसका आउटकम, उसका जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसमें ही पड़ेगा, उसके असेसमेंट में भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से तो ट्राई एंड एरर कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये हमें खुद पता होता है कि हमें उसे कहाँ पे इस्तेमाल करना है। यूनिफॉर्मिटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स, इनफैक्ट एक ही सब्जेक्ट में, मैंने अभी आपको अपने सब्जेक्ट का एग्जांपल देते हुए बताया कि हमारे पास एक जैसा ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास लॉट आता है स्टूडेंट्स का एक जैसा, ना हमारे पास सिलेबस हम एक जैसा पढ़ा पाते हैं। तो कैसे हम यूनिफॉर्मिटी करेंगे? तो उसका भी तरीका यही है कि आप अपने स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपनी पेडागोजी डेवलप करें। बाकी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लैंग्वेज, कल्चर, एटसेट्रा, तो ये सब हमको मीट आउट करने ही होंगे, और इसको किया भी जा सकता है। अब तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ाया जाएगा, तो लेट्स होप और भी इसमें इंप्रूवमेंट होगा। सो दीज आर सम चैलेंजेस। नाउ अब ये हमारा सेकंड जो हिस्सा है, जो इसका दूसरा हिस्सा था, मेरे ख्याल से मेरा समय भी अब चूंकि 43 बता रहा है ये, तो अब मैं आपको वो पीडीएफ और वो दिखाऊंगी, वो चीजें आपको बताऊंगी जिससे मैंने ये सब चीजों को सीखा, और अपने आप को रिफ्रेश किया कि भाई कौन से तरीके इस्तेमाल किया जा सकते हैं। तो ये जो है, ये मेरे पास जो रिसर्च पेपर है वो मैं आपको जरूर यहाँ पे खोल के दिखाना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कई सारे रेफर किए, और अल्टीमेटली मुझे ये वाला रिसर्च पेपर बहुत अच्छा लगा। मेंशन्ड है इसमें, आप देखिएगा। इसमें हमारे, देखिए ये, इसमें ये शहयात अब्दुल साहब भी, इन्होंने भी लिखा है, तो इसमें भारत की भी जो स्थिति है वो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने 90 आर्टिकल्स और इतने सारी जो मेथोडोलॉजी है हायर एजुकेशन, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन पे है, बाकी तो मुझे बहुत सारे मिले थे स्कूल एजुकेशन पर भी, पर ये वाला शायद आपको थोड़ा रेलेवेंट लगे, है ना। तो ये वाला हम अब खोल के देखते हैं, और ये 2 रिसर्च क्वेश्चंस थे इनके, और इसका जवाब हमें इसमें मिलेगा, और डेफिनेटली इसके जवाब के साथ हमें अपने भी क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो तरीका है वो क्या है, और कौन सी सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमको नजर आ रही है इसमें पेडागोजी। तो इसका जवाब आपको मिलेगा। तो मैं अब अपना दूसरा जो फाइल है वो खोलूंगी। अगर नहीं दिखे तो बस मुझे बताइएगा, और दिखे तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई होप इट इज विजिबल। मैंने इसको एक्चुअली पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड इसलिए कर लिया था क्योंकि कभी कभी यहाँ पे अगर कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है तो फिर मैं आपको दिखाई नहीं पाती। सो आई होप इट इज विजिबल, राइट? No, ma'am. It Yeah? is visible, ma'am. It is visible. So this is Yes, just ma'am. article. I will not go through the article. I will not tell you anything to read about it, और कुछ अपन डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। I think my concept is already over. बस अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप रिफ्रेश होने हम लोग यहाँ पे आए ना, तो I am also refreshing myself. आप भी देखिए कि इसको और बेहतर तरीके से कहाँ से पढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छा इसमें बताया गया है। ये वही है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया था, एम ऑफ द स्टडीज को, बट अब आप देख सकते हैं। अब देखिए ये मेथोडोलॉजी है, ये तो इनकी रिसर्च पेपर की मेथोडोलॉजी है, उसमें हम अभी नहीं ज्यादा जाते क्योंकि हमारा को रिसर्च पेपर में नहीं जाना है। उन्होंने अपने तरीका बताया कि उन्होंने कैसे इसको कैरी आउट किया था। ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मैं उस पर आगे बढ़ जाती हूँ जल्दी से। तो ये देखिए, इसमें मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ये कि इन्होंने कितने Yes, सारे, ma'am.
हाँ जी, The research article is not visible right now to me. It's PPT which is I visible. guess we would request ma'am, she'll share the research article. We will be sharing the PPT and the research article both after the session. okay. So I think my screen is not visible. It is the PPT only visible, the slide? Yes, ma'am, the Your PPT is screen visible, ma'am. sharing is paused. Okay. Fine. Ma'am, you please continue. I guess we can share the PDF Fine, as I well. will If share. that Link तो उसमें है ही, PowerPoint presentation में link तो है ही. So मैं ठीक है. डाउनलोड भी करके शेयर कर दूंगा मैम. Yeah, No sure, worries. sure. So मैं conclude ही कर देती हूँ इसको. I'll get back to my PPT. तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी खास बात क्या है. इसकी खास बात ये है कि इन्होंने आर्ट्स, मतलब मैं इसको आपको जस्ट एक बोल देती हूँ, आपको बोलने से मालूम चलेगा कि आप जब आपके पास आर्टिकल आएगा तो आपको किन चीजों को पलटना है उसको. देखिए उन्होंने टेबल बनाए हैं पूरे अपने कंक्लूजन के. मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उस टेबल को एक बार देखिए. टेबल का भी पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है, वो भी मैं आपको भेज दूंगी. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सोशल साइंस और कंबाइंड डिसिप्लिन, इन सबको इन्होंने एक साथ स्टडी किया. और सबकी जितनी अच्छी अच्छी जो मेथोडोलॉजीज हैं, जितनी अच्छी अच्छी मेथड्स हैं टीचिंग के, उनको सबको आपस में इन्होंने पूरा एक कंपैरेटिवली क्रॉस डिसिप्लिनरी स्टडी तैयार किया. और उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि सबसे अच्छे जो पोटेंशियल टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हायर एजुकेशन. तो जब आप इसको देखोगे ना तो आपको, आई बिलीव मी, आपको अपने सब्जेक्ट में इतने सारे, देखिए अभी कुछ कुछ तो हम लोगों ने सबने सुने होते हैं, फ्लिप लर्निंग है, ये है, क्रॉस ओवर लर्निंग है, बहुत सारे तो कॉमन है. पर जब मैंने उसको खोला सो आई वाज सो इम्प्रेस्ड. उसमें इतने सारे तरीके बताए जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये भी एक तरीका हो सकता है हमारे सब्जेक्ट को डील करने का. तो आप जरूर उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा और आप देखिएगा कि उन्होंने कम से कम नहीं होंगे तो 40 से ज्यादा तरीके उन्होंने बताए हैं इसमें. और उसको आप एक बार जरूर मेरे हिसाब से जरूर देखें. और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका कि अब ये टेबल भी एक्चुअली मेरे पास था, पर टेबल कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ. मैं आपको कुछ नाम ले देती हूँ जल्दी जल्दी, अब एक बार आप सुन लें खाली. जैसे इन्होंने एक्शन लर्निंग बताया है, वो क्या होता है कि वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, प्रॉब्लम रियल होनी चाहिए और किसी का भी उसको आंसर पता नहीं होना चाहिए. ये कहाँ यूज होती है, तो लगभग 15 जगह इस्तेमाल होती है. तो इन्होंने क्रॉस तरीके से एक्टिविटीज कैसे करेंगे, अप्लाइड प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे, बिजनेस प्लान क्रिएशन कैसे करेंगे, केस बेस्ड टीचिंग मेथड हो सकता है, क्लिनिकल स्टडी हो सकता है, ये तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज तरीका हो सकता है. इन्होंने इतने सारे बताए हैं कि मैं पढ़ूंगी तो पूरा टाइम निकल जाएगा. फ्लिप क्लासरूम तो है ही, गेम बेस्ड लर्निंग तो है ही, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ही, ग्रुप डिस्कशन है ही, ग्रुप ओरल प्रेजेंटेशन है, इतने सारे हैं. हाइब्रिड ट्यूटोरियल क्या होगा, इन क्लास डिस्कशन क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन तो हम लेते ही हैं, खैर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट अभी अभी सर ने आपको बताया, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है. लगभग इसमें से जो बेसिक थे वो हम लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए हैं. मगर पता है लाइफ स्टोरीज, जैसे कल में, अब मैं आपको जस्ट अभी बात आई तो मैं शेयर करूंगी. कल मेरे बेटे के स्कूल में कल एक कॉम्पिटिशन है कि आपको अपनी लाइफ से संबंधित कोई अच्छी सी स्टोरी बताना है. अब वो छोटे बच्चे के लिए, लेकिन इस तरह का कोई चीज आप अपने सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन लेवल पे भी कर सकते हैं. बायोग्राफी लिखने के लिए आप बता सकते हैं खुद को, अपने फ्यूचर करियर के लिए वो स्टूडेंट के लिए बहुत फायदा होगा. हम लोग जब रेज्यूम बनाते हैं पहली बार तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है. इस तरह की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं. ये भी कई डिसिप्लिन में होती है, माइंड मैपिंग होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीयर लर्निंग तो होती ही है. ऐसे बहुत सारे इन्होंने बताए हैं, 70-80, ओ माय गॉड, मतलब 100-110 इतने तो हैं ही इसमें. तो आप इतनों को तो आप सीख ही सकते हैं. तो दीज आर सम पॉपुलर pedagogies which are being used in various interdisciplinary subjects and some of them are so common कि वो एक से ज्यादा subjects में इस्तेमाल होती हैं. और कंक्लूजन तो मैंने आपको बताया ही था उसका कि लेक्चर मेथड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन पुराना वाला तरीका नहीं, नया वाला. फिर इन्होंने एक कंपैरेटिव भी तरीका ये बताया कि कॉमन कौन सी यूज होती है. जैसे इन्होंने बताया कि साइंस और इंजीनियरिंग में कुछ कॉमन इस्तेमाल हो सकती हैं, सोशल साइंस में कुछ कॉमन इस्तेमाल हो सकती हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में कुछ कॉमन इस्तेमाल हो सकती हैं. तो आप इससे बहुत जल्दी रिलेट कर सकते हैं कि जब आपके सब्जेक्ट की डिमांड कैसी है उस पेडागोजी को आप इस्तेमाल करें. तो ये जरूर आप, मेरा सजेशन है, आप इसको देखेंगे. और कंक्लूजन भी, वो भी उन्होंने टेबल फॉर्म में बताया हुआ है कंक्लूजन, तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. और कुछ जो सबसे बेहतर निकल के आई है वो मैं आपको बस एक बार रीड आउट कर देती हूँ. उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, कलर मेथड है, लैब वर्क है,
प्रैक्टिकल सेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग है, रोल प्लेइंग एक बहुत अच्छा मेथड है आजकल। आजकल रोल प्लेइंग बहुत चल भी रहा है, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है कि इसको आप हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट इफ यू विल ट्राई डेफिनेटली यू आर गोना फाइंड अ वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग मैथड इन योर सब्जेक्ट। टीम बेस्ड लर्निंग है, वीडियो और ऑडियो तो आजकल है ही। तो ये एक हो गया। आई थिंक आई शुड कम बैक टू माई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड दिवांशु जी प्लीज मुझे बताइए कि अब मेरा पावर पॉइंट भी नहीं दिख रहा है क्या? Yes, ma'am, the PowerPoint is visible. We are at slide number 16. चलिए कम से कम ये दिख रहा है, तो वो मैं आपको भेज दूंगी। चलिए अब जल्दी से खत्म करते हैं, हमारा ऑलमोस्ट टाइम भी होने ही वाला है। तो इसको मैं एक दो चीजें और आपको जरूरी बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो ये मेरा अपना फेवरेट है ना, मैंने आपको कहा ही था कि तीसरा वाला आपको मेरा फेवरेट झेलना पड़ेगा, तो ये मेरा फेवरेट है। हालांकि मुझे सारी अच्छी लगती हैं और ये सारी मुझे बहुत अच्छे से अभी आती भी नहीं है, इनमें से कुछ कुछ को मैं ट्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल पढ़ाने में। आई विल टेल यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मुझे ना ये कुछ नया करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने 21 साल से नहीं किया था, मैं एकदम रिफ्रेश हो जाती हूँ उसको करके। मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है उसे करने के बाद कि आज मैंने कुछ तो भी एक नया किया है। और कहीं ना कहीं एक होता है, आप भी इस चीज को फील कर रहे होंगे कि जब आप अगर 10-15 साल पढ़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो मोनोटोनस हो जाता है आपका। आप अब आप हर बार नया सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा पाएंगे, नया सब्जेक्ट पढ़ाना तो एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट चैलेंज है। अपने ही सब्जेक्ट को इतने खूबसूरत तरीके से पढ़ाया जाए, छोटा सा कुछ एक नयापन लाया जाए, वो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देगा। और आप रात अभी ऐसे 6 बजे आप बैठे हैं, उसके बाद आप रात को 8 बजे भी अगर उसको तैयारी कर रहे होंगे तो आपको उतना ही एनर्जेटिक फील होगा। एक बार करके देखिएगा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, मेरे फेवरेट ये 2 हैं। अब मैंने तीसरा जबरदस्ती लगा दिया ना, एक कदम आगे तो चढ़ना ही है। अब एक मैंने लिया है जिसमें मैंने लिख दिया है कि इंस्पायरेशन इज माय सन। डेफिनेटली गेमिफिकेशन में इंस्पायरेशन आपके अपने बच्चों से ज्यादा कौन हो सकता है इस समय। तो ये नया एक जो तरीका है गेमिफिकेशन का, इसका इंस्पिरेशन मेरा बेटा ही है, क्योंकि मैं उसको देखती हूँ कि कोई भी चीज, अब तो बड़ा हो गया है काफी, तो अब उसको एकदम से छोटे बच्चों से खेल खेल में नहीं सिखाना होता चीजें। लेकिन नो डाउट ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिससे आप अपनी मैथ्स इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैं आपको कुछ गेम्स का नाम बताऊंगी, उसमें आप अपना खुद का अपने सब्जेक्ट के लिए खुद एक चीज डेवलप करके, क्वेश्चन आंसर डेवलप करके, क्विज डेवलप करके, लेवल गेम्स के डेवलप करके आप खुद अपने सब्जेक्ट में गेमिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। एंड बिलीव मी, यू क्लिक just put your this thing gamification in higher education, गूगल पे डालिए और देखिए उससे क्या क्या निकलता है, हमारी कल्पना से परे है। एक बार यूट्यूब पे डाल के देखिए गेमिफिकेशन इन हायर एजुकेशन। अब मुझे तो ये सब कुछ करना ही था अभी, बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग, ये मुझे अच्छा लग रहा था इस टॉपिक को तैयार करने में, और मैंने इतने अच्छे अच्छे लेक्चर सुने, इतना मजा आया उसको सुन के। अब आप गेमिफिकेशन कर नहीं पाएंगे, वो मुश्किल है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोड डिकोडिंग, बहुत, हमें वो नहीं करना, हमें तो सिर्फ तरीका ढूंढना है, फिर तो हमें लोग मिल जाएंगे वो करके देने वाले। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और ये जो है जिसको आप बोलते हैं वीए के टीचिंग एजुकेशन वाले तो डेफिनेटली ये बात जानते ही हैं, मगर मैंने इसको लिखा है कि माय फादर इज माय इंस्पिरेशन। ये क्यों लिखा है, ये अभी जब मैं आगे वाली स्लाइड पे जाऊंगी तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि सबके फादर वो इंस्पिरेशन होते हैं उसका। ये एक्चुअली वीडियो, ऑडियो और ये कनेक्टेड टीचिंग का है। तो ये क्या है, जैसे आपने बचपन में सुना होगा, आपके पापा बोलते होंगे, मेरे पापा तो बोलते थे, खड़ी हो जाओ और घूम घूम के पढ़ो। किसी के पेरेंट्स ने बोली है ये बात कभी? याद नहीं हो रहा है तो घूम घूम के पढ़ो, बोला है किसी ने? अच्छा, बोल बोल के पढ़ो, ये तो बोला ही होगा ना। Yes, ma'am. यस, चलिए हाँ, तो ये सबको सबका है ना। सो दिस इज नथिंग, वो वही है, उसको बस ऐसे लिख दिया गया है, बाकी ये कुछ भी नहीं है। तो हमको बचपन से ही कहा जाता था कि आप खड़े होके पढ़िए, घूम घूम, खासतौर से जब टेबल्स याद करने हो, बहुत दिक्कत हुई थी बचपन में टेबल्स याद करने में, वो घूम के याद हुए हैं, उसके अलावा याद नहीं होते थे। और बड़े बड़े आंसर्स जो होते हैं वो भी ऐसे याद होते हैं, घूम घूम के, फिर भी नहीं होते। तो फिर पेरेंट्स कहते हैं, मेरे पापा कहते थे, अब लिखो, अब लिख के देखो। तो आगे मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी, उसमें भी आर भी आ जाएगा, है ना, डब्ल्यू भी आ जाएगा, तो रीडिंग राइटिंग भी आ जाएगा। तो वो इस मेथड का और अगला रूप है। मेरे ये 2 पसंद के मेथड है इस समय, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने सब्जेक्ट्स में इन दोनों को, ये तो खैर इस्तेमाल करते ही हैं हम, अब ये वाला भी इस्तेमाल करें। ये अभी एक मुझे एक नया सा कुछ दिखाया, आई ट्राई। इसके बाद अलावा बाकी जो है मिक्स्ड मेथड इज आल्सो माय फेवरेट, बिकॉज इट सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ माय द नीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स। क्योंकि मिक्स्ड में क्या होता है, मेरे वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं जो थोड़ा सा क्लास में कम ध्यान देना चाहते हैं या कहीं और ध्यान देना चाहते हैं, और वो भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग बहुत एक्टिवली क्लास की हर चीज को सुनते हैं। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मेथड्स। बहुत सारी बची हैं, सो लेट्स कंप्लीट इट, जल्दी जल्दी करते हैं आप।
just 2 minutes. Okay. Now this is gamification. क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इसी में से अब आप देखिए, अब इसका ना आप अपना अलग से पूरा एक पूरा लेक्चर चाहिए पड़ेगा इसके लिए. So it is a whole new pedagogy and it demands a different it demands certain details, but हम बस सामान्य बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप इसको रीड करिएगा. ये रिसर्च पेपर बहुत अच्छा है जहाँ पे से मैंने डाला है इसको लेके. तो गेमिफिकेशन से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, लगी हुई है यहाँ पे एक पिक्चर भी. डेफिनेटली इंटरेस्टिंग तो होता ही है, इंगेजिंग होता है. आपको भी अगर मैं गेम खेलने के लिए बोल दूं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा मन नहीं करेगा, 2-4 मिनट तो हम लोग भी खेल ही लेते हैं. ऐसा हो नहीं सकता, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं अभी भी, उसके बावजूद भी हमने कभी कोई मोबाइल पे गेम ना खेलना हो, ये असंभव है. और इस कहीं ना कहीं वो बहुत रिलैक्सिंग भी होता है. आप थक के भी आए और आप 5 मिनट घर में खेल लेते हैं तो आपको गेम अच्छा तो लगता है. हाँ, एडिक्शन की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हर चीज की अति तो बुरी होती ही है. लेकिन हाँ, अगर वो गेम बच्चे को कुछ सिखा सकता है, खासतौर से उस बच्चे को जिसको क्लास में बैठ के लेक्चर सुनने से तो बिल्कुल भी मन नहीं लगना है, तो हम इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते. ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गेम्स इस समय आ रहे हैं और हम अपने सब्जेक्ट में भी इस तरह के जो गेम्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं. अब मैं इस पे नहीं जाऊंगी कि ये क्यों अच्छा होता है, वो सब हम लोग देख ही रहे हैं. ऑटोनॉमी है उसमें, बोर्डम से छुटकारा है. आप गोल सेट कर सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन का जवाब दिया तो आप एक लेवल आगे जाएंगे. हम में से सभी ने शुरू में मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी डाउनलोड करके तो किया ही होगा. ये तो हमने भी कहीं ना कहीं थोड़ा जब सीखने का शौक चढ़ता है तो अपन लोग बताते हैं कि बच्चों को कि ये डाउनलोड कर लो, ऐसा कर लो, उसमें वो लेवल बढ़ाते जाता है क्वेश्चंस का. तो इट इज AI बेस्ड गेम्स होते हैं ये, तो दे आर डेफिनेटली, इनका आउटकम तो है ना. आप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होते हैं इसमें, आप उतनी जल्दी नहीं सीख सकते कि आप 10 मिनट कॉन्सेंट्रेशन से बैठ के पढ़ लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा. बट यस, इसका रिजल्ट आपको याद रहता है और इंटरेस्टिंग होता है. आजकल मुख्य चीज ये है कि आप कैसी चीजों को इंटरेस्टिंग बनाए. मटेरियल की किसी के पास कोई कमी नहीं है, ओवरफ्लो ऑफ मटेरियल है, ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. सही मटेरियल ढूंढना और उसको वापस उसको अपने याद रख पाना, उसमें इंटरेस्ट पैदा कर पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय हमारे लिए. और जिस तरह से अभी हमारा इंटरडिसिप्लिनरी शुरू होने वाला है, हमको इस तरह की चीजों में जाना ही पड़ेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पेडागॉजी है. मेरी पसंद की भी है, मेरे बेटे की पसंद की है. सो ये देखिए कितना खुश हो रहा है ना ये बंदा यहाँ पे फोटो में. ऐसे ही डेफिनेटली ये होता है रिजल्ट, यही है इसका आउटकम, इसमें कोई शक नहीं है ना. छोटा नहीं है, अच्छा बड़ा है, डिग्री भी ले सकता है, हायर एजुकेशन में भी काम आएगा. ओके, सो ये इसका इम्पैक्ट है, लर्नर का मोटिफिकेशन बढ़ेगा. ये सब सामान्य सी बातें हैं जो आपको पता होगा, है ना. और अगर आपको मैं लिखने को बोल दूंगी 4 पेज तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन 1 घंटा अगर गेम खेल के कुछ क्वेश्चंस करने को बोल दूंगी तो आराम से कर लेंगे. तो ये हमारे साथ होता ही है. और इसी के साथ मैं एक और छोटी सी पेडागॉजी डिस्कस कर लूं, जब गेमिंग कर ही रही हूँ तो ना, उसे कहते हैं हम अपनी आपकी है भी एक कि आप सेल्फ लर्निंग जो है. जैसे कि अगर मुझे कोई चीज पढ़ना है तो मैं सोचूंगी कि मुझे ये खुद कहाँ समझ में नहीं आ रहा, अब मेरे मन में क्या क्वेश्चन आया, तो मैं FAQ ढूंढूंगी. या मुझे लगता है कि मैं खुद को किस तरीके से बेहतर ये चीज समझा सकती हूँ, कोई नया तरीका निकालूं इसे करने का. बिल्कुल ऐसा ही आपको अपने स्टूडेंट के बारे में सोचना है. खुद से बातें करके देखिए आप. यू मे फाइंड इट अ लिटिल क्रेजी, मगर समटाइम जब मुझे कोई नया चीज, एकदम नई चीज पढ़नी होती है, मेरे सब्जेक्ट से काफी हटके और इंपॉर्टेंट है, तो मैं ना अपने आप से बातें कर करके उसको पढ़ती हूँ कि क्यों समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, अच्छा एक बार और पढ़ लो, अब जरा इसको फिर से लिख के देख लो जरा थोड़ा सा इसके पॉइंट्स. तो ये इसको आप किसी को बोलिएगा नहीं बस. तो बट दिस इज ऑल्सो सम, इट इज अ काइंड ऑफ अ पेडागॉजी. इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अपनी खुद की डेवलप कीजिए, गड़बड़ कीजिए और नया सीखिए, कुछ नहीं. इसके बाद ये डिफरेंट वेज हैं. तो ये जो है, ये नाम जरूर आपके पास तो खैर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहुंच ही जाएगा. इसको एक बार खोल के देखिएगा, कहूत को. इतना बढ़िया गेम है. मैंने जब ये शुरू किया और मुझे ये टॉपिक मिला, उसके बाद मैंने इसे खोल के देखा और इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है. आप इसे अपने सब्जेक्ट के लिए डेवलप कर सकते हैं. हालांकि बहुत सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी काम कर रहा है बहुत अच्छे से. इसको आप अपने लिए इस्तेमाल करके देखिए, खासतौर से जब हेटेरोजेनस ग्रुप होता है, जहाँ पे कम ध्यान देने वाले उससे ज्यादा और एकदम बहुत सिंसियर बच्चे होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा. और इसमें आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं किसने कितना सीखा. जब तक सारे लोग आंसर नहीं कर देंगे तब तक आप, हो सकता है वो शीट आगे ही ना जाए. तो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं, एक दूसरे को टीम वर्क करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं. बहुत अच्छा एक गेमिफिकेशन का आप प्लेटफॉर्म. इसको ऐसे ही गिमकिट भी है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. मगर गिमकिट जो है वो क्रिएटिव सब्जेक्ट में ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो मैं थोड़ा सा, मुझे लॉ के लिए अभी नहीं समझ आया कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. आई ट्राई वन मोर टाइम, आई ट्राई. अच्छा, मैं ये नहीं कहती सारे आप इस्तेमाल करें, किसी एक को करके देखिए. इस क्लास के बाद एक किसी को बस उसकी वेबसाइट पे जाके खोल के देखिएगा,
तो आपका आज का सारा दिन का जो है वो सब फ्रूटफुल हो गया। अब आपने आजकल सुना होगा बच्चों को ना, ये माइनक्राफ्ट, ये तो छोड़ते ही नहीं बनता किसी से। और जब मेरा बेटा मुझसे कहता है कि माइनक्राफ्ट से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। मैं उसको सिर्फ डांटती हूँ, और बेटे को नहीं, मेरे घर में ऐसे बड़े बच्चे भी हैं जो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो वो भी जब इसको नहीं छोड़ते हैं तो मैं कहती हूँ कि छोड़ो इसको, क्यों ये कर रहे हो, इससे आगे बढ़ो। तो मुझे अगर ये कोई तर्क देता है इस बात का कि नहीं ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाई का, तो मुझे समझ ही नहीं आया। फिर जब मैंने खुद खेल के देखा तो मुझे समझ में आया। तो अभी मैं बिल्कुल इसकी मतलब अच्छे से नहीं खेल पाती हूँ, लेकिन हाँ मुझे समझ में आया। उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप गेम खेलते खेलते सीख जाते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें से आप एक आध को किसी को ट्राई करके देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये कहूत का है, ये खैर ले तो आप जैसे गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएंगे। तो इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं। ये वही है जो हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, घूम घूम के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। तो ये VAK कहलाता है, और ये चार्ट भी बिल्कुल क्लियर है। और इसमें आप समझ सकते हैं कि हमको देखना है, सुनना है, और अपने सारे चलना है, घूमना है, फिरना है ना। क्लासरूम में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है। और चूंकि वन ऑफ माय फेवरेट्स आपने पूछे थे, तो ये पुराना भी है, इसमें नयापन भी लाया जा सकता है हमेशा। और ये वन ऑफ द कह लीजिए बहुत फ्रूटफुल है। मैंने कठिन से कठिन सब्जेक्ट में भी इसको सक्सेसफुल होते हुए देखा है, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी था। तो जल्दी से इसे खत्म करते हैं आप। इज इट यूजफुल? ऑफ कोर्स इट इज यूजफुल, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग। ये इस वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो इसमें उन्होंने पूरा रिसर्च करके बताया है कि किस तरीके से ये कितना फ्रूटफुल है, इससे क्या आउटकम है। क्रिटिसिज्म है क्या इसका? बिल्कुल हो सकता है। क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि वही कि जो हम सारे को एक जैसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं लर्नर्स को, है ना। किसी को बोल के समझ में आता है, किसी को चुप रह के समझ में आता है, किसी को चल के समझ में आता है, किसी को शांत बैठ के एक जगह पढ़ के समझ में आता है। बट ठीक है ना, आप कंबाइन कर लीजिए उसमें से जो जिसको समझ में आता है। कोई मेथड थोपना तो है नहीं हमें, मगर हाँ ये तरीका है। इसका श्रेय भी हम दे दें तो नील फ्लेमिंग को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने इसमें ये R और जोड़ दिया था, और अच्छा किया जोड़ दिया, क्योंकि बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होता। तो इन तीनों के साथ ये भी जरूरी है कि उसमें आप उसको विजुअल ऑडियो सब तो ठीक है, उसको लिख के और पढ़ के भी जरूर देखें। तो ये इन्होंने ये मॉडल दिया था 1987 में, जो मुझे पसंद आया। तो लास्ट वाले सेगमेंट में चूंकि मेरा फेवरेट था, तो मैंने उसको आपको बता दिया। अब ये नया है, ये मुझे अब आगे ये इसके ऊपर थोड़ा सा और अगर हम ध्यान देंगे, क्योंकि अब इससे हम बचेंगे नहीं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ AI एजुकेशन जो है, ये जो नई पेडागोजी है, उसमें AI का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। ये भी एक पूरा आर्टिकल है, इसका मैंने फुटर नहीं डाला क्या, वो उसमें मैंने डाला तो होगा, क्योंकि मैं रेफर करने की कोशिश कर रही थी हर चीज को, मे बी मैं इसको रेफर नहीं कर पाई। ये आपको बहुत आराम से इसी नाम से मिल जाएगा, रिसर्च गेट पे, या फिर और शायद किसी और दूसरी उस पे था, स्प्रिंजर आर्टिकल था। आई एग्जैक्टली डो नॉट रिमेम्बर, मगर हाँ ये बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये AI जो है ये बहुत इस्तेमाल होता है आजकल, और आजकल आप देख ही रहे होंगे सारे के सारे जितने भी, अगर आपने कभी अपने बच्चे को बायजूस या वेदांतु पे काम करते देखा होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना काम का कहना चाहिए, हमारा नया इनोवेशन है। और ये सब वही है लगभग, गेमिफिकेशन करने में भी AI काम आ सकता है। और ये मेरे आज के न्यूज़पेपर में जैसे ही मैंने पलटा तो मैंने देखा कि कुछ मिलता है मेरे टॉपिक से संबंधित। ऐसे ही देख रही थी सुबह, तो सोचा आपको बता दूं। तो एक ये नया आज कोई गोल्ड लोन वाला एडवर्टीजमेंट सबसे पहले पन्ने पे इतना बड़ा दिखाई दिया मुझे, और जैसे ही मैंने उसमें लाइन पढ़ी, AI पावर सिक्योरिटी वैल्यू, तो मैंने कहा आज तो जरूर बता ही दूंगी मैं इसको कि ये देखिए आपको गोल्ड लोन भी नहीं मिलने वाला है बिना AI की, है ना। तो हमारी शिक्षा नीति कैसे चलेगी बिना AI की? ये पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज डेफिनेटली द नेक्स्ट तो क्या बोले, अब तो ये स्टेप तो हम ले ही चुके हैं, और ये हाईलाइट करने लायक भी चीज है। अब AI तो आपको इस्तेमाल करना ही करना है। और उसके साथ ही पेपर के नेक्स्ट पेज पे आज हमारी इंडिया स्किल रिपोर्ट्स भी, उसके बारे में न्यूज थी 2022 की, जिसमें उन्होंने बोला कि जो टेक्नोलॉजिकली और मैनेजमेंट की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रोजगार मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। अगर हम हायर एजुकेशन में है तो हमारा ये भी एक फर्ज है कि हम देखें कि हमारे बच्चा रोजगार की तरफ बढ़े, ये भी हमारा एक ड्यूटी है। सो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है ना। तो हमको अपनी ऐसी पेडागोजी तैयार करनी ही पड़ेगी। तो ये भी आज सेकंड
पेज पे था, तो मैंने आपको ये भी सोचा कि बता दूं कि हमको इन दोनों चीजों से रिलेट होना ही पड़ेगा, हमको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना ही पड़ेगा, हमको डेफिनेटली ऐसे पेडागोजीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ये एक अगली न्यूज थी, थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन ठीक है, हर चीज का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इसमें उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बाद न्यूयॉर्क के 44% जो टीचर्स हैं वो अब अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सब कुछ आप ही पढ़ाइए, अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये कोई शेयरिंग नहीं करना चाह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जबकि पेरेंट्स खुद भी नहीं सीखना चाह रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी सीखना भी नहीं चाहते हैं, नया कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, सब कुछ थोप रहे हैं। तो छोड़ दीजिए इसको, है ना, न्यूज में था बस। तो डेफिनेटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी कई न्यूज थी, तो ये बात तो समझ में आ गई कि आने वाले समय में हम में से कोई भी अगर टीचिंग लर्निंग के फील्ड में है तो वो इन सब चीजों से तो बिल्कुल आप बच नहीं सकते। इन सब चीजों से उसको तो आपको सीखना ही है, सिखाना ही है, खुद का डेवलप भी करना है। तो मेरी सलाह ये है कि एक छोटा सा स्टेप लीजिए, सब में कह चुकी हूँ आपको, ट्राई एंड एरर बिल्कुल कीजिए, चाहे वंस इन अ वीक करके देखिए, उसको आप मेन इवैल्यूएशन में मत जोड़ो, मगर करके तो देखो। एक छोटा सा कोई चीज अगर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, किसी और व्यक्ति से सीखने को मिलता है तो उससे हेल्प लीजिए, रिकॉर्ड जरूर रखिए। अभी जब हम नेट की वो तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको मालूम होता है कि हमारी इस सारी छोटी छोटी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं इसका रिकॉर्ड ना केवल हमारे रेज्यूमे में ऐड होगा, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी के भी उसमें भी काम आने वाला है। तो इसका रिकॉर्ड जरूर रखिए, आप चाहे उसमें फेल हो जाएं, वो पेडागोजी बिल्कुल काम ना आए कोई नहीं, लेकिन आप उसका ट्राई जरूर रखिए और एक कोई नई डेवलप करके कोशिश कीजिए। और जो मैंने अभी आपको इतनी सारी चीजें बताई उनमें से किसी को अपने सब्जेक्ट से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। अब आपका कोई सजेशन हो, कोई भी चीज हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मतलब हम डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपको Thank कुछ। you so much, ma'am. And I guess I just went 10, 12 years back of when I was in your classroom. So wonderful. I guess the way of presentation, everything, especially the last three slides. And I'm so proud that even when we are so many kilometers away, and what you were trying to teach, I'm been practicing. I'm practicing Kahoot in my class for past 3 years now. So that's one thing, and that is the way where even the most non-interested person in my class becomes so attentive, right on his mobile and everything, and how this thing and the competition among themselves. So that is also one of those things. And not only that, we organized recently an inter-university and inter-school quiz competition as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and 2 rounds were dedicated on Kahoot itself. So that was also the fastest finger and all those times and everything. According to you all self, you can like customize those particular facts. Yes. So thank you so much, ma'am. And that is really one of the wonderful ways to take those things ahead. So thank you we so actually much. we have different infrastructure and atmosphere of working. So I it would, I is would very also difficult share for one thing, me. ma'am, with you. Yeah, We yes, have something called as law tunes, and that yeah, is a yeah. cartoon way of representing contract and all such things together. So Yes, all my yes, friends yes, here can use that thing definitely. definitely. I would request anyone who have got any question, any suggestion, can please unmute themselves and take it ahead. Please. Or else I'll utilize this thing. I'm meeting ma'am after so long. I can keep on having a conversation with her. I'm trying to do so many new things here, but as I already told you, we have a different culture and different environment here. But what I felt, Divanshu, at least I can do this little bit. I can do. अगर वो मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ठीक है ना, कुछ तो नया किया, कुछ तो किया सब, but I guess makes me something that happy. yeah, ma'am, the motto of our university is igniting mind changing lives. And believe me, today you are igniting many of such of us in this entire course out here from various parts of the country. And these news ideas, definitely, this is where I guess I got your point, and I'll take a cue from what you said, that the purpose of these refresher course is to refresh on yourself You're yourself. and both. Not only, it's not like as a resource person you are only here to tell it, you are also open to take those things ahead and to understand those things, and I guess that's a wonderful way. Anyone who has got any question can please take it up. पूछ लीजिए प्लीज जल्दी से, कुछ तो पूछ ही लीजिए, और नहीं पूछ रहे तो कुछ अपना शेयर कर लीजिए, कुछ मुझे नया सीखने को मिलेगा.
क्योंकि सबके साथ अलग अलग डिफिकल्टीज हैं, मगर कोई ना कुछ तो भी एक छोटा सा भी रास्ता लाया तो मुझे बता दीजिए, मैं भी कर Yes, लूंगी। ma'am. We have Sukumar Pal, sir. Sir, can you please take up your question? This is one observation I would like to give, because one good technology that ma'am already pointed out, AI tool, AI technology, artificial intelligence, then definitely this tool itself is doing everything. Even if one would like to write a book, this tool will do it. So don't you think that it is reducing the capacity or the skills of the human beings, and definitely it is leading to the negative world. May I answer? Yes, Yes. ma'am, please. सर आपने जो बात बोली वो मैंने दिखाई थी अपने एक स्लाइड में, आपने देखा होगा। तो ये जो भय है ना, ये केवल आपके मन में नहीं है, ये हमारे सबके मन में ये भय है। और सर अगर आप इसको तर्क वितर्क की दृष्टि से देखेंगे, सर एआई का कभी भी जो हमारी नेचुरल जो हमारा ईश्वर ने जो हमें रीजन दिया है, हम लोग लॉ में रीजन पे केवल बात करते हैं, उसका सर कोई तोड़ नहीं है। कितना भी आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर लें, और कहीं ना कहीं सर ये हमारी क्षमताओं को अगर कम करता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये हम उसे अपनी क्षमताओं को कम करने दे रहे हैं। आप मत करिए सर। यहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज पढ़े होंगे, 80 साल की जापानी महिला रोज मैथ्स के सवाल सॉल्व करती है अपने दिमाग में, अपने आप को बिल्कुल उसका दिमाग चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है सर, हम लोग खुद ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एआई के बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो आपकी क्षमताओं को कम करता है। हाँ, वो आपकी क्षमताओं को किसी ऐसे क्षेत्र में ज्यादा बढ़ाता है जहां पे शायद आपने अभी पहले नहीं दिया था। हमारे पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है, हमारा बच्चों से बात करने का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है। हम अब बैराग लेके क्लास में नहीं जाते, हम अब किताब लेके क्लास में नहीं जाते, अब हमें कुछ भी चीजें ढूंढ के भी नहीं देना है। एआई तो हमारे लिए सब कुछ कर देगा, एक पूरी बुक भी लिख देगा सर। लेकिन सर बच्चों को वो बुक पढ़ी, उनको समझ में आई, उससे उनको मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला, उन्होंने उस बुक में क्या अच्छाइयां बुराइयां कमियां निकाली, ये तो सर आप ही पूछेंगे, ये एआई नहीं कर पाएगा। और एआई का सर इस्तेमाल बहुत सही है, बहुत वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा एक हमारा तो पूरा चालू भी हो गया ना शायद। हमारे जुडिशरी में तो एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सर इस समय। तो इसको भय की दृष्टि से ना देखें, और इसको आप अपना ये ना समझे कि कहीं से वो आपकी क्षमताओं को कम करता है। हाँ, वो आपके अंदर कुछ नई क्षमताएं पैदा करने के लिए आपको चुनौती दे रहा है, तो स्वीकार कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। Thank you, ma'am. I have Thank Miss you. Sarita, ma'am, to take the question. Good evening, everyone. Good evening. Actually, ma'am, I had already asked question and I got my answer that what is major challenge according to you. And then during your, conversation, I got to know why I have asked you to unmute me, that because I wanted to, say that I wanted to give actually feedback. This is one of the, best session which we had in last 8 days. काम का The way you explain everything, various methodology, and we could relate this. We can do all this. I have already started using some of the tools like Mentimeter, Padlet, and all that. I have recently started using it. And then other methods which you told, that is combination of traditional and new technology. I was really amazed by that. Thank you so much for such a wonderful please do presentation, use ma'am. all these methods, and please ma'am. have my contact number. Dr. Devanshu Srivastava will give you my contact number. Please be in touch, Sure. so that I Yes, can ma'am. also learn something from you. Because अगर आपकी वजह से मेरे बच्चे को कोई फायदा होता है, तो मेरे मैं क्या बोलूं, मेरे नौकरी करने का इससे बड़ा कोई मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है। I am Yes. so rich. अभी भी हूं मैं। ये देखिए ना, बैठे हैं मेरे सामने, इनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि I have got everything जो मुझे अपने जॉब में अचीव करना था। अभी अगर मुझे ऐसी और कुछ चीजें मिल जाएंगी और मैं यहाँ के किसी एक स्टूडेंट को भी वो मोटिवेट कर पाई, तो it will be a very In fact, today we are feeling very rich after listening your session. Thank you very so much. I much. was so Thank afraid. you I was to so afraid organizing that. committee. Thank you, ma'am. Thank you very much for your. आपने भी मुझे मोटिवेट कर दिया, बिकॉज शाम के सेशन में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चाय के प्याले के बिना कोई मुझे सुनेगा नहीं, और खाने की सबको याद आ रही होगी। और शाम का सेशन आमतौर पे ऐसा हो जाता है कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, पर आप सब लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे अभी बता रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी।
No, ma'am, Thank as you. I told you, we have some really wonderful participants. And Definitely. believe I me, agree. I've been organizing, I've been the part of it. But such wonderful bunch of people who are not only very much active, but as well as they take their questions. And that's what I started off with this session as well, when Gaurav sir would agree on that point, that this is one of those particular batches that every resource person, I know they come out with the feedback for the resource person, but every resource person has given me a feedback that they have a good chunk of people who are very interactive. And generally what we have been seeing in the online, especially at this time when it's about to be, and I can see a couple of participants who are preparing tea, Already see. and I was so jealous of them that they should not be doing so, because I am one who is depriving. But believe me, ma'am, more than a cup of tea, the cup of knowledge that you have shared is outstanding today. So thank you so much. We have Nirmal Chakradhar sir, and I request him to please unmute and take his question. Nirmal sir, please. जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हिंदी में इतना सुंदर व्याख्यान दिया और गेमिंग के द्वारा कैसे हम बच्चों को अच्छे से बेहतर सिखा सकते हैं। इसी तरह मैडम को मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, तो हिंदी साहित्य में जो दोहे हैं या कुछ कविताएं हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आते थे, तो मैं उनको गाकर सुनाता था, तो गाकर सुनाने से उनको अच्छे से याद होता था और वो जल्दी एक्सेप्ट कर पाते थे उसको। और ये जो है मैंने देखा कि इस तरह से बच्चे जो है जैसे बचपन में गीत कविताएं वगैरह गुनगुनाते रहते थे बच्चे, बचपन में जो कविताएं होती थी छोटी छोटी, तो अभी जो बड़ी कविताएं हैं उसको भी अगर इस तरह से सुनाया जाए तो वो ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं अच्छे से और उसको समझते हैं। तो मैडम से ये बात शेयर करना चाहता था कि हम लोग इस तरह से भी बच्चों को जो है कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसको हम गाकर या सुनाकर, कुछ में जैसे एक व्याख्यान हुआ था स्टोरी टेलिंग के ऊपर, तो ये बहुत अच्छे जो है नए जो है सुनाने के तरीके हो सकते हैं। तो काफी कुछ सीखने को मिला मैडम से और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ उनके प्रति। थैंक यू मैडम। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। आपने सुना और आपने मेरी बातों को रिपीट किया, इसका मतलब आपने बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ध्यान से सब सुना है। आई एम सो हैप्पी। और सर आप बस इसीलिए तो है कि ताकि इसके बाद मैं भी कुछ नया तरीका अपनाऊं, आप भी कुछ नया तरीका अपनाएं, तो जो हमारे लिए अच्छा होगा अपने स्टूडेंट्स के लिए वो करेंगे। गा के भी सुनाएंगे सर, बच्चे सुनने को तो राजी हो। मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते, मैं मीनाक्षी जयकुमार चेन्नई से बात करती हूँ। मुझे तो उतना आपकी तरह हिंदी नहीं आती, पर आपका हिंदी तो बहुत अच्छा थी। मुझे तो आप क्या सिखाया वो मुझे समझा सकती थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैम। आई एम ग्लैड मैम कि आपको हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बावजूद भी आपको मेरी बात समझ में आई। हाँ, आप तो बहुत स्पीड बात करते हैं, इसलिए मेरा ब्रेन नो स्पीडली ट्रांसलेशन करती है। वो एक बहुत वो नया अनुभव मेरे लिए। तो इतना जल्दी मैं तमिल में ट्रांसलेट करके फिर मैंने मेरे दिमाग में क्या करने मैं तो फिक्स करती हूँ। ओके, नमस्ते मैडम। बहुत अच्छी नो, आई वाज वेरी हैप्पी इंडीड। Okay. No, not at all. Not at all. I think I can relate your feedback with novelty. Yes, because I really surprised you, right? and you grasped it. So I think yes, the outcome is wonderful. Thank you, madam. Thank you. Namaste. So much. Good evening, madam. Myself, Dr. Sonali Kumre. I'm from Maharashtra. Yes, good evening, ma'am. Hello. Good evening, ma'am. Yes, Sonali ma'am, please go ahead. हाँ मैडम, आपका सेशन सही में बहुत ही सही रहा है। आप जो भी आपने आज बताया वो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रही है अपने स्टूडेंट्स के साथ में, और उसका असर सिर्फ आपके स्टूडेंट्स पर से नहीं दिखा, आपको अभी सेशन में भी समझ में आ गया होगा कि सो मच ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग योर सेशन, पूरा चैट बॉक्स भरा हुआ है। तो आप जिस तरीके से आपने बताया है, रियली इट हैज एनहांस्ड द स्किल कि अभी आगे चल के हम भी वो वैसे न्यू पेडागोजी कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन उसमें और भर पड़ेगा कि आगे हमको और क्या नया स्टार्ट करना है। एंड प्लीज डू शेयर योर ईमेल आईडी एंड प्लस फोन नंबर सो दैट इन फ्यूचर व्हेनेवर वी फील लाइक कीपिंग योर लेक्चर एज एन फॉर दिस पेडागोजिकल स्किल्स, प्लीज हम लोग जरूर इंटरेस्ट रहेंगे करने में। एनी टाइम मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, आपको पसंद आया, मेरी मेहनत सफल हुई। थैंक यू। और मैम आप एक चीज बस मैं बोलूंगी कि इस पूरे लेक्चर के दौरान आप लोग हैप्पी हैं, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज वट आप एक बार करके देखिएगा, इट विल मेक यू सो हैप्पी
कोई भी चीज आप जब नहीं करेंगे तो जो हैप्पीनेस है ना हमारे आपके और मेरे बीच में जो शेयर हो रही है, दिस इज समथिंग अमेजिंग। डेफिनेटली मैडम। तो और ये तो मैडम जैसे अभी आपने जैसे एक चीज जो बोली है प्रैक्टिकली कि हम लोग जब भी एक विषय को पढ़ा रहे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं, तो जॉब मोनोटोनस बन जाता है, हम लोगों को भी थोड़ा एक डिसइंटरेस्ट लगता है। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा भी चेंज लाते हैं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने का कोशिश करते हैं, या हर बच्चे का पर्सपेक्टिव अलग है, तो उसको हम लोग कैसे लेके हैंडल करके और बताएं, तो इससे क्या होता है ना, रियली लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग होता है कि जितना अगर कोई सोने वाला बच्चा होगा ना, तो वो भी उठ के ऐसे बैठ जाएगा कि नहीं मुझे भी आंसर करना है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, नो मुझे फाइंड आउट करना है, इसका आंसर बताना है। तो इस तरीके की चीजें, जैसे मैंने हमारे यहाँ पे यूजुअली मतलब मराठी बैकग्राउंड से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं कंप्यूटर्स पढ़ाती हूँ, तो कंप्यूटर्स के कुछ टेक्निकल वर्ड्स उनको समझ में नहीं आते, तो मैं उनको बोलती हूँ पहले इसमें से मोबाइल फोन्स यूजुअली सभी स्टूडेंट्स यूज करते ही हैं, लेकिन क्लास के बाहर यूज करना रहता है, क्लास के अंदर में नहीं। लेकिन उनके लिए थोड़ा ये बता के रखिए कि मराठी टू इंग्लिश का डिक्शनरी आप रखिए, या इंग्लिश टू मराठी का डिक्शनरी रखिए डाउनलोड करके, सो दैट आपको पढ़ाई करने के वक्त आसान जाएगा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जोर जोर से पढ़ाई करना, जैसे आपने अभी एक सजेस्ट किया, ऑब्वियसली ये तो हम लोग प्रैक्टिस करते ही हैं। तो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं या उनको रीडिंग के लिए एक मटेरियल दे दिया जाता है, तो उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसका आप मीनिंग समझिए, तो इससे क्या होता है ऑटोमेटिक वो जो मैं बता रही हूँ वो जल्दी से कैचअप कर लेते हैं कि हाँ ये चीज का मीनिंग ऐसा है। कहीं तो भी उनको मतलब ये टेक्नोलॉजिकल और ये थोड़ा दोनों चीजों का मतलब मिश्रण जो है उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। तो आपका सही में और जो नया तरीका आपने बताया, कहीं तो जाके और भी ये बढ़ाएगा और इंटरेस्टिंग बनाएगा लेक्चर्स। मैम हम तो आपको बच्चों तो के नया, लिए होते हैं। आपको तो बस नया ढूंढने के लिए आप मोटिवेट हो गए, इतना पर्याप्त है, अब तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, वो तो बन जाएगा। मैम आपने जो बताया मैम अंडरलाइन वाला ये है अपना वो VAKR में वही है, वो जो R रीड एंड राइट वाला है वो यही है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया आपने, वंडरफुल मैम, हाँ थैंक मैडम, यू वेरी कहीं मच। तो हम लोग बचपन से इस तरीके से ये सब चीजें पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी ये जनरेशन थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई है, तो उनको थोड़ा सा वापस लाइन पे लाने के लिए थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं मैडम। तो मैम अपन थैंक यू रिफ्रेश हो गए मैडम, ना, थैंक अपन यू उनको भी वेरी रिफ्रेश कर देंगे, कोई दिक्कत मच। नहीं यस यस बिल्कुल, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sonali ma'am. And as requested by everybody, I have shared the PDF and the PowerPoint presentation which ma'am has given in the chat box. So you all can download it from there. Both the PDF and the PPT is there in the chat box. I guess, ma'am, this would be all from my end. I know it is also an evening time for you. And thank you so much, ma'am. Thank you so very much. I guess this is a very small word that I'm saying it today. But I guess one of my inspirations to take academics was you when I was in my graduation days, and seeing you and to whatever journey I've been taken right now. And I know there is a lot to achieve more, seeing you and getting. So this refresher is particularly a refresher for me, for getting teachers like you and coming forth with more teachers. So this gives me a new energy, a new zeal to take this profession more and more ahead. Thank you all the participants, and on behalf of the entire participants here, on behalf of Faculty of Law, Jagran Lake City University, on behalf of Droid Pinel Group, and on behalf of GAD TLC Center, thank you so much, Dr. Anupama ma'am, for not only accepting our invitation, addressing the participants, but also refreshing in true terms that yes, teaching is a wonderful profession, and there is every day a new thing to learn of it. So let's not only be the teachers, let's be the learners. This is something that I started off. I also started off that yes, that smile on your face right at the start of the lecture and the smile at the end of the lecture is also one of the most lookout scene to be taken across. So thank you so much, ma'am, and keep inspiring. I know there are many more that smiles that we as students would give it to you. So thank you so much, ma'am. You people made me smile. तुम लोग हो मेरी Thank लाइफ। you, ma'am. You people make me, जब भी आप लोगों के साथ होती हूँ तो मैं लाइव हो जाती हूँ, जिंदा हो जाती हूँ फिर से। And this is a promise. All end to the online sessions now. We'll soon have a physical presence of you in Bhopal. अरे So- thank you, yeah, sure, And thank you। let my students as well now be benefited of something that we were benefited way back. So thank you so much, ma'am. Pleasure is all mine. Thank you, Devanshu ji. Thank you, organizers. Thank you very much. Yeah. With this, we come to the end of the day 9. The feedback form would be shared. I know I do not require a feedback for this particular session,
The feedbacks have already been floated in the entire chat box and everything, but the feedbacks would be shared. Also, a gentle reminder. Devanshu, may I leave? Yes, ma'am, please. Thank you Thank very you much. so much. Have a nice day, everybody. Have a Thank you सब so लोग much. आराम से खाइए. Thank you very Thank you, madam. Thank you very much. And we'll also share the assignments and the quizzes that would be uploaded latest by tomorrow, so that you can get a time to complete your things across. So thank you so much, and we'll get back to you tomorrow. That will be day 10 for your refresher course. Thank you.